ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द टॉपिक इज नेशनल इनकम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो जो इसमें आपको पढ़ना है, किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो सबसे पहले क्वेश्चन होगा व्हाट इज नेशनल इनकम। आप इसे ट्रीट करेंगे कि एक जस्ट लाइक अकाउंट्स है। पहले इसका न्यूमेरिकल हमें आना चाहिए, फिर हम थेरेटिकली खुद लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका सिलेबस है सारा। ठीक है, हम ये सारा कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे क्या, ये आपका सिलेबस है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसे देखना कि सर ने कोई टॉपिक मत छोड़ा होगा जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, अब आज में टॉपिक क्या होगा हमारा, टॉपिक क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज एट एग्रीगेट लेवल, इट इज एट एग्रीगेट लेवल। हम एक फर्म की बात, हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हमें इसके बेसिक्स पता होनी चाहिए, इसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। समझ आ रहा है? वो टर्म्स क्या है, देखो। द टर्म इज ग्रॉस। बेटा जी क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक का मतलब कंट्री, एंड प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विस। अगर आप एक मुल्क की बात करेंगे ना, लेट्स टॉक ऑफ इंडिया। सो इंडिया में हम कितने गुड्स बनाते हैं, कितनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट होगा जो इसका हिसाब रखता होगा? समझ आ रहा है? अब टोटल गुड्स और टोटल सर्विस कंट्री में कितनी होगी, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड जीडीपी, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड। अभी इस लेवल पे आज पहले वीडियो में इतना आप याद रखेंगे। मतलब मैंने क्या कहा, एक कंट्री में, एक कंट्री में टोटल गुड्स और टोटल सर्विस कितनी हम प्रोवाइड करते हैं, हम कितने फाइनल गुड्स बनाते हैं एक साल में, दैट इज व्हाट यू कॉल जीडीपी, दैट्स व्हाट यू कॉल। समझ आ रहा है? सो जीडीपी क्या होता है? ये होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटरी, मतलब विद इन अ कंट्री, एक साल में। अगर हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे, जी डी पी, जी डी पी is the money value of, is the money value of all final goods. I'm talking of final goods and services produced. देखो यही है ना, GDP is the money value of all final goods and produced within the economic territories, within the economic territories of a country in 1 year. इतना आप याद रखेंगे, इतना आप याद रखेंगे इस लेवल आज पहले वीडियो में। ठीक है, फिर जीडीपी की बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो हम समझेंगे। लेकिन जीडीपी, अगर आपसे कोई कहे जीडीपी क्या होता है, मनी वैल्यू। जीडीपी क्या होता है बेटा जी? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ ए कंट्री, एक साल में। हम एक साल का लेते हैं। समझ आया? तो कहते हैं इस साल जीडीपी क्या है इनका, जीडीपी क्या है इनका। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जीडीपी, तो आप कहेंगे सर जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ ए कंट्री इन 1 year। और ये जो आपका जीडीपी होता है ना, क्या बेटा जी, आई एम टॉकिंग ऑफ जीडीपी, इट्स इक्वल हमने कितने बनाए, मतलब कितने प्रोडक्ट बनाए, क्वांटिटी इनटू प्राइस। नहीं समझ आया? जो जीडीपी है ना, ये किसके बराबर है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। फॉर एग्जांपल हमने बनाए 10 प्रोडक्ट, कितने बनाए, और एक प्रोडक्ट का प्राइस है 50, तो जो आपका जीडीपी होगा ना, वो होगा 500 रुपए। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। समझ आ रहा है? सो दिस इज व्हाट यू कॉल जीडीपी। जीडीपी किसके बराबर होगा आपका? या प्राइस इंटू क्वांटिटी या क्वांटिटी इंटू प्राइस। टफ मत लगा, टफ मत लगा। अब समझना बेटा जी, ऐसे थोड़ा बहुत आप समझना कि दिस इज ईयर, ये आपका साल है, ये आपकी क्वांटिटी है, और ये आपका प्राइस है। ठीक,
So year is 21, 22, 23. Year is 21, 22, 23. Now quantity is 100. Quantity is tough लगा? Okay. 90. Is it clear? टफ लगा बेटा जी? और जो आपका प्राइस है, जो आपका प्राइस इज 10, प्राइस इज 11 एंड प्राइस इज 20. प्राइस इज, आपको जीडीपी निकालना आएगा? आएगा जीडीपी निकालना? सर क्या बोलते हो, हमें नहीं आएगा. जीडीपी किसके बराबर है आपका? बताइए मुझे, बताइए मुझे. सो क्वांटिटी इनटू प्राइस. टफ लगा? क्वांटिटी इनटू, देखो 100 इंटू 10, जैसे यहां पे देखो 100 इंटू 10 दैट इज 1000 रुपए. 100 इंटू 11 दैट इज 1100 एंड 90 इंटू 20 दैट इज 1800. देखो हमने प्राइस लिया ना करंट ईयर का. क्या लिया? करंट ईयर का. यू कॉल इट नॉमिनल जीडीपी. क्या कहते हैं आप इसे? व्हाट यू कॉल इट? नॉमिनल जीडीपी. समझाऊंगा बेटा जी, बहुत ही इजी है. नॉमिनल जीडीपी. और एक जीडीपी है जिसे आप कहते हैं रियल जीडीपी. क्या? रियल जीडीपी. तो देखो जीडीपी का मतलब क्या है? एक कंट्री में हम कितनी चीजें बनाते हैं? एक कंट्री में कितनी चीजें हम, डू टेल मी. यहां देखो 2021 में हमने कितनी चीजें बनाई? 100. उसका प्राइस ये था. 2022 में कितनी चीजें बनाई? तो जीडीपी असल में बढ़ा नहीं है, प्राइस बढ़ गया. बढ़ गया क्या? टफ लगा? इज इट क्लियर? ओके, अब मुझे बताओ 2023 में क्या जीडीपी बढ़ गया? ये कम हुआ है, लेकिन यहां से तो वैल्यू बढ़ गया ना. सो दिस इज नॉट द गुड इंडेक्स. नॉमिनल जीडीपी हमें असल शेप नहीं बताता कि जीडीपी बढ़ा है कि कम हुआ है. अब यहां पे नजर रखना बेटा. लेट्स टॉक ऑफ रियल जीडीपी. आपको पता है ये ऑलवेज लेता है बेस प्राइस. क्या लेता है? टफ लगा? क्या लेता है? हाँ बताओ. व्हाट इज द क्वांटिटी? 100. 100 into 10, 1000. Is it clear? What is the quantity? 100. 100 into 10, 1000. What is the quantity? 90. 90 into 10, 900. You call this real GDP. What do you call this? अब मुझे बताना बेटा जी, try to understand. ये लेता है करंट प्राइस. क्या लेता है? और ये कौन सा प्राइस लेता है? बेस ईयर प्राइस. क्या लेता है? ये कौन सा लेता है? करंट प्राइस. और ये कौन सा लेता है? बेस प्राइस. क्या टफ लगा? ये लेता है जीडीपी एट करंट प्राइस और इसे कहते हैं जीडीपी एट बेस प्राइस. ओके, विच इज द बेस्ट इंडेक्स? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी? रियल जीडीपी, क्योंकि ये असल शेप हमें दिखाता है. क्या दिखाता है? असल शेप. समझना, ठीक है? ये मतलब प्राइस से बढ़ता है नहीं, ये क्वांटिटी देखता है. क्या देखता है? कि हम बढ़ गए लिटरली के नहीं. नो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीडीपी. देयर आर, बता दीजिए पहला. मेरे से बात कीजिए. नॉमिनल जीडीपी. दूसरा रियल जीडीपी. हम ऐसे नहीं कह सकते. जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी. जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइस इज कॉल्ड. समझ आया? टफ मत लगा बेटा जी. यहां देखना बेटा जी, जीडीपी इज ऑफ टू टाइप्स. व्हाट इज द फर्स्ट वन? व्हाट इज द सेकंड वन? अब यहां पे देखना बेटा जी, मैंने डिफरेंस में बनाया है ये. अब डेफिनेशन भी ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज द फर्स्ट वन बेटा जी? यहां देखना, जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइस इज कॉल्ड. टफ मत लगा. जीडीपी कैलकुलेट, यहां पे देखिए ना, जो बेस ईयर पे ले लिया वो है ना रियल जीडीपी. लिया बेस ईयर पे. कभी कभार क्वेश्चन आपको आएगा, वो एंड में बताता हूं. बेस ईयर हमने ले लिया, हमने मत करंट ईयर प्राइस ले लिया. तो इसे आप कहते हैं जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइस लेवल इज कॉल्ड रियल जीडीपी एंड जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस लेवल इज कॉल्ड. टफ लगा? टफ लगा बेटा जी? मेरे से बात कीजिए बेटा जी. वो जीडीपी जो हमने कैलकुलेट किया किस पे? बेस ईयर प्राइस पे, उसे कहते हैं बेटा जी क्या? रियल जीडीपी.
वो जीडीपी जो हमने कैलकुलेट किया किस पे, करंट ईयर प्राइस पे, उसे क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? सो नॉमिनल में हम लेते हैं बेटा जी क्या, करंट ईयर प्राइस। ओके, नाउ इट इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट, व्हाई? क्योंकि बेस प्राइस हम सेम रखते हैं ना। इट इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड इट इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइस। टफ मत है, टफ मत है। अगर वहां पे क्वेश्चन आएगा क्या आपको लिखना आएगा, ये आते हैं बेटा, यही आपके शॉर्ट टाइप है, यही आपके शॉर्ट टाइप है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और इसका दूसरा नाम क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस। जरा फॉर्मूला मुझे बताओ उसकी, जो बेस ईयर की होगी ना, है ना, रियल जीडीपी, क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस, क्वांटिटी इनटू करंट ईयर प्राइस, quantity of output into base year price, quantity of output into current year price। टफ लगा, टफ लगा बेटा, इजी है, लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी, जीडीपी, जी मींस टोटल, डी मींस डोमेस्टिक, प्रोडक्ट मींस गुड्स एंड सर्विस। So GDP is the money value of all final goods and service produced within the economic territories of a country in a year. It is of two types: real GDP, nominal GDP. Nominal GDP is calculated at current year price, and real GDP is calculated at base year price. Is it clear? Tough mat laga? Okay, now the last one. It is real GDP. It is a better and more reliable index. You know, welfare. There's a term welfare. Welfare means happiness. वेलफेयर मीन्स हैप्पीनेस। क्या बेटा जी, वेलफेयर का मतलब है हैप्पीनेस, याद रखना। देखो, जीडीपी का मतलब है इनकम ऑफ ए कंट्री। अगर एक कंट्री की इनकम ज्यादा है ना, तो वो इनकम हम खर्च करते हैं लोगों पे। तो जब वो इनकम हमने खर्च की लोगों पे, तो वो खुश है, तो वो क्या है, खुश। इज इट क्लियर? तो इट इज अ बेटर एंड मोर रिलायबल इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ एन, क्योंकि ये रियल शेप बताता है, तो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि जब उनके पास इनकम आती है। हाँ, कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली इट इज नॉट गुड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी, इट इज नॉट गुड इंडेक्स। समझ आया? देखो, अगर हम पिछली बात करेंगे ना, तो 900 जीडीपी तो कम हुआ था ना, क्वांटिटी कम हुई थी, लेकिन प्राइस बढ़ा था। लोगों को पता थी जीडीपी बढ़ गया, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ा। इज इट क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आएगा बेटा जी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, क्या आएगा आपको, आएगा आपको लिखना। इजी है, टफ मत है। तो सबसे पहले इफ वी कंक्लूड, सबसे पहले हमने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा, नेशनल इनकम के लिए हमें जीडीपी पढ़ना है। नो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में सबसे पहला होता है कि हम कंट्री में कितने प्रोडक्ट बनाते हैं, कितने प्रोडक्ट बनाते हैं, व्हाट यू कॉल दैट, जीडीपी। तो यू मस्ट नो व्हाट इज जीडीपी फर्स्ट, यू मस्ट नो व्हाट इज जीडीपी फर्स्ट। लेकिन जब ये कंप्लीट हम करेंगे तब जाके क्या पढ़ेंगे, आप खुद लिखोगे, मेरी जरूरत नहीं होगी आपको। इज इट क्लियर? ठीक है। सो जीडीपी मींस टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री। इट इज ऑफ टू टाइप्स। व्हाट इज फर्स्ट वन? रियल जीडीपी। सेकंड वन, real GDP is calculated at base year level. Nominal GDP is calculated at current year level. Is it, which is the best index? Real GDP. Which is best index? Real GDP. समझ आया? क्योंकि ये क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी बढ़ गई कि कम होगी, और ये जो ये है ये प्राइस है बताता है। तो देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन, जीडीपी डेफिलेटर और प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डेफिलेटर और प्राइस इंडेक्स। करंट ईयर प्राइस पे कौन है? नॉमिनल जीडीपी। याद रखना बेटा जी, ये जो जीडीपी डेफिलेटर और प्राइस इंडेक्स होता है ना, ये क्या होता है, इसकी फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। क्या 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 क्या? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। वहां पे आएगा कि व्हाट इज जीडीपी डेफिलेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो इट्स फॉर्मूला। याद है जब मैंने आपको रेशियो एनालिसिस पढ़ाया था, फिर मैंने रेशियो डिफाइन किया था, जैसे करंट रेशियो। द रेशियो वी शो द रिलेशनशिप बिटवीन current asset and current liability is called current ratio. What is GDP deflator? The ratio we show the relationship between nominal GDP and real GDP is called GDP deflator. हमें मत कोई नई चीज सीखनी है। वो रेशियो क्या 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 कहा मैंने? The ratio, very good, the ratio which
shows a relationship. This shows a relationship between nominal GDP and real GDP. Nominal GDP and real GDP is called GDP deflator, या क्या कहते हैं, या कहते हैं प्राइस इंडेक्स. टफ मत लगा, प्राइस इंडेक्स. Is it clear? So what is GDP deflator? The ratio which shows the relationship between nominal GDP and real GDP is called GDP deflator. What do you call that? GDP deflator या प्राइस इंडेक्स. प्राइस इंडेक्स वो समझाता हूं मैं क्या होता है. ठीक, अब इसका लफ्जी मतलब क्या है ये तो हमें आया, अगर एग्जाम में आया जीडीपी डेफलेटर किसके बराबर होता है, वो रेशियो जो हमें रिलेशनशिप दिखाता है किस किस के दरमियान, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, तो उसे आप कहते हैं बेटा जी जीडीपी डेफलेटर. ओके, फॉर एग्जांपल नॉमिनल जीडीपी 500, रियल जीडीपी 400. फाइंड आउट जीडीपी डेफलेटर. आएगा जीडीपी डेफलेटर is equal, very good, nominal GDP divide by real GDP into 100. nominal GDP क्या है 500 divide by 400 into 100, that's equal to 125. It means price has been increased by 25%. यहाँ समझो, इसका मतलब है प्राइस बढ़ गया है 25%. क्या बढ़ गया है, अगर 125 आया तो इसका मतलब है प्राइस बढ़ गया 25%. ऐसे एनालिसिस ऑफ जीडीपी डेफलेटर, एनालिसिस ऑफ जीडीपी डेफलेटर, एनालिसिस एनालाइज अगर हम करेंगे, मतलब अगर आंसर आया उसका मतलब क्या है. देखो मैंने क्या लिखा है बेटा जी, इफ जीडीपी डेफलेटर इज 130, सो उससे कितना ज्यादा है ये, सो इट मींस प्राइस लेवल इज इंक्रीज्ड बाय, समझ आया. ओके, इफ जीडीपी डेफलेटर इज, it means price level is decreased by. If GDP deflator is, it means price level is. समझ आया, समझ आया कि GDP deflator क्या होता है. कोई क्वेश्चन? Now listen to me my dear, this is a mathematical formula. This is a mathematical formula please. ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप बियॉन्ड जाना चाहते हो, देखो बेटा जी GDP deflator नहीं दिया होगा, अगर वहीं से दिया है ये कहेगा क्वेश्चन ये निकालो, आएगा ना. मतलब 1 2 3 है बेटा जी, 1 2 3, इन तीन में से कोई एक चीज दी होगी, दो चीज दी होगी, कोई एक चीज निकालनी हो, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हो. इज इट क्लियर? इजी है ना. तो जीडीपी डेफलेटर समझ आया. द रेशियो विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज कॉल्ड जीडीपी डेफलेटर. जीडीपी डेफलेटर का मतलब क्या है, ठीक है, जीडीपी डेफलेटर का मतलब क्या है, जीडीपी डेफलेटर का मतलब है कि प्राइस कितना बढ़ गया, प्राइस कितना कम हुआ, कि प्राइस कांस्टेंट है, कि प्राइस कांस्टेंट है. तो ये समझ आया. इज इट क्लियर? सो अगर क्वेश्चन आया इसमें न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं आपने जीडीपी डेफलेटर निकाला 125, आपको जीडीपी डेफलेटर दिया होगा और ये भी दिया होगा, क्वेश्चन कहेगा ये निकालो, ये डिवाइड में है, ये इंटू में जाएगा, इंटू में है, डिवाइड में जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ लिसन, व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी. सर हमें पहले टॉपिक बताइए. टॉपिक पढ़ना है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी. बेटा जी क्या लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी? नहीं, असल में जीडीपी क्या है, एक कंट्री में कितने गुड्स हम बनाते हैं, एक कंट्री में हम कितने गुड्स, फिर से समझना, एक कंट्री में हम कितने गुड्स बनाते हैं, कितने गुड्स और कितनी सर्विस बनाते हैं, उसके लिए पहले में लिमिटेशंस. अब हमें लिमिटेशन है, मतलब जीडीपी क्या लेता है क्या नहीं लेता, समझ आया, जीडीपी क्या लेता है और क्या नहीं लेता. लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत बेस पहले बनाऊंगा. क्या बनाऊंगा? बेस. सबसे पहली टर्म है व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी. क्या बेटा जी, व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी, ये इंपॉर्टेंट है. और इसके टाइप्स क्या है. अब लिसन टू मी माय डियर, एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है. देखो सपोज आप यहां पे अच्छा पढ़ रहे हो, अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स कहूंगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप भी नहीं मानोगे. लेकिन अब ये लड़की यहाँ पे है, सर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुझे पढ़ाइए, तो ऑन द बेस ऑफ दिस कर्व इसका फायदा आपको भी आ रहा है, समझ आ रहा है. तो ट्रांजैक्शन इज बिटवीन हर एंड मी, ठीक.
लेकिन इसका इम्पैक्ट आप पे आ रहा है, अच्छा सा इम्पैक्ट आ रहा है। यू कॉल इट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। क्या कहते हो? टफागो, व्हाट यू कॉल इट? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। मतलब मुझे इससे इकोनॉमिक्स डीप पढ़ाना है, इसका फायदा आपको भी है, इसका फायदा आपको भी है। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ये कहते हैं हमें नहीं पढ़ना, तो इसका नुकसान आपको है। समझ आया ना सर? रियल लाइफ की एग्जांपल दीजिए हमें, रियल लाइफ की एग्जांपल। चलो बेटा जी, यहाँ पे इस मोहल्ले में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इस मोहल्ले में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसका फायदा जो है ना इस मोहल्ले वाले को है। यू कॉल इट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। या मैंने गार्डन बनाया, यहाँ पे क्या बनाया? गार्डन। इसके फूलों की खुशबू बहुत अच्छी है, जो नेबर्स है ना उन्हें मुफ्त की खुशबू मिल रही है। यू कॉल इट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। समझ आया? अब मैंने यहाँ पे बिजनेस डाला, यहाँ पे मैं कोई चीज बना रहा हूँ, यहाँ से धुआं निकलता है, यहाँ से इन नेबर्स ने बेचारों ने क्या किया, इन्हें तो बुरा असर हो रहा है। यू कॉल इट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी के लिए ना ही कोई ये चीज पे करते हैं, ना ही रिसीव करते हैं, ये इन्हें मुफ्त में मिलता है। क्या मिलता है? चाहे बेनिफिट हो चाहे हार्म हो, ये इन्हें मुफ्त में मिलता है। यू कॉल इट एक्सटर्नैलिटी। यू कॉल इट externalities or the activities। पहले समझना, externalities or the that harm or benefit others for which they are neither paid nor penalized। जिसके लिए ना ही उन्हें पैसा देना होता है, ना ही उन्हें कोई पेनल्टी देते हैं हम। समझ आया? तो एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? ये वो एक्टिविटीज होती है, या तो ये आपको हार्म करेगी, या तो आपको ये बेनिफिट करेगी। समझ आ रहा है? अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। समझ आ रहा है? आपको कोई हार्म हो रहा है तो आपको पेनल्टी हमसे नहीं लेनी है, या आपको आपसे कोई पेनल्टी नहीं लेनी। सो एक्सटर्नैलिटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसका असर तीसरे बंदे पे हो। देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन बेटा यू एंड मी, इसका असर किसी और पे हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इसका फायदा कोई और उठा रहा है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एक्सटर्नैलिटी। दिस व्हाट यू कॉल। सो एक्सटर्नैलिटी होता क्या है बेटा? ये वो एक्टिविटीज होती है जो हार्म और बेनिफिट करते हैं तीसरे बंदे को, जिसके लिए ना ही उसे पैसा पकड़ना है, ना ही पैसा देना है। मैंने बेस्ट एग्जांपल दे दी यहाँ पे। सर बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे गार्डन है, ठीक है, इस गार्डन में फ्लावर्स है, ठीक है, इसकी खुशबू नेबर्स को आती है, ठीक है, वो खुश होते हैं। समझ आया? टफ लगा? टफ लगा बेटा जी? ओके, नाउ यू कॉल इट एक्सटर्नैलिटी। यू कॉल इट। अब इसके टाइप्स देखो, दो तरह के हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इसके बेटा बेटा कितने टाइप्स है? दो। एक क्या है? दूसरा क्या है? नेगेटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव व्हाट डज इट मीन? अगर आपको फायदा आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है, यू कॉल इट पॉजिटिव। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप इस फ्लावर की खुशबू सूंघ रहे हो तो आपका वेलफेयर हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? वेलफेयर मीन्स हैप्पीनेस, बढ़ रही है। समझ आ रहा है? तो बेनिफिट आ रहा है ना, ठीक है। अगर धुआं निकल रहा है तो वेलफेयर है, इंक्रीज हो रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। टफ मत लगा। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। व्हाट इज फर्स्ट वन? पॉजिटिव। If someone plants flowers in their garden, neighbors enjoy the beauty, and positive externalities raise the welfare of people in the that is beautiful garden, brings happiness and creates welfare. Simple? Tough mat laga? समझ आया? So what is positive externality? समझ, the externality which benefits is called positive externality. Tough लगा? Simple. The externalities, the externality which benefits, yeah, the externality which harms is called negative. टफ लगा? टफ लगा बेटा जी? क्या होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी? इसका आता है गुड इफेक्ट तीसरे पे। क्या आता है इसका? क्या आता है? गुड इफेक्ट आता है तीसरे पे। गुड इफेक्ट आता है। टफ मत लगा। यू कॉल इट गुड एक्सटर्नैलिटी। जरा बताओ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बेटा। A factory that causes air pollution harms the health of people nearby, even though they do not work there. Negative externality reduces the welfare. Welfare means happiness. It reduces. इंसान कहता है ना, देखो ना इस फैक्ट्री ने क्या किया, धुआं ही धुआं है यहाँ। समझ आया? समझ आया? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टॉवर, मोबाइल टॉवर, ठीक है, इट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी एंड पीपल स्टिल डोंट नो, क्योंकि इससे रेज निकलती है, इससे रेज निकलती है, जिसकी वजह से इंसान बीमार होता है, जिसकी वजह से इंसान बीमार होता है। और लोग तो खुश है,
एक बंदे ने दिया मोहल्ले में टॉवर, क्या दिया टॉवर, उसे तो पैसा मिल रहा है, लेकिन जो नियर बाय लोग है ना, जो नियर बाय लोग है वो तो परेशान है, वो तो परेशान है। ओके, डू टेल मी व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी और harms other people, that's what you called externality। लेकिन जिसके लिए वो ना ही पैसा देते हैं ना ही पैसा पकड़ते हैं। It is of two types। What is the first one? Positive externality। What is the second one? Positive externality, negative externality। The activities which the externality which benefits is called positive externality, the externality which harms is called negative externality। So this is your example। Okay, कभी आता है ये 3 मार्क्स। What is externality? ठीक है, तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, छोटे छोटे, ये मत है आपके सिलेबस में अदरवाइज। So externalities can be good or bad। लिखा नहीं है, जीडीपी लिखा है ना, जीडीपी के अंदर है ना ये। ओके सर, कैसे है? मैं बेस बना रहा हूं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, लिमिटेशंस ऑफ, समझ आया? सो एक्सटर्नैलिटीज कैन बी गुड और बैड, बट दे ऑलवेज अफेक्ट हु डिड नॉट, क्या मैंने कहा? Who did not choose to be involved, जिसने चूज किया होता है कि ताकि वो इन्वॉल्व ना हो जाए। Is it clear? So you come to know what the externality is। Okay, now we have limitations of GDP। limitations of, देखो जीडीपी में क्या आता है क्या नहीं, लेकिन अपने दिमाग में याद रखना जीडीपी इज इनकम। इसके लिए, कंट्री के लिए, कंट्री के लोगों के लिए। आपने सुना है कि बाहर जो कंट्रीज है वहां पे फ्री हेल्थ है, फ्री एजुकेशन है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जीडीपी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, समझ आया? तो उनकी इनकम उतनी अच्छी है कि उन्हें वो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री हेल्थ दे रहे हैं। ठीक। सो लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी में क्या ये लेते हैं क्या नहीं लेते, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। तो सबसे पहले एक्सटर्नैलिटी, मुझे बता, इस गार्डन से मैं खुश हो रहा हूं, इससे मेरा वेलफेयर आ रहा है, क्या ये कंसिडर हो रहा है? ये जीडीपी में कंसिडर नहीं हो रहा है, बिकॉज इसका कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये प्राइस नहीं देते। नहीं समझ आया? इसीलिए तो एक्सटर्नैलिटी पढ़ाया ना मैंने। जीडीपी से हमें देखना है कि वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। वेलफेयर मीन्स हैप्पीनेस। इज इट क्लियर? सबसे पहले ये एक्सटर्नैलिटीज कंसिडर, बिकॉज देयर इज नो डाटा। आप किस चीज से खुश हो रहे हो, समझ आ रहा है? किस चीज से आप खुश हो रहे हो? डाटा तो नहीं है, इसके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, कंट्री कैसे काउंट करेगी? इज इट क्लियर? तो सबसे पहले एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर, इज इट क्लियर? जीडीपी एक्सटर्नैलिटीज को कंसिडर हो गया एक। दूसरा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब मुझे बताइए, जो घर में आप कभी बनाते हैं ना सूजी का हलवा, ठीक है, वो घर वाले बनाते हैं, बाहर से तो नहीं ना लाते आप, उस चीज से बहुत खुश हो जाते हो। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच मनी कांट बाय, व्हिच मनी कांट बाय। मतलब घर में, लेट इट बी बेटा जी, मैं घर आता हूँ, वहां पे हम फैमिली आपको प्यार करती है, तो वो कंसिडर नहीं करते जीडीपी में, वो नहीं आता है। कैसे आएगा? बिकॉज वो हम मनी में मेजर, यू कांट मेजर द लव ऑफ योर मदर इन मनी। इज इट क्लियर? सो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जीडीपी पे नहीं आता है, समझ आया? लेकिन इससे तो आपको वेलफेयर मिल रहा है, आपको तो खुशी मिल रही है, इससे हैप्पीनेस मिल रही है। किससे? तो घर में, अगर आप घर में खुश हो, इट इज वेलफेयर। इट इज, नहीं समझ आया? व्हाट इट इज? इट इज वेलफेयर। हो गए दो। तीसरा, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। हम कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी अगर बढ़ रहा है, इसमें होगा टोबैको भी, समझ आ रहा है? लिकर भी, समझ आ रहा है? या वॉर वेपन्स भी, मतलब ये भी तो प्रोडक्ट्स है ना। इनका मनी वैल्यू हमने काउंट किया किसमें? जीडीपी में। अब मुझे बताओ, खामा का कहां का वेलफेयर है ये? इज इट क्लियर? यू से कि जीडीपी जो अमेरिका का है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन किससे है? वॉर वेपन्स। उनका मेन जीडीपी तो, मेन इनकम तो वही है ना, वो तो गन्स बेचते हैं। क्या बेचते हैं? गन्स बेचते हैं। और कोई भी बंदा आता है, डिप्रेशन होता है उसे, टक 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 होता है कि नहीं? कहाँ का वेलफेयर? तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ये भी देखना है ना, जीडीपी में वो चीजें भी आती हैं जिससे वेलफेयर इंसान को नहीं आता। टफ लगा? टफ लगा बेटा जी? सो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। द फोर्थ वन इज ब्लैक मनी, द मनी विच इज अर्न्ड बट नॉट
रिप्रेजेंटेड टू गवर्नमेंट, लोगों ने पैसा कमाया लेकिन गवर्नमेंट को नहीं बताया, उन्होंने मत काउंट किया, तो जीडीपी बढ़ा, जीडीपी तो सेम है, हाँ लेकिन लोग तो खुश है। तो जीडीपी ब्लैक मनी को काउंट नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि लोग उन्हें दिखाते ही नहीं है, लोग उन्हें, आप मत लगा, इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। नाउ लिसन टू मी माय, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, इनइक्वालिटी और जीडीपी। देयर इन अ कंट्री, फॉर एग्जांपल देयर आर टू पीपल, ठीक है, चलो मैं आप लोगों की एग्जांपल आज लेता हूं, क्योंकि कभी मत आप देखोगे ये वीडियो 5-6 साल के बाद। हदफ, ठीक है, आपका नाम बेटा जी, ठीक है, ठीक है नाम याफी, ओके। नाउ लिसन टू मी माय डियर, पर हदफ ने कमाया 100 करोड़ और याफी ने कमाया 2 करोड़, तो व्हाट इज द जीडीपी टोटल कितना है? 102 करोड़, 102 करोड़। टफ लगा? अब साल हो गया, हदफ ने कमाया 900 करोड़, याफी ने कमाया 2 करोड़, तो जीडीपी कितना हो गया? 902 करोड़, 902 करोड़। इज इट क्लियर? तो कंट्री का जीडीपी तो बढ़ गया। जीडीपी मींस इनकम, जीडीपी मींस, लिसन टू मी, जीडीपी मींस इनकम। अच्छा, जीडीपी बढ़ गया, तो इनकम ज्यादा किसे आएगी? किसके पास? हदफ के पास। हदफ तो रिच है, ये तो पुअर है, ये है ना? समझ आ रहा है? 100 करोड़ से 900 करोड़ कमाए हदफ ने, 900 करोड़ कमाया किसने? हदफ ने। अब ज्यादा इनकम किसे आ रही है? रिच को। रिच बिकम्स रिचर, रिच बिकम्स एंड पुअर बिकम्स पुअरर, पुअर बिकम्स। टफ लगा? इसकी बात ऑलवेज करता है राहुल साहब, करता है, नहीं समझ आया? टफ लगा बेटा जी? सो इन इक्वालिटी से क्या होता है? रिच हो रहा है रिचर, क्योंकि हम कह रहे हैं जीडीपी, जीडीपी बढ़ रहा है। इफ यू से कि इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सम बिग गन्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सम बिग गन्स। और वो इनकम किन के पास आती है? उन्हीं लोगों के पास। हमारे पास क्या आता है? गरीबी। हमारे पास तो पैसा नहीं आता, पैसा किन के पास आता है? उन्हीं के पास। जैसे कि यहाँ पे पैसा है सिर्फ हदफ के पास। हमने कहा कि जीडीपी बढ़ गया, अगर जीडीपी बढ़ गया लोग खुश होते हैं, भाई कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो हमें फैसिलिटीज मिलेगी। फैसिलिटी कहाँ? हमें इनकम कहाँ मिल रही? इनकम तो मिल रही है हदफ को, हमें तो थोड़ी मिल रही है। समझ आ रहा है? या फिर तब भी था 2 करोड़ पे, आज भी है 2 करोड़ पे। इज इट क्लियर? यू कॉल दिस इनइक्वालिटी, यू कॉल दिस। नाउ पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन और ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी ना, अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी, देयर आर टू कांसेप्ट्स, देयर आर पर कैपिटा जीडीपी, वो आगे बढ़ोगे, वो आगे पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल, अगर पॉपुलेशन है 100 और आपका जीडीपी है 10, लेट इट बी, पॉपुलेशन 100 से बनी 200 और आपका जीडीपी 11 हुआ, आप कह रहे हो जीडीपी बढ़ गया। मैं पर कैपिटा जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं। 100 करोड़ की पॉपुलेशन और आपका जीडीपी था 10 करोड़, अब डबल हो गया, आपका जीडीपी बढ़ा सिर्फ 1%, लेकिन आप कहते हो जीडीपी बढ़ गया। जीडीपी तो नहीं बढ़ा, जीडीपी तो नहीं बढ़ा। और एक कंसेप्ट है पर कैपिटा जीडीपी, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। अब यही चीजें आप देखिए बेटा जी, जो मैंने लिमिटेशंस पढ़ाई ना, यही चीजें आप देखिए यहाँ। लिसन टू मी, जीडीपी फेल्स टू इंक्लूड externalities as both positive and negative externalities affect the, positive externalities raise the welfare। यहां देखो ना, यहां देखो, इसका फोटो उठा सकते हो। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, वो क्या करती है? वेलफेयर रेज। और नेगेटिव क्या करती है? रिड्यूस करती है। लेकिन जीडीपी एंड पे हेलो एंड पे जीडीपी एक्सटर्नैलिटीज को इंक्लूड नहीं कर पाती, फेल्स टू इंक्लूड एक्सटर्नैलिटीज, क्योंकि इसके लिए पैसा मत देना है, पैसा मत पकड़ना है। तो पहला चीज आया, टफ मत लगा? ओके। दूसरा, नॉन मॉनेटरी, जीडीपी फेल्स टू इंक्लूड नॉन मॉनेटरी सच एज सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, जो घर में बेचारी दिन भर काम करती है, ठीक है, किचन गार्डनिंग टाइम, ठीक है, हम गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, जब हम गार्डनिंग करते हैं उससे हमें खुशी मिलती है, क्या वो इंक्लूड हो रहा है? नहीं, दो दे एनहांस द वेलफेयर ऑफ। इज इट क्लियर? ओके। कंपोजिशन ऑफ, मैंने कहा ना जीडीपी में हम गन्स भी लेते हैं, वॉर क्राइम्स भी, वो सारी चीजें। जीडीपी में राइज ड्यू टू राइज ऑफ दोज गुड्स व्हिच नेगेटिवली अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ पीपल लाइक लिकर, टोबैको, वेपन्स एक्स्ट्रा। तो जीडीपी में ये आ रहा है। टफ लगा? टफ लगा? ओके। नाउ ब्लैक मनी। So what is black money? The money which is earned
but not reported to government. To avoid tax is called GDP does not include black money as it affects as it affects as एक मिनट GDP does not include although it affects although ठीक as की जगह क्या लगा हो गया although it affects the welfare of क्योंकि जिसने वो कमाया ना वो खुशी है लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं है द इनइक्वालिटी। अब देखना बनाया क्या मैंने इफ द जीडीपी इंक्रीज बिकॉज ऑफ फिफ्थ गन्स ये वो गन नहीं है समझ आ रहा है बिकॉज ऑफ बिग बिजनेसमैन then the income generated will be in few hands which results rich becomes richer and poor becomes poorer gdp fails to differentiate inequalities। समझ आया ये 5 पॉइंट्स अगर आपको आ सकते हैं तो लिखोगे समझ आया ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने जीडीपी जीडीपी इज ऑफ टू टाइप्स क्या पढ़ा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी टफ था आज का टॉपिक अच्छे से बेटा जी इसमें बेटा जी आप समझो 2-3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ठीक तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक चले बेटा जी आज नेक्स्ट लेक्चर है तो विल कम टू नो एक्चुअली मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ टॉपिक है नेशनल इनकम उसके पहले टर्मिनोलॉजी और उसी टर्मिनोलॉजी से आपका कोई सब टॉपिक कंप्लीट हो रहा है ठीक है फिर एंड पे हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। नाउ टुडेज टॉपिक इज इनकम पहले ठीक इनकम में दो तरह की होती है यू हैव ट्रांसफर इनकम एंड यू हैव फैक्टर इनकम। बेटा जी क्या ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम देखो बेटा जी जो हम कमाते हैं ना जो हम कमाते हैं यू कॉल दैट फैक्टर इनकम दैट इज अर्नड इनकम जो आप अर्न करते हो ना आप उसे क्या कहते हैं फैक्टर इनकम और जो आप नहीं कमाते उसे आप कहते हो अनअर्न्ड इनकम व्हाट यू कॉल दैट अनअर्न्ड इनकम। नाउ इन अदर वर्ड्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे कमाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा है बेटा जी लैंड शाबाश लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप वही है। नाउ लिसन टू मी माय डियर लैंड पे आप क्या कमाते हैं रेंट लेबर वेजेस कैपिटल पे आप कमाते हैं इंटरेस्ट इज इट क्लियर और एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट ओके तो ये आपने कमाया ना यू कॉल दिस फैक्टर इनकम व्हाट यू कॉल इट फैक्टर इनकम। सर अनअर्न्ड इनकम क्या होता है अनअर्न्ड इनकम बेटा जी मैंने गिफ्ट पकड़ा गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड समझ आया गिफ्ट हम पकड़ते हैं या पॉकेट मनी हम पकड़ते हैं क्या पकड़ते हैं पॉकेट मनी क्या आपने ये कमाया इज इट क्लियर सो यू कॉल इट ट्रांसफर इनकम। तो सबसे पहले अर्न्ड इनकम इज फैक्टर इनकम अनअर्न्ड इनकम इज ट्रांसफर इनकम। अब मुझे बता दीजिए बेटा जी इसमें क्या होता है इसमें आप सर्विस देते हो वहां से पकड़ते हो है सो इट इज बाइलेटरल व्हाट इट इज मतलब यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व है जो काम करती है एक और वहां से भी। अब यहाँ पे आप सिर्फ हो आप किसी के चहीते हो जो आपको गिफ्ट दे रहा है सो इट इज यूनिलेटरल व्हाट इट इज नहीं समझ आया मतलब आप रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हो इफ समवन इज गिविंग यू गिफ्ट आप रिटर्न में उसे कुछ नहीं दे रहे हो आप अपनी सर्विस नहीं दे रहे हो यहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो। टफ लगा बेटा जी टफ लगा ओके लेट्स टॉक ऑफ अनदर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फादर एंड सन इज इट क्लियर एक कंट्री में एक फादर है और एक सन है फादर ने 1000 रुपए कमाया इसने कमाया ये कौन सी इनकम है फैक्टर इनकम कौन सी इनकम है ओके इसने इस 1000 में से 200 रुपए दिया किसे सन को तो कंट्री की इनकम कितनी है आप कहते 1200 नहीं है इसने जस्ट ये 200 किसने दिए फादर ने ये 200 किसने दिए इसे तो सिर्फ जो कमाई हमने इनकम है
कंट्री की जो इनकम है ना वो सिर्फ 1000 है। क्या है ये 200। आपने मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, फादर ने कितना कमाया? 1000 रुपए। क्या बेटे ने कमाया? नहीं, इसको पॉकेट मनी मिली कितनी? 200। तो 1000 और 200 आप कहते 1200? नहीं, ख्याल रखना बेटा जी, कंट्री की इनकम में क्या हम लेते हैं? कंट्री की इनकम में सिर्फ हम लेते हैं फैक्टर इनकम। क्या लेते हैं? ट्रांसफर इनकम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन नेशनल इनकम, कंट्री की इनकम का मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम लेते हैं बेटा जी क्या? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम नहीं लेते। क्या मेरी बात समझ आई आपने? क्या मेरी बात समझ आई आपने? ठीक है, मुझे बताओ, earned income is called factor income, unearned income is called transfer income. Any question my dear? कोई क्वेश्चन माय डियर? और मैंने कहा था ये जो फैक्टर इनकम है ये हम कमाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम कोई चीज देते हैं, ये तो नहीं, इट इज अ गिफ्ट, ये तो किसी भी चीज पे नहीं कमाते। और मैंने कहा ये बायलेटरल है, मतलब हम कोई चीज देते हैं वहां से वो हमें कुछ देता है। और ये यूनिलेटरल है, यहाँ से हम कुछ नहीं देते, जस्ट हम ये पकड़ते हैं। टफ लगा? ओके। और मैंने कहा था विच इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए बेटा जी डिफरेंस आप चेक करो बेटा जी, क्या आपको समझ आया ये जो मैंने डिफरेंस लिखा आपको? इट इज द इनकम obtained विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर। वो हम, इट इज द इनकम earned by providing factor. Factor input means land, labor, capital and entrepreneurship. समझ आया? लैंड, लेबर, कैपिटल और entrepreneurship। तो पहली चीज मैंने कही ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम है, ये वो इनकम है जो हम ऑब्टेन करते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनीथिंग। हम कोई भी चीज नहीं देते लेकिन वहां से पकड़ते हैं। सो यू कॉल दैट ट्रांसफर इनकम। और ये जो फैक्टर इनकम है, इट इज द इनकम अर्न विदाउट बाय प्रोवाइडिंग, विद प्रोवाइडिंग अर्न फैक्टर इनपुट, जैसे कि लैंड देते हैं, लेबर देते हैं, कैपिटल देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ लिसन टू मी, इट इज दैट इज यूनिलेटरल कंसेप्ट। ये वन साइडेड इनकम है ना, जस्ट आपने पॉकेट में नहीं पकड़ी, सिंपल है, आपका पापा दे रहा है, ठीक। एंड इट इज टू साइडेड इनकम, दैट इज बाइलेटरल कंसेप्ट। एनी क्वेश्चन? ये यूनिलेटरल है, ये बाइलेटरल है। ओके, नाउ इट इज एन, इट इज, समझ आया? क्वेश्चंस आते हैं ये शॉर्ट टाइप है, ठीक। ओके, इसके बाद इट इज नॉट इंक्लूडेड इन, कैसे करेंगे? ये मत कर सकते, ठीक है। तो ये इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बेटा जी? एग्जाम्पल अगर देखोगे, गिफ्ट है, पॉकेट मनी है, मगर याद रखना दिस इज नॉट गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, दिस इज गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड। इफ यू रिसीव गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर दैट इज अ सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉयर कोई मुफ्त चीज मुफ्त नहीं देता। मैं दूंगा ना अभी लिस्ट, ठीक है। एम्प्लॉयर अगर आपको गिफ्ट दे रहा है ना, उसे पता है मैं इसके बदले कोई ना कोई चीज लूंगा। इज इट क्लियर? समझ आया? सो एग्जाम्पल इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये आप लिख सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर इनकम एंड, जरा मुझे बता दीजिए अगर ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम आपको आया, तो ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड इनकम, फैक्टर इनकम इज फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। समझ आया? ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन, जो रीजन मैंने आपको बताया, फादर और सन। फादर, ठीक है, अगर 1000 रुपए कमाता है, उसने 200 दिए किसे? बेटे को। तो दोनों रहते हैं कंट्री में, क्या 1200 आएगा नेशनल इनकम? सिर्फ 1000 ही आएगा। ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ तक? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, इसका लिस्ट और इसका लिस्ट जस्ट पढ़ता हूँ। ट्रांसफर इनकम जो कि नेशनल इनकम में नहीं आता, जैसे गिफ्ट, इट इज गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, हमने चैरिटी दे दी, स्कॉलरशिप पकड़ी। सर टैक्स, आपको लगता है कि टैक्स होगा फैक्टर इनकम? नहीं, आप टैक्स देते हो, गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस करती है इसके बदले कुछ देगी? कुछ नहीं, इंडिविजुअली तो कुछ नहीं देती है ना। तो ख्याल रखना कि टैक्स इज ट्रांसफर इनकम। एमसीक्यू में आ सकता है कि टैक्स क्या है? टैक्स इज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। टैक्स क्या है? ट्रांसफर इनकम। ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, पॉकेट मनी, फाइनेंशियल हेल्प गिवन टू फ्लड विक्टिम्स, मनी रिसीव्ड बाय पेरेंट्स फ्रॉम देयर सन वर्किंग। इज इट क्लियर? समझ आया? प्राइज वन इन, मैंने 10 करोड़ कमाया, यहाँ से दे दिए 2 रुपए, तो 2 रुपए इज नॉट अ रिटर्न। समझ आया? टफ लगा? ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ पे नहीं देते, बाहर देते हैं, बाहर फॉरेन में देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो वहां पे बैठा होता है ना, उसे देते हैं $1500।
क्लेम्स रिसीव्ड फ्रॉम एन, क्यों देते हैं $1500? क्योंकि वेलफेयर, जीडीपी उनका अच्छा है। समझ आया? जीडीपी उनका अच्छा है। टफ लगा बेटा जी? टफ लगा? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा जी? क्या समझ आया बेटा जी? ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ओके, आफ्टर दैट देयर इज फैक्टर इनकम। सबसे फैक्टर इनकम तो सबसे पहले वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। समझ आया? बोनस, बोनस देता है एम्प्लॉय। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम, हाँ, अगर गिफ्ट पकड़ोगे आप एम्प्लॉयर से, दैट इज सैलरी। व्हेन यू कम टू नो द टैक्स, जब आप टैक्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे आप कोई भी, अगर आप पानी का गिलास पकड़ोगे ना एम्प्लॉय से, वो आपको कंसिडर करता है सैलरी। क्योंकि मुफ्त में कोई चीज नहीं देते, मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती। इज इट क्लियर? नहीं, अगर खाली गिफ्ट है दैट इज ट्रांसफर इनकम। खाली गिफ्ट लिखा है दैट इज ट्रांसफर इनकम, एंड यू हैव टू एज्यूम दैट दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड। ओके, नाउ रॉयल्टी क्या होता है बेटा? रॉयल्टी एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा एसेट है, लिसन टू मी, ये न्यूमेरिकल है, इसको, इस टॉपिक को पढ़ाने में 1 महीना लगता है। मेरी ऐप पे है, अगर कभी पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे आप। रॉयल्टी, देखो बेटा, मेरी एक जमीन है, ये खाली है, ठीक? मेरा नाम आमिर, और यहाँ से आया वसीम। वसीम ने कहा कि ये जमीन तो आपको खाली है। मैंने कहा कोई नहीं, हाँ जी खाली है। इसने कहा ये जमीन मुझे दीजिए, ये जमीन आप मुझे दीजिए, मैं इस पे वेजिटेबल्स उगाऊंगा, जितना मुझे निकलेगा, जितना मुझे निकलेगा, मैं 1 kg को आपको ₹5 दूंगा। 1 kg को, फॉर एग्जाम्पल इसने 10,000 kgs निकाले, इंटू करो 5, इसने कितना दिया मुझे? 50,000। यू कॉल इट रॉयल्टी, यू कॉल इट, तो देयर इज रिटर्न। मैं जमीन दे रहा हूँ, वो मुझे पैसा दे रहा है। सो इट इज अ कंपनसेशन जो एक इंसान देता है दूसरे इंसान को। क्यों? ताकि उसका एसेट वो इस्तेमाल कर सके, ताकि उसका एसेट वो इस्तेमाल कर सके। एनी क्वेश्चन? नाउ यू, देयर इज वन मोर, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो मैं हूं ना सेल्फ एम्प्लॉयड, आई अर्न प्रॉफिट, आई अर्न रेंट एज वेल, मिक्स्ड इनकम। मैं मजदूर की तरह भी काम कर रहा हूँ, ओनर की तरह भी काम कर रहा हूँ। सो मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, मैं रेंट भी कमा रहा हूँ, मैं सैलरी भी कमा रहा हूँ। यू कॉल इट मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। समझ आया? व्हाट यू कॉल इट? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, इस हॉल की रेंट कमा रहा हूँ मैं, है ना? इस हॉल की रेंट भी कमा रहा हूँ, प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, तो यू कॉल इट मिक्स्ड इनकम। सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं रेंट भी कमा रहा हूँ, सैलरी भी कमा रहा हूँ, ठीक? ओके, दिस इज फैक्टर इनकम। तो अब मुझे बता दीजिए, थोड़ा लिस्ट था जो मैंने आपको बताया ऐसे, ठीक? क्वेश्चन मत आएगा, आपके नोट्स पे है ही। मुझे बता दीजिए सबसे पहला क्वेश्चन, इनकम 2 तरह की है। व्हाट इज द फर्स्ट वन? ट्रांसफर इनकम। सेकंड वन, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में फर्क समझ आई आपको? ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हमने नहीं कमाई होती, फैक्टर इनकम वो होती है जो हम कमाते हैं। कमाते किस चीज पे है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इज इट क्लियर? समझ आया? फैक्टर इनकम इज बायलेटरल कंसेप्ट, वो क्या है? यूनिलेटरल। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आती, और ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में आती है, और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में, और उसका मैंने रीजन भी आपको बताया। नाउ देयर इज अ कांसेप्ट स्टॉक एंड फ्लो, देयर इज अ कांसेप्ट स्टॉक एंड फ्लो। सो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, यू नो बैलेंस शीट एंड यू नो प्रॉफिट एंड लॉस। ख्याल रखना, आज की डेट पे, अगर हम आज की डेट पे बात करें, आज आज करेंगे बात, मेरे पास एसेट कितने, मेरे पास लायबिलिटी कितनी। अगर एक टाइम की बात करते हैं, यू कॉल दैट स्टॉक, यू कॉल दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यू कॉल दैट स्टॉक। अगर आप पूरे साल की बात करते हैं, आपने इस साल कितना कमाया, आज की बात नहीं हो रही है, साल की बात हो रही है। जब आप मेरा हिसाब करते हो, ये कितना कमाता है, ये एक साल में इतना कमाता है, एक साल में इतना कमाता है, जब पूरे साल की बात हो रही है, यू कॉल दैट फ्लो, यू कॉल दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टॉक एक दिन का होता है, मतलब आज मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, आज, यू कॉल इट स्टॉक, यू कॉल इट
हाँ, पूरे साल इसने कितना कमाया, दैट्स कॉल्ड फ्लो. व्हेन यू कंसिडर टाइम ड्यूरेशन यू कॉल दैट फ्लो. ठीक है, जब आप किसी खास दिन का देखते हो, ठीक है, आज मेरे पास कितनी मशीन्स है, यू कॉल इट स्टॉक. समझ आया? इज इट क्लियर? तो देखो बेटा जी, स्टॉक और फ्लो, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो. ये चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये बेसिक्स है. ठीक है, फिर हमें अच्छे से समझ आएगा. ना स्टॉक एंड फ्लो देखो, क्वांटिटी ऑफ समथिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मेरे पास कितनी मशीन है, कितने एसी है मेरे पास? 3. आज की बात है, तो आज मेरे पास 3 एसी है. वी कॉल इट स्टॉक. जैसे कि सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल, याद है सप्लाई ऑफ मनी जो मैंने पढ़ाया था. तो क्वांटिटी ऑफ समथिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आज आज कितनी लाइट्स है मेरे पास, यहाँ पे देखो 4, यू कॉल इट स्टॉक. मेरे पास 10 जीन्स है, यू कॉल इट स्टॉक. समझ आ रहा है? टफ लगा? ओके, मैंने पूरे साल कमाया 2 लाख, फ्लो. मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ. इज इट क्लियर? क्वांटिटी ऑफ समथिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इट इज, स्टॉक. क्वांटिटी ऑफ समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए, समझ आ रहा है? मैं कहूंगा प्रॉफिट कितना कमाया, हम एक दिन की बात करेंगे, हम पूरे साल की बात करेंगे. समझ आया स्टॉक और फ्लो में क्या फर्क है? ओके, इट मेजर्स टोटल, ये टोटल मेजर करता है. स्टॉक क्या मेजर करता है? टोटल. आज की बात है, ये टोटल करेगा. इट मेजर्स चेंज, इट मेजर्स दैट इज एडिशन, और मतलब ऐड कितना हो गया, समझ आ रहा है? प्रॉफिट कितना आया पूरे साल. पूरे साल मीन्स ये ऐड करता है. जैन में कितना कमाया, फेब में कितना कमाया, मार्च में कितना कमाया. इट मेजर चेंज, इट मेजर्स, आर यू गेटिंग माय डियर? इट मेजर्स टोटल, इट मेजर्स चेंज. इट इज स्टैटिक कंसेप्ट. मतलब अगर हम आज की बात कर रहे हैं ना, आज मेरे पास 3 एसी है तो 3 एसी है, आज की बात है. इट इज स्टैटिक मींस फिक्स्ड एट अ मोमेंट. फिक्स्ड, आज क्या है ये, फिक्स्ड. टफ लगा? आज क्या है ये, फिक्स्ड. इट इज डायनामिक कंसेप्ट, कीप्स. मतलब जैन में प्रॉफिट कमाया 5,000, फेब में कमाया और 5,000, 5 और 5 10, और कमाए 5 15, और कमाए 5. तो इट कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स. असल में स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट समझ आया? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? ओके, नाउ एग्जांपल देखिए. आज मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, स्टॉक. मशीन्स कितनी है फैक्ट्री में, स्टॉक. बैलेंस शीट है ना, ये बनाते हैं ना एक दिन, इसीलिए हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर क्या लिखते हैं, समझ आया? दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो. ओके, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर. क्लोजिंग स्टॉक, अगर इनकी डिफरेंस करेंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज चेंज. चेंज इन स्टॉक इज फ्लो. चेंज इन स्टॉक इज, सो इनकम पर मंथ, पर मंथ कितना कमाता है ये, दैट इज फ्लो. क्योंकि टाइम पीरियड की बात हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट की टाइम बात नहीं हो रही है. प्रोडक्शन पर वीक, कितनी चीजें बनाता है एक हफ्ते. एंड इवन जीडीपी, बेटा मैंने क्या कहा था, व्हाट इज जीडीपी? फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर. एक साल. क्या, एक दिन की बात, एक साल. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड स्टॉक एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड फ्लो. समझ आया? समझ आया? ओके, नाउ वी हैव most important question, most important question in this unit. That's what you called circular flow of income. लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. मतलब टोटल कंट्री में 4 होते हैं. एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर. क्या होता है? मतलब घर वाले. क्या है? मतलब फैमिलीज है ना. दूसरा होता है फर्म सेक्टर. फर्म सेक्टर का मतलब बिजनेस सेक्टर. और तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट है. एंड फॉरेन सेक्टर मीन्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. तो टोटल आपकी इकोनॉमी में 4 होते हैं. क्या होते हैं? 4. क्या होता है? पहला हाउस होल्ड सेक्टर, यू नो, वी, जो हम लोग होते हैं. ठीक है. दूसरा क्या है? फर्म सेक्टर. तीसरा क्या है? टफ लगा बेटा जी? तीसरा क्या है? एंड द फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. एंड वी हैव अ क्वेश्चन. अब हमारे सिलेबस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? मतलब 2 सेक्टर मॉडल. क्या बेटा? इन 4 में से इन्होंने सिर्फ 2 लिए हैं. क्या लिए हैं?
तो 4 सेक्टर्स नहीं है, सिर्फ हमें क्या कंसिडर करने हैं, 2 ही सेक्टर। क्या करने हैं? तो व्हाट इज आवर टॉपिक? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो लिख के लीजिए बेटा जी, ये इस साल पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बेटा जी? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा देखना बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में टॉपिक क्या है बेटा जी? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो ये क्या कह रहा है, बात समझना बेटा जी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर मैं आपकी इसमें एजम्पशंस भी पढ़ाऊंगा, फिर ऑब्जर्वेशंस भी पढ़ाऊंगा। ये कहता है कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर है। क्या है? 2 ही सेक्टर। एक है हाउस होल्ड और दूसरा है बेटा जी बिजनेस, दैट इज फर्म सेक्टर। क्या है बेटा जी? समझ आया? एक है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा क्या है? फर्म्स। इज इट क्लियर? व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है बेटा जी? टफ मत लगा। इज इट क्लियर? हमारे पास है हाउस होल्ड और है बेटा जी फर्म्स। तो कह रहा है, अब ये जो हाउस होल्ड है ना, ये जो हाउस होल्ड मतलब लोग, ये लोग इसे कह रहे हैं, हाउस होल्ड किसे कह रहा है? फर्म्स को। आपका वजूद ना होता अगर मैं ना होता। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड इसे कहता है कि मैं आपको देता हूं लैंड, क्योंकि मजदूर निकलेंगे ना घर से, ठीक है, जमीन की भी देगा ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? एरो इज इंपॉर्टेंट बेटा जी। ठीक है, लैंड, लेबर। तो ये कहता है इसे कि मैं आपको देता हूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या देता हूं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, समझ आया बेटा जी? कोई क्वेश्चन? हाउस होल्ड किसे कहता है? फर्म को। क्या आपका वजूद नहीं होता अगर मैं ना होता? समझ आ रहा है? तो ये कहता है फर्म खुद पे इतना नाज न कर, खुद पे इतना नाज न कर। अगर तू है, तू भी मेरी वजह से ही है। अगर तू है, तू भी मेरी वजह से ही है। हाउस होल्ड को क्यों? तू लैंड देता है, मैं रेंट देता हूं। तू लेबर देता है, मैं वेजेस देता हूं। तू कैपिटल देता है, मैं इंटरेस्ट देता हूं। तू एंटरप्रेन्योरशिप देता है, मैं प्रॉफिट देता हूं। इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? टफ लगा? टफ लगा बेटा जी? ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा जी। हाउस होल्ड ने कहा किसे? फर्म से, कि अगर तू है तो मेरी वजह से है, मैं आपको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप देता हूं। लेकिन फर्म ने यहां से कहा कि मैं आपको रेंट देता हूं, मैं आपको वेजेस देता हूं, मैं आपको इंटरेस्ट देता हूं, मैं आपको प्रॉफिट देता हूं। समझ आया? इज इट क्लियर? तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है और पकड़ता क्या है? फैक्टर इनकम। क्या पकड़ता है? टफ लगा? टफ लगा बेटा जी? इज इट क्लियर? बेटा इसके लिए फैक्टर इनकम है, इसके लिए फैक्टर पेमेंट है। समझ आया? ठीक, अच्छा, हो गया ये। अब ख्याल रखना, इसने पैसा पकड़ा, इसने पैसा पकड़ा, फिर होता क्या है? नो, ये पैसा है ना, ये खर्च करते हैं, ये पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जी क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें छोटा बच्चा है, इसके पापा को नैन लाना है। ये नैन कहां से लाएगा? दुकानदार से। दुकानदार क्या है? बिजनेसमैन। नहीं समझ रहे? नैन से क्या करो, नैन क्या करो, तुम्हें नहीं पता बेटा जी, ये बताऊंगा कब, बताऊंगा, ठीक है? चलिए बेटा जी। हाँ, फिर से समझना,
अब कोई भी चीज लानी, आपको जीन्स लानी है, लेट इट बी, आपको शर्ट लानी है, क्या बेटा, बेटा लाना है शर्ट। शर्ट कहां से, पहले पैसा कहां से आएगा? लिसन, पैसा कहां से आएगा? क्योंकि आपने रेंट पकड़ी, आपने वेजेस पकड़ा, आपने इंटरेस्ट पकड़ा, आपने प्रॉफिट पकड़ा, तो पैसा आया आपके पास। अब आपको एक शर्ट लानी है, शर्ट किससे लाओगे आप? बिजनेस से। तो बिजनेसेस फॉर्म, बिजनेसेस, रफ मत लगा, समझ आया? समझ आया? तो गुड्स एंड सर्विस कौन देंगे? और जो आप क्या दोगे? आप स्पेंड करोगे, आप स्पेंड करोगे, दैट्स कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजम, ये बीच में भूल जाता है ना इंसान, होता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नहीं समझ आया बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा जी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपने गुड्स एंड सर्विस कौन देता है? फर्म देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कौन देता है? फर्म देता है। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन बेटा करता है? हाउस होल्ड करता है। मतलब ये खर्चा करते हैं और लाते हैं गुड्स एंड सर्विस, फिर मजदूरी करते हैं, फिर यही, दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। व्हाट इट इज? सर हमें वहां पे क्या करना है? पहले लिखना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, उसके बाद अपने ये डायग्राम बनानी है। क्या बनानी है? ये डायग्राम। नाउ लिसन टू मी बेटा जी, ये बाद में देखेंगे। assumptions ऑफ टू सेक्टर मॉडल। सबसे पहले हमें एज्यूम करना है, हमें एज्यूम करना है कि वहां पे दो ही है। देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। कौन कौन है? ऐसे बनाया था ना मैंने, हाउस होल्ड और फर्म बनाया था। सो इकोनॉमी में कितने हैं? दो। कौन कौन सा है? हाउस होल्ड है और फर्म है। हाउस होल्ड मीन्स घर और फर्म मीन्स बिजनेस। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए, हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है इसे? फैक्टर सर्विस, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, यही तो एज्यूम करना है ना, कि नहीं समझ आया? समझ आया? फिर से समझना, देयर आर टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। हाउस होल्ड क्या देता है इसे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हो गए दो? इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड देन सेल टू द, हाँ इसका रिटर्न अब आएगा। देखो ये इसे क्या देते हैं, ख्याल रखना बेटा जी, बट वी हैव टू एज्यूम, वी हैव टू एज्यूम देयर आर टू सेक्टर्स। देयर आर कितने सेक्टर है? दो सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और, अच्छा मुझे बताओ हाउस होल्ड क्या देता है इसे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। वो क्या देता है इसे? नहीं नहीं, वो गुड्स एंड सर्विस देता है। वो क्या देता है? अब इनका रिटर्न आएगा। याद रखना बेटा जी, ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें, ये देता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये यहां से क्या देता है? गुड्स एंड सर्विस। ये याद रखना बेटा, यहां पे पैसा नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। ये लैंड दे रहा है, इसका रिटर्न पैसा है, मगर लैंड पैसा, लेबर पैसा, कैपिटल पैसा, एंटरप्रेन्योरशिप पैसा नहीं है। और फर्म क्या देता है? सो गुड्स पैसा नहीं है, सर्विस पैसा, हाँ। अब इनका रिटर्न क्या है? पैसा। तो देखो, हाउस होल्ड रिसीव, ये जो ये इन्होंने दिया ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड फ्रॉम, अब ये मैंने ये दो इकट्ठे लिखे, एंड स्पेंड देयर एंटायर इनकम, ये अपनी इनकम सारी खर्च करती है किस पे? कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड, टफ लगा? इजी है, इजी है बेटा जी। ओके, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी। यू हैव टू एज्यूम कि हम कोई भी चीज सेव नहीं करते। अगर हम सेव करेंगे ये मत सर्कुलर बनेगा। Is it clear? So there are five assumptions. There are five assumptions. Now listen to me, my dear. कितनी assumptions है? यहाँ देखिए बेटा, कितनी assumptions है? Listen to me बेटा जी। ये चीजें है ना, इसका अलग नाम है, जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। मैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा हूं, वो मुझे गुड्स एंड सर्विस, पैसा मत इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ, मैं फैक्टर इनकम पकड़ रहा हूं और कंजप्शन एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा हूं, वहां पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। ये दो अलग टर्म्स आगे है। चलिए बेटा जी, ये एजम्पशन है। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस टू सेक्टर मॉडल, दैट इज ऑब्जर्वेशन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड बाय फर्म, जो इन्होंने गुड्स बनाए वो किसके बराबर है? टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द हाउस होल्ड सेक्टर।
इज इट क्लियर? मतलब जो फर्म ने चीजें बनाई, अगर उन्होंने 10 चीजें बनाई और घर वालों ने कितनी चीजें इस्तेमाल की? 10 चीजें। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन. Total production of goods and service by firm is equal total consumption of goods and by the household sector. Is it clear? Tough mat laga? Okay. The second one is factor payment by. सर हमने तो पढ़ा ही नहीं. मैंने कहा ना फैक्टर इनकम. वहां पे क्या है वो? फैक्टर पेमेंट. फैक्टर पेमेंट बाय इज इक्वल फैक्टर इनकम ऑफ द. इज इट क्लियर? जो उन्होंने पेमेंट की वो इन्होंने कमाई. जाहिर सी बात, इजी है ना. फैक्टर पेमेंट बाय फर्म. समझ आया? फैक्टर पेमेंट पर अगर उन्होंने रेंट दी 100 रुपए, उनके लिए पेमेंट है, हमारे लिए क्या है? इनकम. सो फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर. कितने हो गए? 2 हो गए. कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर. कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ is equal to income of household sector. Therefore, saving is equal to 0. Therefore, saving is equal. मतलब जो एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड, मगर अगर उनका 1000 रुपए है एक्सपेंडिचर, वही इनकम किसकी है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इज इक्वल टू इनकम ऑफ. मतलब जो अगर वो 1000 रुपए कमाते हैं, उन्होंने 1000 रुपए खर्च किया है. सेविंग मत है. We have observed because it is assumption, there is no saving. The last one, money flows are opposite to real flow. Sir, ये real flow और money flow there is concept. ये समझाऊंगा. Money flows are opposite to. तो चलो वहां पे 2 flows आ गए. एक आ गया money flow और दूसरा क्या आ गया? Real flow. नहीं समझ आया? तो वहां पे क्वेश्चन आपको आएगा, what is circular flow of income? Circular flow of income, two sector model. सो हम लिखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हैज सर्टेन assumptions. ठीक है, पहले लिखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा बहुत होता क्या है. समझ आ रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है द इनकम व्हिच वी अर्न इज स्पेंट ऑन द सर्टेन थिंग्स. समझ आया? इट कम्स बैक, ये आता है जाता है, बस बाकी कुछ नहीं. ठीक. हाँ, इसमें आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देखो 2 चीजें हैं, एक तो है रियल फ्लो, एक क्या है? रियल फ्लो. नाउ लिसन टू मी. और दूसरा है मनी फ्लो. देखो मैंने क्या कहा आपको, ये बनाना. अगर रियल फ्लो आया, मैंने कहा आप हम है हाउस होल्ड और क्या है? फर्म. और क्या है? फर्म. हाउस होल्ड ने क्या दिया जिनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है? एक तो दिया लैंड लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. देखो मनी फ्लो में देखो वी हैव हाउस होल्ड. प्लीज बेटा जी समझिए. वी हैव फर्म. हाँ, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप है ना. इसके बदले क्या देते हैं? पैसा. देखो पैसा बेटा यहां से आएगा, पैसा देते हैं ना ये. तो देखो मैंने 2 चीजें ली. यहां पे मैंने पहले फिजिकल गुड्स ले ली, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप. टफ मत लगा? ओके. अब मुझे बता दीजिए, फर्म कहती है इसे कि हम गुड्स एंड सर्विस क्या देते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेटा क्या यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हुआ? मत हुआ पैसा इन्वॉल्व. यू कॉल इट रियल फ्लो. व्हाट यू कॉल इट? अब मुझे बताना बेटा जी, जो यहाँ पे फर्म क्या दे रही है इन्हें? फर्म दे रही है इन्हें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और इज इट क्लियर? क्या दे रही है? प्रॉफिट. टफ लगा? इज इट क्लियर? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. ठीक है, ये कौन दे रही है? समझ आ रहा है? और ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये खर्च कर रहे हैं ना पैसा. ठीक है, तो ये पैसा है, यू कॉल इट मनी फ्लो. यू कॉल इट, जहां पे पैसा होगा रिटर्न, यू कॉल इट मनी फ्लो. जहां पे फिजिकल गुड्स होंगे रिटर्न, यू कॉल इट रियल फ्लो. देखो बेटा जी, it refers to flow of non-monetary transaction, that is factors of production, input and. बेटा अगर रियल फ्लो आया ना, ये लिखना और ये डायग्राम बनाना, ये विल गेट फुल मार्क्स. समझ आया? ये रियल फ्लो है.
एंड व्हाट इज मनी फ्लो बेटा जी? मनी फ्लो क्या होता है? देन इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, दैट इज फैक्टर इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। समझ आया? समझ आया बेटा जी? ये बनाना और ये बनाना। सो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा जी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे बनाओगे आप? पहले याद रखना बेटा जी, जो ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिखनी है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। क्या बेटा जी? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? क्या बेटा जी? फिर इसके बाद आप इसे एक्सपेंडिचर बताओगे, जो इसका एक्सपेंडिचर है ना, जो इनका एक्सपेंडिचर है वो बताओगे। टफ मत लगा? इज इट क्लियर? अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिखोगे तो मैं आपको लिखवाता हूँ। हाँ हाँ, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to continuous circular movement of money and goods in the economy। बस, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मनी एंड गुड्स इन द इकोनॉमी। समझ आया बेटा जी? टफ मत लगा? हाँ बेटा, अगर आप देखोगे तो इसके तीन फेजेस है, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मैंने सारा एक ही में आपको बनाया, एजम्पशन में भी और ऑब्जर्वेशन में भी। किसमें? एजम्पशन में भी और ऑब्जर्वेशन भी। ये आप देखोगे ये छोटा बनाया होगा, लेकिन मैंने ये थोड़ा अच्छे से बनाया। एजम्पशन अलग लिखी और ऑब्जर्वेशन अलग लिखी। एजम्पशन क्या है बेटा जी? देयर आर टू टू सेक्टर्स। कौन कौन सा है? हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड क्या देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और मुझे फर्म्स क्या देती है? गुड्स एंड सर्विस। ओके, हाउस होल्ड क्या पकड़ते हैं? फैक्टर इनकम। समझ आ रहा है? और ये जो होता है, और टोटल सेविंग इज इक्वल जीरो। सिंपल, टोटल सेविंग इज इक्वल जीरो। क्या समझ आया? समझ आया? तो कल थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल इंशाल्लाह विल गो थ्रू न्यूमेरिकल ऑफ जीडीपी। ठीक है? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Okay, my dear students, now the topic is aggregates related to national income। क्या है बेटा जी टॉपिक? Aggregates related to national income। बेटा जी पहले ये लर्न कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, कितने हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। और हम कैसे इन्हें याद रखेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट इन क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल करना। अगर आप ऐसे याद करोगे फॉर्मूला तो वो नहीं रहेगी। देयर इज अ प्रॉपर ट्रिक, प्रॉपर वे जो आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो एग्रीगेट्स कितने हैं नेशनल इनकम के? व्हाट डज इट मीन? नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा उसको फिर समझ आएगा। सबसे पहले ये टेबल थोड़ा सा मैंने बनाया ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है? मार्केट कॉस्ट। देखिए बेटा जी, एग्रीगेट से टोटल 8। क्या है? 8। ये ग्रॉस है ना बेटा जी, ये इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे जी, डोमेस्टिक को कहेंगे डी, प्रोडक्ट को कहेंगे पी, फैक्टर कॉस्ट को कहेंगे एफ सी, नेट को कहेंगे एन, नेशनल को कहेंगे एन, पी इज सेम, मार्केट कॉस्ट को कहेंगे एम सी। अब लिसन टू मी माय डियर, एग्रीगेट्स बेटा जी, देखो बेटा पहला एग्रीगेट, ठीक, जी ग्रॉस डोमेस्टिक। यहां देखना बेटा, प्लीज कलम रोकिया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज जी, फिर डी, प्रोडक्ट मींस
पी, GDP, फिर FC। इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट, टफ लगा। इसके बाद GDP, MC, GDP, MC, what does it mean? Gross domestic product at market cost। समझ आया? ओके, अब डी ले लिया, GNPFC, क्या? GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इजी है। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट, बताइए समझ आया? समझ आया कि नहीं? ठीक है, इनकी फॉर्मूलाज आपने याद करनी है। वो याद कैसे करनी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, ओके। नाउ अब बता दीजिए मुझे, अब ग्रॉस आया बेटा जी, अब लीजिए ये NDPFC, जरा ND प्रोडक्ट इज सेम, FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, इज इट क्लियर? टफ मत लगा। तो कितने एग्रीगेट्स है? 8। ठीक है, तो समझ आया ना? सिर्फ आप ऐसे लिखोगे GDPFC NNPMC। इज इट क्लियर कि टफ लगा? फिर से समझना। तो अगर हम इन्हें, बताओ ये क्या बना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, टफ लगा? नहीं, सच बताए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, व्हाट यू कॉल दिस? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो 8 एग्रीगेट समझ आए। सो यू हैव ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जरा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट। इज इट क्लियर? ये डिफाइन आएगा, अब पहला है ना एन, नेट, क्या बेटा जी? नेट, ये इमेज जो है ना बेटा, अपने दिमाग में ना विजुअल करना कि नहीं, ये इमेज सर ने ऐसे बताई थी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेरी गुड, एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट। तो अगर क्वेश्चन आया, ओके, गिव द नेम ऑफ रिलेटेड एग्रीगेट्स, ऐसे ही बनाना, आएगा बनाना, आएगा बनाना। ओके, नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट national product at market cost। Now listen to me my dear, अब होगा क्या?
कभी ये दिया होगा कहेगा ये निकालो, कभी ये दिया होगा कहेगा ये निकालो, ये दिया होगा कहेगा ये निकालो। सर हम कितनी फॉर्मूलाज याद रखें, हमें तो ये 8 भी अभी याद नहीं, तो फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे। ठीक, हम कैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अगर ग्रॉस से नेट बनाना है, ग्रॉस से क्या बनाना है, ख्याल रखना बेटा जी। अब ये कॉपी किया आपने, अभी कॉपी किया आपने, ओके। अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, here is gross and here is net। अगर आपने ग्रॉस से क्या बनाना है, इज इट क्लियर, ग्रॉस से क्या बनाना है, तो आपने माइनस करनी है डेप्रिसिएशन। टफ लगा, सिंपल, क्योंकि नेट कब बनता है, जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। समझ आया कि नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और याद रखना ग्रॉस और नेट पहला होता है, ग्रॉस और नेट पहला होता है। अगर पहले लिखा है जी, व्हाट डज इट मीन, ग्रॉस। अगर पहले लिखा है एन, व्हाट डज इट मीन, नेट। इज इट क्लियर, जो पहला है, क्या बेटा जी, जो पहला है या तो वो ग्रॉस होगा या तो वो नेट होगा। इज इट क्लियर। अगर ग्रॉस से बनाना है नेट, व्हाट यू हैव टू सबट्रैक्ट, डेप्रिसिएशन। मेरी बात समझना, ओके। अगर अब बेटा जी नेट से बनाना है ग्रॉस, अगर नेट दिया है, बनाना क्या है, तो आप करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन। समझ आया कि नहीं समझ आया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ग्रॉस से नेट क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। अगर नेट दिया है कहेगा ग्रॉस बनाओ, इज इट क्लियर। और ग्रॉस और नेट पहला होता है, ग्रॉस और नेट, समझ आया। लेट्स टॉक ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल, लेट्स टॉक ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल। बेटा जी क्या, ओके पहले, हाँ वो दूसरा है ना, डोमेस्टिक और नेशनल। अगर आपको डोमेस्टिक से आना है नेशनल, क्या बेटा जी, डोमेस्टिक से आना है, यहां देखिए, डोमेस्टिक से आना है, डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल। डोमेस्टिक इनकम पहले थोड़ा बहुत समझना, इंडिया की इनकम जो सिर्फ इंडिया में कमाते हैं, नेशनल इनकम जो इंडिया में भी कमाते हैं, फॉरेन में भी कमाते हैं। तो डोमेस्टिक से बनना है, डोमेस्टिक एक छोटा कंसेप्ट है, नेशनल इनकम बड़ा कंसेप्ट है, तो इसे हम प्लस करेंगे, ये तो इंडिया इनकम है, प्लस करेंगे नेट फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। NF, सर ये तो समझ नहीं आया, NFI क्या है। देखो बेटा जी NFI क्या है, मैं लिखूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मगर ये NFI है ना बेटा, ये जो NFI है ना, मतलब हमने अब्रॉड से कितनी इनकम कमाई, अब्रॉड से कितनी इनकम कमाई, ये बराबर है फीफा माइनस फीटा। क्या बेटा, फीफा माइनस फीटा। मतलब सर व्हाट डज इट मीन, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब हमने फॉरेन से कितना कमाया और फॉरेनर्स ने हमसे कितना कमाया। टफ लगा नहीं। If you have to go domestic to national, what you have to add? NFIA, net factor income from abroad. Try to understand. FIFA means factor income from abroad, and FITA means factor income to abroad। बेटा जी ख्याल रखना बेटा जी, हेलो, ये जो NFI है ना, NFIA, it can be positive as well as negative।
बट आप अपनी फॉर्मूला याद रखोगे, यू हैव टू ऐड प्लस। अगर माइनस आया ब्रैकेट में रखेंगे माइनस। तो समझ नहीं आया, लेट इट बी। अगर आपका फीफा है 100 रुपए और फीटा है 80, ये क्या निकला आपको? 20 पॉजिटिव। इज इट क्लियर? इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल। सो दिस इज NFIA। दिस इज, समझ आया क्या है ये? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसके बराबर है? फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, वन मोर पॉइंट इज देयर। अगर ये है 100 और फैक्टर लोगों ने कमाया हमसे, तो आया ना -30। आपने कुछ नहीं करना है, अपने प्लस करना है ना, फॉर्मूला में प्लस लगाओ, लेकिन ब्रैकेट में क्या रखोगे इसे? Is it clear? So NFIA can be positive as well as negative. Okay, so what is the question first? अगर हमें ग्रॉस से जाना है डेप्थ, ग्रॉस से जाना है नेट, माइनस क्या होगा? नेट से जाना है ग्रॉस, प्लस होगा डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, प्लस क्या होगा? NFIA। नेशनल से डोमेस्टिक। वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छे। तो माइनस क्या होगा? NFIA। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, टफ मत लगा। NFIA समझ आया? ओके, नाउ डू टेल मी बेटा जी। और ये डोमेस्टिक और नेशनल होता है ना दूसरा, डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है? तो दूसरा क्या होता है? डोमेस्टिक और नेशनल। टफ लगा? डोमेस्टिक से नेशनल, यहां देखो, अगर दूसरा D है इट इज डोमेस्टिक, दूसरा N है इट इज नेशनल। पहला G है ग्रॉस, पहला N है नेट, दूसरा N क्या है? नेशनल। ख्याल रखना, पहला N क्या है? नेट, दूसरा N क्या है? नेशनल, दूसरा N क्या है? नेशनल। समझ आया? टफ मत लगा। इसके बाद P और P सेम है, P और P ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। टफ लगा? टफ लगा? फिर से समझिए बेटा जी, ग्रॉस से जाना है नेट, माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। नेट से जाना है ग्रॉस, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल, प्लस करेंगे NFIA। नेशनल से जाना है डोमेस्टिक, माइनस करेंगे NFIA। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस बेटा जी? बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपको आ रहा है। ओके, नाउ लिसन टू मी माय डियर। Lost, we have FC and we have MC। ठीक बेटा जी? अगर फैक्टर कॉस्ट ठीक है एंड मार्केट प्राइस दिया होता है, ठीक, मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फैक्टर कॉस्ट मींस मैंने कितना कमाया विदाउट टैक्सेस, विदाउट टैक्सेस, विदाउट मतलब गवर्नमेंट ने अभी मुझे टैक्स नहीं चढ़ाया, गवर्नमेंट ने मुझे अभी टैक्स नहीं चढ़ाया। अगर फैक्टर कॉस्ट से जाना है कहां पे? मार्केट प्राइस, तो इसे ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या करेंगे? फिर से समझना बेटा जी, फिर से समझना, सुनो सुनो सुनो। मैंने फैक्टर कॉस्ट का मतलब मैंने कितने में बनाया? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इज इट क्लियर? तो मैंने 100 रुपए में बनाया। कितने में बनाया? 100 रुपए में। तो गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट उन्होंने टैक्स चढ़ाया 20 रुपए, तो कितना हो गया मुझे? लेकिन गवर्नमेंट ने ही कहा आप जो बिजनेस कर रहे हो इसके लिए सब्सिडी है। क्या है? हम आपको 5 रुपए देंगे सब्सिडी। तो कितने में बनाए? 115। यू कॉल इट मार्केट प्राइस, यू कॉल इट। फिर से समझना, फिर से समझना। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से और एक चीज याद रखना, पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है बराबर इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करे सब्सिडी, माइनस करे नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके बराबर होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। फिर से नेट
इनडायरेक्ट टैक्स किसके बराबर होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, ख्याल रखना बेटा जी, मुझे कितने में हो गया खर्च, मतलब कितने में प्रोडक्ट बना? 100 रुपए का। गवर्नमेंट ने कितना, कितने में बना? यू कॉल दैट फैक्टर कॉस्ट। गवर्नमेंट ने कितना चढ़ाया? 20 रुपए, और कितना लेस किया? 5, दैट्स कॉल्ड सब्सिडी। इन अदर वर्ड्स, इन्होंने मुझे ऐड किया 15 रुपए, तो फैक्टर से बना ये 115, दैट इज मार्केट प्राइस। अगर फैक्टर से बनना है मार्केट प्राइस, प्लस करेंगे आप इसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जरा बताओ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके बराबर? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। इन अदर वर्ड्स बेटा जी, इन अदर वर्ड्स, अगर फैक्टर से जाना है आपको मार्केट में, आपको करना है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करना है सब्सिडी। समझ आया? ओके, अगर अब मार्केट प्राइस से जाना है आपको कहां? फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस, मार्केट में है ना टैक्स, तो फैक्टर में मत है, तो माइनस क्या करेंगे आप? NIT। क्या करेंगे? NIT। अब मुझे बताना बेटा जी, ग्रॉस डोमेस्टिक है ना, तो इसके बाद ये तीसरा है, एंड फोर्थ कैन बी फैक्टर कॉस्ट या मार्केट कॉस्ट। टफ लगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर से बनाना है मार्केट, फैक्टर से बनाना है, प्लस क्या करेंगे? मैं ये समझ नहीं आएगा आपको, प्लस करना है कि माइनस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हमने कितने में बनाया? हमने, और मार्केट में इसे ऐड होगा टैक्स, गवर्नमेंट चढ़ाएगी टैक्स, तब जाके बनेगा ये मार्केट प्राइस। तब जाके क्या बनेगा ये? तब जाके बनेगा ये मार्केट प्राइस। इज इट क्लियर? लिसन 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 टू मी। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो आप। अगर मैं लूंगा यहां पे GDP MP मार्केट प्राइस, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बनाना है NDPFC, यहां से यहां बनाना है। ग्रॉस, ग्रॉस को क्या बनाना है? नेट माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कुछ नहीं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कुछ नहीं। मार्केट से बनाना है फैक्टर, मार्केट से क्या बनाना है? फैक्टर। अगर मार्केट से बनाना है फैक्टर, माइनस करेंगे NIT, कुछ नहीं। समझ आया? तो टफ लगा? फिर से समझ, फिर से समझना जो मैं आपसे कह रहा हूं। GDP MP दिया है, निकालना है NDPFC, तो ये दिया है, तो ग्रॉस से क्या बनाना है? नेट बनाना है। तो ग्रॉस कैसे बनेगा? नेट माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस क्या करेंगे? DB सेम, DB सेम, PB सेम। हाँ, मार्केट को बनाना है फैक्टर, मार्केट में टैक्स होता है, टैक्स को माइनस करेंगे, बनेगा क्या? देखो, क्वेश्चन समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं? सिंपल बेटा जी, आप एंजॉय कीजिए लेक्चर। कैलकुलेट NDPFC बेटा जी। NDPFC का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लिसन लिसन टू मी माय डियर, सॉल्यूशन में ऐसे लिखना बेटा, 1 मिनट लगेगा। NDPFC हमें निकालना है, NDPFC हमें, 1 मिनट रुको और मुझे बताओ दिया क्या है? GNP MP। लिसन टू मी बेटा जी, ख्याल रखना बेटा जी, ये दिया है, ये निकालना है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, G को बनाना है N, ग्रॉस से जाना है नेट में, ग्रॉस से जाना है नेट, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस को कैसे बनाएंगे नेट? जब डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस, क्या करेंगे? तो मैंने फॉर्मूला में लिखा माइनस डेप्रिसिएशन। टफ लगा? टफ लगा? ओके। नेशनल, नेशनल दिया है, डोमेस्टिक, नेशनल से जाना है डोमेस्टिक, नेशनल, नेशनल में होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक में मत होता है। तो अगर नेशनल से जाना है डोमेस्टिक, क्या? नेशनल से जाना है डोमेस्टिक, तो माइनस करेंगे, यहां यहां देखिए ना प्लीज, नेशनल से जाना है डोमेस्टिक, माइनस क्या करेंगे? NFIA। इज इट क्लियर? माइनस करेंगे NFIA। टफ मत लगा? ओके, P और P से। मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट में होता है टैक्स,
फैक्टर में मत होता है टैक्स। आपको यहां जाना है, आपको यहां जाना है, तो मार्केट से कहां जाना है, फिर से समझना, मार्केट से कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस करेंगे ना, मार्केट से जाना है फैक्टर, क्या करेंगे, माइनस NIT। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर, हमें मत याद करने की जरूरत है। बताइए मुझे GNP जो है वो कितना है, so minus your depreciation is given, that is 200, you have minus net factor income from abroad, that is 400, so minus NIT जो है ना, NIT मतलब net indirect tax, indirect tax किसके बराबर, indirect tax minus subsidy, ऐसे indirect tax is 500, टफ मत लगा, 7000 minus 200 minus 400 minus 300, करो 7000 share now, so you got your 6100 answer। easy है कि टफ है, नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना is not a big thing, the important portion is फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा जी, मैंने 9 क्वेश्चन बनाया है जो आप देखेंगे, यहां तक ठीक, कोई क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन टू मी, what question says, what we have to find out, net national product at factor cost, net national product at factor cost, what is given, GDP, जरा मुझे हदफ बेटा बताओ, G से बनाना है N, ग्रॉस से बनाना है नेट, माइनस डेप्रिसिएशन, D से बनाना है नेशनल, डोमेस्टिक को बनना है नेशनल इनकम, हमें हिंदुस्तान से जाना है फॉरेन, प्लस करेंगे ना, क्या करेंगे, प्लस फॉरेन इनकम, नहीं समझ आया, प्लस करेंगे फॉरेन इनकम, ओके, P एंड P सेम, मार्केट से जाना है फैक्टर, मार्केट में टैक्स है, फैक्टर में मत टैक्स है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, जरा बताओ, G से जाना है N, G से जाना है N, मतलब G से जाना है नेट, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे बेटा डेप्रिसिएशन, ओके, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल, इंडिया से जाना है नेशनल, एक तो घर वाले कमाते हैं और फॉरेन इनकम भी कमाएंगे, ठीक है, प्लस NFIA, ओके, इसके बाद P से, ओके, मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट में टैक्स है, फैक्टर में मत टैक्स है, तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इज इट क्लियर, GDP MP, हाउ मच इट इज, 2000 माइनस, you have depreciation, गलती, you have depreciation, how much it is, 1000, प्लस नेट, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने कहा था ना ये बराबर है फीफा माइनस फीटा, किसके बराबर, फीफा माइनस फीटा, ओके, हाउ मच इज फीफा, 1500, हाउ मच इज फीटा, तो ऐसे में लिखो NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, that is 1500 minus 500, that is 1000 रुपए, is it clear, तो 1000 रुपए आया आपको ये, is it clear, टफ लगा, okay, you have NIT, net indirect tax, it's given, टफ लगा, कोई क्वेश्चन, you have बेटा जी net indirect tax, that is 1000, 20,000, so 19,000, अगर वहां पे करोड़ में लिखा होगा, करोड़ लिखा, समझ आया, टफ मत है, इज इट क्लियर, मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, मैंने मत कोई फॉर्मूला आपको याद कराई, मैंने जस्ट कहा जी ग्रॉस से बनाना है, जरा मुझे बताओ, मेरे से बात करो बेटा, ग्रॉस से बनना है नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से बनना है नेशनल, डोमेस्टिक से बन, आप क्यों डरते हो, डोमेस्टिक में फॉरेन इनकम नहीं होगी, नेशनल इनकम में फॉरेन इनकम होगी, डोमेस्टिक से बनना है नेशनल, प्लस करेंगे NFIA, समझ आया, ओके, फैक्टर कॉस्ट से बनना है मार्केट प्राइस, फैक्टर में मत है टैक्स, तो मार्केट प्राइस में जाना है, प्लस करेंगे, तो इसका उल्टा होगा फिर, अब लिसन टू मी, ख्याल रखना बेटा जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मैं स्टेप वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, वहां पे नहीं लिखा होगा डेप्रिसिएशन, वहां पे लिखा होगा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्या लिखा होगा, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या लिखा होगा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्या लिखा होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड, whenever these two terms are in your question, it means it is depreciation, what it is, depreciation, okay जी,
बेटा जी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, जी डी पी एफ सी, इसका मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज गिवन व्हाट इट इज, इसका मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब क्वेश्चन की तरफ मैं नहीं देखूंगा, बताओ मुझे बेटा जी, नेट से नेट को बनाना है ग्रॉस, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे ओके, नेशनल को बनाना है डोमेस्टिक, नेशनल में फॉरेन इनकम होगी, डोमेस्टिक में फॉरेन इनकम नहीं होगी, माइनस करेंगे NFIA। ओके, पीपी सेम, मार्केट में टैक्स है, फैक्टर में टैक्स नहीं है, तो माइनस करेंगे NIT। टफ मत लगा, इज इट क्लियर? दिस इज गिवन 16,000 रुपए एंड प्लस डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बेटा जी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 2,000 रुपए, माइनस NFIA। NFIA क्या मतलब, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो दिया है मत दिया है, इज इट क्लियर? कुछ मत दिया है। ओके अब NIT दिया है, NIT किसके बराबर, NIT यहां पे निकालेंगे, NIT होता है बराबर इनडायरेक्ट टैक्स, नाउ लिसन टू मी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस subsidy. So your indirect tax is 3,000, your subsidy is 4,000, ये आया ना माइनस 1,000, माइनस 1,000, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 1,000, तो ये बनेगा 18,000 माइनस माइनस प्लस 1,000, सो दैट इज इक्वल टू 19। मुझे बताओ न्यूमेरिकल टफ लगा, इजी है, इजी है, इज इट क्लियर? बस कंसेप्ट होना चाहिए। फिर से समझाऊंगा बेटा फिर से समझाऊंगा, ग्रॉस से बनना है नेट, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से बनना है नेशनल, प्लस करेंगे NFIA, फैक्टर कॉस्ट से बनना है मार्केट प्राइस, तो प्लस करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके बराबर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव, याद रखना बेटा जी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यू कॉल इट डोमेस्टिक इनकम, आगे जाके कंसेप्ट पढ़ना है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, व्हाट यू कॉल इट, डोमेस्टिक इनकम। क्या बेटा जी? कभी कभार क्वेश्चन नहीं कहेगा आपको NDPFC निकालो, आपको कहेगा डोमेस्टिक इनकम निकालो, कुछ नहीं बेटा, याद रखना आपने क्या करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट, मार्केट प्राइस पे नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मगर कौन सा, नेट वाला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDPFC। ओके सो यू हैव टू फाइंड आउट NDPFC। बेटा व्हाट इज गिवन, GNPMP। बताओ बेटा, जरा मुझे बताओ, ग्रॉस को बनाना है नेट, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, कहां माइनस करेंगे ना बेटा जी, माइनस करेंगे। ओके ग्रॉस दूसरा होता है नेशनल या डोमेस्टिक, नेशनल को बनाना है डोमेस्टिक, माइनस क्या करेंगे, NFIA। PP सेम, मार्केट प्राइस में टैक्स है, इसमें टैक्स है, मार्केट प्राइस को बनाना है फैक्टर कॉस्ट, माइनस क्या करेंगे, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा ख्याल रखना बेटा प्लीज, ठीक है? नाउ दिस इज गिवन 6,000, depreciation is given 100, net factor income from abroad it is given 400। कभी कभार ये माइनस में भी दिया होगा, आपने कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूला में आपने माइनस लिखा, अगर माइनस में दिया है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस, ठीक, मगर यहां पे माइनस नहीं दिया है। ओके NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये किसके बराबर होता है, NIT? NIT किसके बराबर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ओके इनडायरेक्ट टैक्स क्या है आपका 300, सब्सिडी क्या है आपका 200, दैट इज 100 माइनस 100, सो 6,000 माइनस 100 माइनस 400, 5,400 इज योर आंसर। इजी, सच बताइए इजी बेटा जी, जरा बताओ, ग्रॉस को बनाना है नेट माइनस डेप्रिसिएशन, इज इट क्लियर? ग्रॉस को बनाना है नेट माइनस डेप्रिसिएशन,
ओके, डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, मतलब डोमेस्टिक को बनाना है फॉरेन इनकम, तो इसमें एफ होगा ऐड, समझ आया, समझ आया, प्लस NFIA, फिर वापस तो रिवर्स में हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट, लिसन टू मी, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, डेप्रिसिएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज का ख्याल आप रखेंगे। व्हाट इज गिवन, ये और ये, हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको। निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, डेप्रिसिएशन। चलो मैं पहला लेता हूं, NNPFC इज इक्वल GDPMP। तुम समझना बेटा जी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में डेप्रिसिएशन आएगी ना, मेरी बात समझिए आप बेटा जी। ग्रॉस को बनाना है नेट, ग्रॉस को बनाना है नेट, माइनस क्या करेंगे बेटा जी, आया ना डेप्रिसिएशन। ओके, डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पीपी से मार्केट प्राइस को बनाना है फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT, ये तो दिया है। देखो NNPFC कितना है 4000, ओके, GDPMP कितना है 5000, माइनस डेप्रिसिएशन, यही तो निकालना है। NFIA तो दिया है कितना है 300, NIT भी दिया है कितना है 500, इज इट क्लियर। सो यहां पे 4000 है इज इक्वल 5000 प्लस 353 माइनस 5, दैट इज 4800, 4800, इज इट क्लियर, टफ मत लगा, ये 48 यहां जाएगा, 4000 माइनस 4800 इज इक्वल टू माइनस डेप्रिसिएशन, minus 800 is equal to minus depreciation. Therefore, क्या समझ आया, नहीं समझ आया कि नहीं, सच बताइए, एक मिनट बेटा, क्या ये यहाँ पे ले, ये यहाँ पे ले, इससे भी निकाल सकते हैं, समझ आ रहा है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। इज इट क्लियर, ट्राई, यू हैव टू ट्राई, ठीक है। ग्रॉस को बनाओ नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को बनाओ फॉरेन प्लस NFIA, समझ आया, ये याद रखो, ग्रॉस को बनाओ नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को बनाओ नेशनल प्लस NFIA, फिर क्या मैंने कहा, फैक्टर को बनाओ मार्केट प्राइस प्लस NIT, ओके। कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हमें कुछ नहीं बेटा, ये दिया है, ये दिया है, बताओ GNP, समझ आ रहा है, ओके, GNP, so gross national product at market price, समझ आ रहा है, is equal to NDPFC, are you getting my dear, okay, now the question is, अब मुझे बताओ बेटा, नेट को बनाना है ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, समझ आया, ओके, डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल प्लस NFIA, 2 मिनट लगेंगे इसको रिवाइज करने में, सिर्फ ग्रॉस को नेशनल, ग्रॉस को नेट, डोमेस्टिक को नेशनल, समझ आया, ग्रॉस को नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल प्लस NFIA, फैक्टर को मार्केट प्लस NIT। अब रिवर्स पे करो, 2 मिनट लगेंगे, 2 नहीं 4, 4 नहीं 8, चलो आधा घंटा लगा, टॉपिक तो आया ना, समझ आया, यही डिफाइन करना है, यही डिफाइन करना है, टफ लगा बेटा जी, ओके। NDPFC प्लस डेप्रिसिएशन, ओके, कहां पहुंचे हम, अब FC को बनाना है MP, ओ NIT तो हमें निकालना है ना, GNPMP, ये क्या है आपका 7000, ये क्या है आपका 6200 प्लस डेप्रिसिएशन इज गिवन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है ना, ओके, प्लस NFIA माइनस 400, एक मिनट बेटा जी, क्या मैं, इज इट माइनस 400, टफ मत लगा ना, फॉर्मूला हमारी अपनी है, फॉर्मूला हमारी, हमें प्लस करना है, ठीक है, अभी माइनस में दिया है तो डरना नहीं, प्लस NIT 6800 प्लस माइनस माइनस 400 प्लस NIT, so 7000 is equal to 6400 प्लस NIT, ये जाएगा यहाँ पे 7000 माइनस 6400 is equal to NIT,
सो NIT इज इक्वल, टॉपिक अच्छा है आज, तो क्लियर हो गया ये, टफ मत है, टफ मत है। ओके, लास्ट वन, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सब्सिडीज, कैलकुलेट सब्सिडीज, सब्सिडीज आता है NIT में, NIT में। ओके ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, GNPFC, ओके, और दिया है NDP MP। नाउ नेट को बनाना है ग्रॉस, प्लीज, नेट को बनाना है, हेलो हेलो हेलो, नेट को बनाना है ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रोडक्ट मार्केट माइनस NIT। क्या मैं ऐसे लिखूं, माइनस NIT के बजाय इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी लिख सकता हूं, इज इट क्लियर? तो मैं ऐसे लिखूं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, मेरी बात समझ आए, मैं सच बताया, समझ आया? ओके, नाउ दिस इज गिवन, this is 27,000, NDP this is 24, so depreciation is 4,000, net factor income from abroad। okay, NFIA किसके बराबर, फीफा माइनस फीटा, फीफा क्या है 500 माइनस फीटा क्या है 600 माइनस 100। अब यहाँ पे माइनस है, लिसन टू मी, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स के बजाय हम लेंगे 1200, और यहाँ पे माइनस सब्सिडी, है ना, ये ब्रैकेट है, ख्याल रखना बेटा जी। दिस इज 27,000, दिस प्लस दिस 6,400 प्लस माइनस माइनस 100, ओके, फिर माइनस 1200, माइनस माइनस प्लस सब्सिडी, यहाँ पे ख्याल रखना बेटा जी, माइनस माइनस प्लस सब्सिडी, या फिर समझे नहीं समझे, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट किसके बराबर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, हमने लिखना था ना यहाँ पे NIT, NIT किसके बराबर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो मैंने ये NIT ले लिया क्योंकि जो दो चीजों के बराबर है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स ये है, माइनस सब्सिडी ये है, ठीक है, माइनस 1200 माइनस माइनस प्लस सब्सिडी, इज इट क्लियर? इसे 27,000 ऐसे लिखे, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, बता दीजिए बेटा जी, 6400 माइनस 100 माइनस 1200 कितना हुआ, 5100, टफ मत लगा, प्लस सब्सिडी, इज इट क्लियर? ये जाएगा यहाँ पे 27,000 minus 5100 is equal to subsidy, so therefore subsidy is equal to this minus this 21,900। क्या समझ आया? कोई क्वेश्चन बेटा जी? ओके, कैलकुलेट फीटा, मैंने हर एक चीज आपको दिखाई, एक ही लेक्चर में मैंने हर एक चीज आपको दिखाई। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फीटा, फीटा मींस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सो व्हाट इज गिवन, GNPMP, okay, NDPFC, okay, नेट को बनाना है ग्रॉस, थैंक यू, नेट को बनाना है ग्रॉस, नेट को बनाना है ग्रॉस, डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, वन डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, ओके, पी सेम, फैक्टर को बनाना है मार्केट प्राइस, फैक्टर में मत है टैक्स, फैक्टर में टैक्स नहीं है, MP में टैक्स है, प्लस NIT, NFIA को मैं लिख सकता हूँ फीफा माइनस फीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, इसके बाद लिखते हैं व्हाट इट इज, GNPMP 4500, दिस इज NDP
फीफा माइनस फीटा प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT किसके बराबर? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, okay, indirect tax is 300, subsidy is 200, that is 100. तो यहाँ पे ले लिया. Is it clear? So you have to, this is 4500, 39 plus 1, that is 4000. Okay, plus बताओ FIFA क्या है? FIFA is 700, but minus theta is not given. Plus 100. Is it clear? तो ऐसे आएगा 4500 plus 4000 plus 700 plus minus theta plus 100. सत्तर plus आपको 4500 try to understand 4500 4700 और 100 बेटा कितना होगा 4800 माइनस थीटा. इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए 45 minus 4800 is equal to minus theta. So therefore, is it clear? हर एक चीज निकल रही है. Calculate national income. Last one. National income. National income क्या है? Net national product at factor cost. वहां पे था net, वहां पे क्या था जो net domestic income at factor cost. ये क्या है? Net national income at factor cost. क्योंकि national income आगे पढ़ना है ना, समझ आ रहा है? Okay, now नेशनल इनकम ख्याल रखना, इट इज NNPFC, दिया है GNPMP. ओके बेटा ग्रॉस से बनाना है नेट. ओके नेट देखो, ये नेशनल से नेशनल कुछ नहीं, PP से मार्केट से जाना है फैक्टर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स. ये NIT लिखेंगे ना, माइनस NIT. दिस इज गिवन 4500 एंड एक मिनट. ओके GNP that is 4500 minus 100 माइनस NIT किसके बराबर होता है? यहीं पे लिखेंगे. हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. सो दिस इज इक्वल टू 4400 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स इज देयर. कितना है बेटा जी? 300. 4400 माइनस को ऐसे रखो. So 4400 minus 100 that's equal to 4300. Simple. सर ये क्यों दिया है? मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं बिकॉज मैंने फॉर्मूला सीखी निकालनी कैसी है. इज इट क्लियर? टफ मत लगा. ये क्वेश्चंस है ये मैं देखना पसंद करूंगा. आपने मेरी बात समझ आई? इसका आंसर भी दिया है, सारे क्वेश्चंस कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल NDPMP आपको निकालना है NN सेम, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल, तो आप NFIA करेंगे प्लस. इज इट क्लियर? सो NF, हाँ जी समझ आ रहा है. बुक पे इतने ही क्वेश्चन है 5 और 6, मैंने आपको इतने क्वेश्चन दिखाए. आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया. ठीक है, बाय बाय. Okay, my dear students, now the topic is methods of calculating national income. Okay? How can we calculate national income? So we have 3 methods. How many methods do we have? 3. Okay? So keep in mind beta G. The first method is called value added method. What do we call it? Value add method. Okay? The second one is called income method. And the third one is called expenditure method.
So tell me, how many methods do we have in total, sir? 3. What is the first one? Value added method. What is the second one? Income method. And what is the third one? Expenditure method. And today we are going to study, today we will do direct numerical of value add method. Whose? Value add method. Is it clear? So remember beta G. First I will explain to you what is the meaning of value add. Okay, now understand beta G, that a man went to the forest to cut wood. Okay? So he cut the wood. Now he brought the wood. Okay? So from where did he cut it? He cut the wood from the forest. Now he sold this wood for 500 rupees. For how much did he sell it? So how much did he earn? Okay, did you understand? So his name is B, so whatever B earned 500 minus this amount. He got it for free. So how much did B earn? 500, is it clear? Now this B polished this wood and sold it to C, and he sold it to C for 900 rupees, okay. For how much? Now tell me, I don't understand. He sold it for 900 rupees. Is it understood? You call that sale? You call that? For how much did he buy it? For 500 rupees, and whatever he earned 400 rupees, is it clear? So how much value did he add? 400, you call this sale and you call this purchase. But intermediate purchase. Why should I explain the meaning of intermediate purchase? Now C sent it to D, is it clear? Are you understanding? It was tough, okay? Now what happened? C sent it to D for 1,500 rupees. For how much? For rupee 1,500, his sale will become his purchase. Okay? Now for how much did he sell it? For rupee 1,500. For how much did he buy it? So, 600 rupees is value added. 600 rupees is value added. It was tough. 600 rupees is value added. So what do you mean by saying this value that you are adding, and for how much did you sell it? Rupee 1,500. How much did he earn? How much did he earn? How much did he earn? 645 is equal to rupee 1,500. What happens? Remember this. It's value added. It's value added and it's value added. This is the final price at the end. What happens? Because there are two ways of doing this. But we should do it this way. In which way? How much value is added in this way? Did you understand? Simple. What did I say? How much value did he add? 500. How much value did he add? 400. How much value did he add? So 900, 500, 900. This 900, you call it purchase, right? He bought it, right? I did not understand. For how much did he buy it? Points, you call it purchase, but this is called intermediate purchase. What do you call it? What do you call it? So see, son, this value added method is value added method. So we find gross value added at market price at this is equal to value of output. Value of output minus intermediate purchase minus intermediate purchase. Now your value of output. Take care of it, son. Value of output. Now you know intermediate purchases. First understand this value of output which we can sell. What does value of output mean? Share. What does value of output mean? Try to understand. Now I will bring this value of output here. This means equal share. What does it mean? Equal. Try to understand.
Sales plus addition to stock plus sale to self means self-consumption. It is very easy. Please trust me. Okay? I said, save plus addition to stock plus self-consumption means we have 100 things. 100 things we have, 20 we sold to ourselves. It means take, leave self-consumption, is it clear? Now, the point is, this addition to stock. This addition to stock, what is it, son? Addition to stock, this is nothing, son, it is closing stock minus opening stock. What? Closing stock minus, or, sometimes its name will be change in stock. Try to understand. I am telling you what is the value of output equal to? Sale plus addition to stock plus self-consumption. Okay? That addition to stock means closing stock minus opening stock. What, son? Closing stock minus opening stock. Is it clear? Okay, self-consumption, it's very easy. Okay now sir, now tell me what is this sale, son? Sale. There are two types of sale, son. What is it, son? There are two types of sale. Sale is either within the country or outside the country. This within the country, son. This within the country? What, son? I said, this within the country, you call that domestic sale? What do you call it? Didn't understand? What do you call it? Or this outside country, if you sell to another country, what do you call it? Export? What do you say? Try to understand what I am telling you, son. I said, what is sales equal to? Sales is equal to domestic sales plus exports. And domestic sales, which we can sell within the country, we will either sell this or we will sell that. First, sales to households, what? Either we will sell to our family members, or we will sell to firms, or send it to the government. It seemed tough. Try to understand what I told you, son. Tell me the value of output first. Sales plus addition to stock plus self-consumption. This is easy. Addition to stock, closing stock minus opening stock. Easy, don't find it tough. Now the point is sales equal to what? Sales is equal to what? Domestic sales and domestic sales and domestic sales are equal to what? Sales to households, sales to firms, sales to the government. But remember, son, take care, son, I am telling you. Look at me, son. Look at me. You must have mentioned sales in the question and you must have mentioned this. You don't want to take this. What do you want to take directly? Understand my point. Sales, domestic sales and export have been mentioned in the question. What have you been given? If you have mentioned all three things, this, you don't want to do anything with them. These are its parts, right? So you have to consider sales. You have to consider sales. I will tell you this point in the question itself. Come on. Tell me what is the value of output, right? It is equal to share plus addition to stock plus self-consumption plus self-consumption. Now the sales can be of two types. Domestic sales will be there, and did you understand? Don't find it difficult. Don't find it difficult. You can sell domestic sales to three. You can sell to households. You can sell to firms and to the government. Is it clear? Did you understand this? Sales are of two types. Domestic sale and domestic sale to firms, households or to the government. Now, like this, son, I will make you like this here. This GVAP which we had said earlier, gross value at market price. Okay? What is it equal to? Value of output. Value of output minus intermediate purchase.
Okay? Now this intermediate purchase, right? That means there are two types of purchases. There are two types of purchases. Either within the country or yes, either we will buy within the country. It is difficult. Is it clear? Intermediate purchase, or what will you call it? Domestic purchase, or bringing goods from another country, you call that imports. Yes, its other name is purchase of raw material. Keep this in mind, purchase of raw material. Now this domestic purchase is to the firm and to the government. What is it, son? Firms, or you can buy from the government. It is difficult to understand, son. If this has been given to you, then did you understand the need to consider it? I will explain it to you. Tell me, now GV is this, isn't it? Gross value added at market price. Gross value added at this will be equal to what is the value of output? Value of output minus intermediate purchase. Value of output is equal to what? Save plus addition to stock plus sale self-consumption minus intermediate purchase. Did you understand minus? So purchases are of two types, domestic purchase and import. Domestic purchase of household is this, isn't it? You can do this from firms and you can do it from the government. Did you understand? So now, son, understand the point that how will we ask the question? Look, son, do you know the sale? Just tell me, what is the sale equal to? Sale, I just told you, there are two types of sale. Domestic sale and export. Domestic sale was about three things, wasn't it? Okay, household holder. Very good. So question number 1, find sales. Find sales, there is domestic sale and there is export, will come. Look, son, what will we write in the solution? Yes, your sale, what is your sale equal to? Domestic sale is simply domestic sale plus export. The meaning is, domestic save. So that is 100 plus 50, so what is the answer? 150 is easy. This is not our question. I am teaching you in parts, Okay, sale was the first one, so did you understand? Okay, next question. Find sales. You have sale to firm, sale to household, sale to government will come. It will be tough, sir. There is no export. There is no export, so we will not take it. Simple. Just tell me in the solution, what is sale equal to? Right? Yes, what is it equal to? Sale to firm, sale to household, sale to government. Is it clear? Don't find it tough. We will write it like this. Sale to firm plus household plus governments. Tell me, son. 100 plus 200 plus 300, so, how much did it come, son? This? Is it clear? Will you copy it? Will you take a photo of it? Don't find it difficult. Did you understand? So, I am just reminding you that there are two types of sales. Please tell me what types are there. There is domestic sale and there is export. Is it clear? Here domestic was also given, export was also given. Sir, this is an easy question. We don't have to find this. I know you don't have to find this. I am coming to the one you have to find. Okay, so son, I don't have so much time. Next one question says find sales. Sale to firm X, sale to firm Y and expose. Is it clear? So sale to firm. Did you understand? Very good. It seems difficult. Did you understand? Sir, why are you showing this? Trust me, son. Sale to firm X, sale to firm Y plus exports.
Okay. What is X? What is Y? And what is the export? 100, so your answer is 400. It seemed tough. Okay, next question. You have domestic share, you have export, and you have savings. Tell me the answer. And your sale is 1500. Sale is given. You don't have to consider this, and this seemed tough because what is sale? No. Tell me, sale is of two things, one is domestic sale and the other is export. You should not consider this. You should not consider this when this is given. That is why I showed you this, because it will come in the question. You will ask me, then why did you not consider this? Is it clear? Now what is given there, son? What is given there? Sale. If sale is given, then you need to see its children. So sales are of two types, right? Domestic sales and exports. So there is a need to construct domestic sales. There is no question of exports. Now, sale is given. Did you understand why I showed this? Nothing like this, my dear. This question does not arise. Okay, I am making it from the basics so that you do not have any confusion. Why did I not take this? Why did I take it? Right? We have sales is on. Sale is, did you understand the point of sale? Find intermediate consumption and purchases. Now purchases of two types. Domestic purchases and imports. Understood? Okay, simple. There is intermediate consumption, you have to find it out, right? Now I will teach you this. Tell me, son, is it of two types? You have domestic purchases. In this also the same rule will be applicable which we read there. Domestic purchases plus imports, you have 100 and you have 50, your answer is 150, don't find it tough, son. Okay, now find intermediate consumption or purchase. What is the other name of intermediate consumption? Purchase of raw material, remember this. Okay, purchase from firm. Did you understand? So what is intermediate consumption equal to, son? Purchase from plus imports. Yes, if it had been given together, if it was purchase, then we would have taken purchase, not this, right? So, you have 200 and you have 50, that is 250, don't find it tough. Okay? Is it clear? Whose topic is this? This is intermediate consumption. Okay? Now find intermediate consumption and purchase. Okay? Now do tell me, what is given? Yes, no? This is not old. This is purchase from firm A. Now, the question is, find intermediate consumption and purchase. What is given? Purchase of raw material. What is the other name of intermediate consumption? Purchase of raw material. You need not deal with it, there is no need to talk about it. So it is given in the solution, right? You understood, because when I will ask you the question, I will consider this, I will not consider that. You ask me, why did you not consider this? So intermediate consumption is equal to purchase of raw material. That is 100 and 100 is your tough choice. Did you understand? Why did I not consider imports? Because intermediate consumption is of two types. Domestic purchase and imports. Yes, what is the other name of intermediate consumption? Purchase of raw material. Okay, find intermediate consumption. Look, domestic purchases have been given, imports have also been given. Which is your intermediate consumption? What will it be equal to?
Domestic plus imports, that is 100 plus 50, that is 150, it seemed difficult. How are you able to understand? Okay, now the last one. The question says find intermediate consumption or purchase. Domestic purchases have been given, imports have been given, what will you take as intermediate consumption? What is the answer? Did you understand? Now ask the question. Did you understand? Now your answer is what you have to find out is GVAP. What do you have to find out? Market price, that is equal to value of output. Value of output is required sales plus change in stock plus self-consumption minus intermediate consumption. This is it, isn't it? You also got sales. Change in stock is easy. Closing stock minus opening stock. You must have given self-consumption. I taught you all the cases of intermediate consumption. Now your question is like this. Simple. Yes. First C. Sale to firm export. Sale to firm B is out. Sale did not understand. It is the sale of firm A and it is export, and sale to firm B is it clear. Closing minus opening, that will become your change in stock. Import purchase from firm A and domestic purchase. I found it tough. I did not understand. Look, how will you do the question? What do we have to find out? We have to find out son GGV, okay? So we will write it like this. Sale plus change in stock, change in plus sales consumption minus intermediate consumption. Found it tough? Understood? So what will we find out first? Sale. What will we find out? So here I will find out for you. Sale. Found it tough? This is not necessary. So we will find out the sale. Tell me here, son, what is the sale? Sale to firm A, export, and sale to firm B. Tell me, son, what is your sale? 1000 plus 100 plus 80. Found it tough. So let me show you properly. This sale to firm A, and what else came? Export sale to firm D. Tell me 100 rupees 80, and what else came? $1,180. So here you will write 1180. Now you have closing change in stock, meaning not closing, but closing margin. So 200 to 150 seem tough, son? Did you understand this point? 200 to 150, is it clear, sir? Do we have self-consumption? No. Minus, what do we have to find out? Intermediate consumption. What do we have to find out? First tell me. Tough means intermediate, tell me. What are intermediate consumption? You have imports, purchases from firm A, and what do you have? Domestic purchases. Is it clear? Tell me. Number 1 minute. Understand the point, what I told you, the point of intermediate consumption. Intermediate consumption, there were 2 types of intermediate consumption. One was domestic and the other was import. Try to understand. What was first? Domestic. Domestic was of 2 types. Domestic was of 2 types. One was of firm and the other was of government. If domestic is given, then do not take this.
So this firm that you are taking, purchase from firm A, do not take this. Did you understand? It seemed tough. Remember the formula pattern. Understand again, intermediate consumption is of two types. What is it? One is domestic and what is it? Import. What is domestic? Firm. And if this is given, why do you need to take these two? Yes, if this is given, then there is no need to take all these. So purchase from firm will not come in domestic purchase. Simple will come, son. Intermediate consumption is of two types. Domestic and yes. Tell me son, what is your import? Import is 100 rupees and your domestic purchase is 200. Did you understand? Did you understand where did you commit the mistake? Okay, you would have shown it directly, don't understand this, so you have to subtract 300. Is it clear? So this will become 1180 plus 50 minus 1180 plus 50 minus do 300 plus, minus, did you understand? So 200 to 50 is left, right 50, right? That plus 50 plus 1180 plus 50 to 300 this will become 1230 to 300 your answer is 930 but did you understand the point? We did not take this, we did not take this. What is the reason, son? Copy that exam correctly. Is it clear? Okay, pick only one. Do it later. Don't find it tough among you. Did you understand the point? Why did we not take this? Okay, with this formula, okay, next question. Find GVAMP. You know GV solution? GVAMP, gross value added at market price. In simple words, it's gross domestic product at market price. Gross domestic product, yes, GDP at MP, okay? So what is it equal to? Sales plus self-consumption minus intermediate consumption. I have to write it completely, okay? Now listen to me. Look, first of all if I tell you the formula, this sale is of two types. Domestic sale and if sale is given then its child is sale given, right? So did you understand export? Question mark. Did you understand? Okay, how much is the sale, son? Rupee 1000. Change in stock, addition to stock, or change in stock is the same thing. How much is it? 20 rupees. And you have self-consumption how much? 50 okay. After this I said that intermediate consumption is of two things. One is domestic and what is the other? If this is given, then the need to construct this constructor is given from there, right? Did you understand? So that was necessary, what I taught earlier. Okay. So, intermediate consumption 700 so, 1070 to 700 so, 370 is your answer. Did you find it tough? So, what does it depend on, son? The chart that I made is important. The chart that I made is important, son. Sir, it seemed tough. Numerical will also come. Question will come, right? Okay. Total there are 15 questions that we have to do. Okay? Okay. Closing minus opening you have change in stock. Okay? Closing minus opening that is change in stock. So first of all gross value MP save is it clear save plus self-consumption minus intermediate consumption. Is it clear? Did you find it tough? Okay now let's find out first of all okay so if we look at the sales, we will look at the sales so I had said that there are two types of sales, domestic sale, I had said. Domestic sale and export. What is the sale? The complete sale, not just the sale. So what all have I given you for the sales?
one I have given you. Sale to XY. What is sale to X? What is 100 and what is Y? What else have I given? Exports. Did you understand? Will it come? So how much are the exports, son? 500, so your sale is 650. Don't find it tough. Did you understand? So take care, son. You have taken this, you have taken this, and you have taken this. You are taking it in some questions, not in others. That's it, okay. If you want to see those things, then did 650 come? Did you come? Plus change in stock, that is 100 to 80. Now you have self-consumption. You have taken this as well. You have taken this as well. Okay. Self-consumption is 50. Now you have intermediate consumption. Try to understand intermediate consumption. What is the other name of intermediate consumption? Yes, it is of two types, domestic and imports. Tell me what is given. Purchase of raw material is given here. If purchase of raw material is given, then there is no need to write imports. So intermediate consumption is given directly. That is 200 rupees. I found it tough. So you have 650 plus 20 plus 50 to 200. Did you understand? This is 720 to 200. This is 520. Did you find it tough? Is it easy? Did you understand the first concept? What is the concept, son? Did you understand that or not? Is it clear? So purchase of raw material is given. Purchase of raw material is given. So, you don't have to consider imports. You don't need to consider imports. Okay, so, this is the only pattern in it. There is nothing else. You have a question, right? Okay, now just like the same question is there, right? Did you understand the pattern? Let me just show you a little gross value added at market price. Sale plus change in stock plus self-consumption minus intermediate consumption. Okay, first of all we will find out the sales. Sale to firm A. First of all, there are two types of sales, domestic and export. Is it clear? It is domestic, right? We sent it to firm A, so it was 100 rupees. And what is export? 200. How much is it, son? This seemed tough, so you got 300. This change in stock, closing minus opening. Closing minus opening. 180 to 60 self 1 unit. I took this, I took this, I took this, I took this. You have self-consumption. Okay. Now intermediate consumption is of two types. One is domestic and the other is imports. Is it clear? So how much is domestic? You got purchase from firm A. What is domestic, okay? It was tough. We have purchased from firm A, so firm A, we assume, is within the country. Right? So this is 80 and this is 100. So how much is it? 180. How much is it? So 180,300 plus 120 plus how much did this come? Answer. Tell me how much did it come? 740 came in total. I did not do anything wrong. Then at my place, 9 shift at minus 180, then the video gets spoiled. Nothing else. 9 shift at minus 180,740, was it tough? No, it was tough. Tell me the truth, did you understand or not? It is easy. Any question? Any question? Last 2 questions, son, okay, right? I mean, we have already cleared the confusion, okay? Now, GVAMP cross value that is equal sale stock minus intermediate consumption at stock of sale, okay?
Now, how many types of sales are there? 2 types. Okay, now listen to me. Intermediate purchase is given. Domestic is over. Did you understand domestic? Domestic will not come because intermediate purchase is of 2 types, domestic and import. It seemed tough. So how much is the intermediate purchase? 90. Is it clear? Now you have to find out sales. Sale to firm and export. It is together, right? Did you understand or not? So sales are of 2 types. One is domestic and what is it, son? Export. Your domestic sale is 500 and export is your rupee 1000. So this is equal to 100 rupees. It seemed tough. Now you have closing change in stock. Closing minus opening 200 to 180 directly 20 understood. You can write 200 minus like this. Okay, plus self-consumption. You have self-consumption 100. Take care of these small things. Okay, 162090, 162090, that is 15330. Is it clear? Don't find it tough. It is easy. It is easy, son. The question is because it is the last question and listen to me, it is very easy. Don't take tension. I am here, look, you have intermediate consumption. And you have value of output. Okay? Look, that means these are 3 sectors. Primary, secondary, tertiary. Its value of output is given and its intermediate consumption is given. Understood? So we have 3 sectors. Simple, son. Tell me find GVA, very good. The GVAM, isn't it? It is equal to value of output, isn't it, brother? Sales plus closing stock, sales plus changing stock plus self-consumption. So, value of output minus intermediate consumption. Okay, how many factors do we have? 3. We have primary, secondary, okay? What is the output of primary? Tell me. The output of primary is 400, secondary is 1200, and tertiary is 1500. Now intermediate consumption of primary is 400, okay? What are the secondary? And its result is 0. $1,200 to $325,875, and its result is 1,000. Is it clear? Any questions with this topic? Did you understand? So, tomorrow, son, remember, what do we have to do tomorrow? This GVAAMP, we have to convert it into GNFC. Nothing, it means MP has to be converted into FC. There is tax in the market. What happens in the market? That has to be done. You have to convert MP into A. So, we will also do depreciation. Minus, is it clear? He will do the rest tomorrow. I hope you understood. Okay, beta G, what we had read in the previous video, we had calculated GVAMP. If you remember, we had calculated GVAMP. Now this GVAMP, which is GVAMP, you call it gross domestic product at market price. Did you understand it? Okay. So gross value added at market price. Now the question will ask you to calculate NVFC. So this is net domestic product at factor cost and you can calculate it from national income. And you can calculate it from national income. If you remember. Okay? So understand. If you have given, if it must have been given in your question,
you have to calculate NDPFC. What do you have to calculate NDP? FC, and you must have given gross domestic product at market price. From gross you have to go to net. Try to understand, then you have to minus the depreciation. What do you have to do? Minus. Is it clear? Okay. Don't find it difficult. Did you understand? Or nap or like this? Here 1 minute. Then from domestic you have to go to national. From domestic you have to go. So NFIA, net factor income from abroad, and market price will have to be used to go to factor cost. So here taxes are minus. You have to minus. Indirect tax. What to do? Indirect tax. Understand again what I'm telling you. Okay? Try to understand beta G, what I am telling you, how to calculate national income. Till now we have calculated this. Is it clear? You know it is value of output minus intermediate consumption, which I have already taught you. Okay? Now what is today? You have to subtract depreciation. You have to subtract indirect cost. If NFIA will be there, what to do? Plus, what to do? Did you understand? If anything is given from this, the question will ask you to calculate national income. First you will take this out and then convert it into that thing. Okay? But keep one thing in mind, that tax is of two types. One is direct tax and the other is indirect. What? In your question, direct tax must have been given. What would have been given? Do not take that. Sir, what is the difference between direct and indirect tax? I will tell you a little. I have to teach this in the next unit. Where whatever a person has to pay, he is paying it. Ezair's income is 10 lakhs. Ezair is paying the tax. So you call it direct tax. You call it. Now the second one is indirect. Amir had to pay it to Ezair. For example, the producer had to pay the tax. He took it from the wholesaler. He took it from the retailer. He took it from the consumer. You call it indirect tax. What do you call it? Tax is of two types. The first one is direct and the second one is indirect. And the list of indirect taxes is sales tax. If it is there, then it is your indirect. Remember this, okay? Understood? Okay? If it is from here, tax, direct tax, corporate tax, if it is written, what will be written? What will be written? Corporate tax. Or will it be written? Try to understand, which is on any income. For example, a company has to pay tax. This has to be paid by the company only. You call it one. You found it difficult. This is a different topic. It belongs to another unit. When I will teach you the budget, I will tell you there. What is tax? It is of two types, direct and indirect. Its definition is where the impact and incidence is on the same person. Now this topic will deviate a little. Simply remember that in indirect tax you include sales tax. For example, Ezair has to pay tax. She pays the tax. You call it indirect. You call it in which the burden is shifted. You call it indirect, in which the burden is not shifted. You call it direct. Didn't understand? It has to be paid to Ezair. Ezair is paying it. The burden has not shifted. It has to be paid to Ezair. She is paying the tax. So the burden has shifted. You call it indirect tax. You call it. So look, beta G, we have a question. What is the question saying? You find out NVFC. So I said, whenever you come across this in a question, the first thing you will find out beta G is VM, gross value added at market price. Do you remember that? What is it equal to? Value of outputs minus intermediate consumption. Value of outputs is equal to sales. Do you remember? Sales plus change in stock plus self-consumption minus indirect purchases or indirect consumption. Yes, so always intermediate consumption minus what? You used to do this, right? Have you read it yet? If not, then catch the video beta G. Now you have sales. Sales is given how much it is 75,000, you don't have change in stock.
You don't have self-consumption. Is it clear? Sir, there is consumption of fixed capital. It has another name, depreciation. If you remember. Okay? Okay. Minus intermediate consumption is purchase of raw material. So, what is this? 75 to 35, this is 45,000. What is this? What is this? 45,000. Now this GVAMP is. What you have to find out? You have to find out NVAFC. So what is N versus FC given? GVMG has to be made N minus depreciation. VA is same, VA is same. MP has to be made FC. What tax is there in MP Sun G? If we want to make this, then we will minus indirect tax. Is it clear how much is given? 45,000 and your depreciation is Sun G. Consumption of fixed capital 2,500 and your indirect tax is Sun G 7,500 and your answer is 35,000. Is it clear? So you will pick up the photo, okay? And we will do the next question. Did you understand earlier, son? Don't get confused today. Indirect and indirect tax. I will tell you in the question itself which is direct tax, code indirect tax, and you will take this for it. Okay? We will make a list. Okay? Okay? We have next question. This was 60, because actually we have to study the theory, which you know the theory. But for studying the theory, when I say we minus the depreciation, we minus the indirect tax. If there is NFIA, then we plus it. Did you understand? Okay. It is saying find GVMP and NVF. What to find out? GVM. It was tough. So tell me GVAAMP. So you know this is sale plus change in stock plus self-consumption and minus intermediate consumption, or what you call purchase. Is it clear? Now let's talk about sale. Now sale is given. Try to understand. Sale is given 1,500. We will not consider this. We will not consider this. Because sale has two parts. Remember? One is domestic and what is it? Export. If this is given, you don't have to consider its children. Is it clear? Don't consider this. Sale is 1,500. Found it tough? Okay, now where is the change in stock? Son, change in stock means closing minus opening, so 501040. Is it clear? I have taken this as well. I have taken this as well. Don't find it tough. Now, you have purchases. Indirect consumption is of two types. This indirect consumption is of two types. One is domestic purchase and what is the other? Import. If this is not given, these two have to be taken. Is it clear? Purchase from firm A is how much is 200 and how much is import? 90. So this is indirect consumption. How much is it? 290. So don't worry, I am teaching you fast. First, did you understand this? And you don't have self-consumption. This is 154029015, so 1540 to 290, that equals 1250. So what did you get, son? GVAM. I took this and this too. Okay, now what do you want to make of GVAM? NVAFC. Now tell me, what do you want to do in this? GVAM. Look, we will make G. We will make N minus the depreciation. We will make MP. FC will minus the indirect tax. So you have 1250 and your depreciation is 100 and your indirect tax is 20, 1250, 1250, 120, 115020. That is 1130 and that is your answer. It is easy. Take this out, add the depreciation and indirect tax in it, minus yes. If there is NFIA,
what do you want to do? Just add, nothing else. It is easy, isn't it? Okay? Don't find it tough, son. Okay, one more point. Now calculate NBFC. Now listen to me. Corporate tax is direct tax. You don't have to consider this. Don't find it tough. Try to understand. Yes, you have sales tax. This is indirect tax. This is consumption of fixed capital. This is depreciation. Is it clear? This minus this, that is change in stock. Okay? Sale is given. Purchase of raw material is given. Don't find it tough. Okay? Do tell me. The question is asking to find out NBFC. We will find out NBFC later. What will we find out first? GVAMP is equal to what? Sale. Now listen to me, beta G. I have voted here, there is no need to write self-consumption. So, did you understand minus intermediate consumption? Don't find it tough. Now the sale is given. Sale is 540 plus change in stock. You know, change in stock, closing minus opening, 102010. Minus indirect consumption. That is 140, so 540 to 150, 540,152 equals 5 asterisk 94990, but this is GVA. MGVA, is it clear? What we have to find out NVAFC is equal to this. GVAMP minus depreciation minus indirect tax, is it clear? GVAMP is 490 and your depreciation is 5 and your indirect tax, what is your indirect tax? Sales tax. What is your indirect tax? Sales tax. Just tell me, what is your sales tax? Your indirect tax is 25. Is it clear? 540 to 150, how much is coming? 390 is coming probably. It is coming, right? The 25th of May 390, so that is 360. Don't find it tough, is it easy? Any question? So, in which question will it be? Sales tax to you, okay? Sales tax is an indirect tax, okay? Don't find it tough. Okay, now, let's talk about another question. We will complete the numerical. Look, if the question asks, the question will ask, what are the steps followed in calculating national income? In calculating national income. First of all, son, remember, what do we find out? Value of output. What do we find out? Okay, that is equal sales plus change in stock plus self-consumption. We minus intermediate consumption. That is called value addition and domestic income. Did you understand? That is what we do. Then we minus depreciation. We minus indirect tax. We get national income. This is what we get. Okay, now this is what the question is saying. The question is saying, GVAMC NVAFC no, whatever tax there is, do not take that, nor take this. Is it clear? Do not even take subsidy. Do not understand why? Why, what do we have to do? What do we have to find out? Please tell me GVAMP. GVAMP is there. It is not saying this. What is GVAMP equal to? And even do not take depreciation. Sale plus change in stock. You call this change as self-consumption? No. Is it self-consumption? No. Minus intermediate consumption. And what is sale? Son, sale is 700. Sale is 700 means change in stock. What is the stock change? 20 to 10, that is 10 minus intermediate consumption. That is 400, so 700 plus 10 to 400, 710,400, that is 310. We don't have to calculate NVFC. So did you understand GVAMP? Did you understand? It did not say that you calculate income, so you do not have to minus. Okay? Is it clear? So far so good? Next one. What question? GVAMP. If GVAMP from question then national income, dare you, neither depreciation will be minus,
nor indirect tax will be minus. Is this import duty tax? No, it will be minus. Depreciation will not be minus. Sales tax will not be minus. Did you find corporate tax tough, sir? Why? Because we do not have to calculate national income. What is it telling us? Calculate GVAMP. So just tell me, son, GVAMP is equal to what? Sales plus change in stock. You don't have self-consumption. From this we will subtract indirect consumption. So what is your sale? 800 change in stock, son, from where it is given minus 40 and indirect consumption is purchase of a raw material. Only those who have read the first video will get it. So 800 40360 that is minus 400 that is 400 is your answer. Did you find it tough? It is easy. Is it easy, son? Okay. Now so we have calculated 21 NVF meaning national income. Okay? So now how do you try to understand? Do you know what net indirect tax is equal to? Indirect tax minus subsidy. You forgot, right? I will remind you. You forgot, right? Or did you not understand? So the question says that you should calculate NVFC. So before calculating NVFC, what will we calculate? GVAMP, that's equal to sales plus change in stock. Self-consumption is there in this. It is not self-consumption, we will minus indirect consumption. Try to understand, sale is given. If sale is given, you don't have to reduce domestic sale exports. Yes, I have read this point. You very well. 500 plus change in stock. So, closing is 40 and opening is 50405010 minus indirect consumption. That is this. So 500 to 210, 500 to 210, that is equals 290, so 290 equals GVAMP tough laga. Tough laga. Now what do we have to find out? NVFC equals GVAM minus depreciation minus net indirect tax. Is it clear? Tough laga, tough laga. If NFI is given, then we will add it. What will we add in these questions? I did not keep NFI so that it does not become big. Okay, now do tell me GVM is given. How much is it? $290 consumption of fixed capital, that is depreciation 60 now minus net indirect tax is equal to indirect tax minus subsidy. Indirect tax is 30. 30 to 5, so 2906025. Did you understand? Found it tough? Is it clear? So 290 to 85, that is 205, that is your answer. That's your answer. Are you getting faster, son? Are you understanding the concept? Are you understanding the concept? Nothing, son. Today we are minus two things. What are we doing? Minus depreciation and net indirect tax. What are we doing? Minus depreciation and net indirect tax. Minus, is it clear? Okay, yes. Next one. Now understand the point. I will explain it a little bit. Okay? It says find out value added by firm X for X. What to take? Keep in mind. This X, you have to take the sale of X and the purchase of X. Okay? Find out value added. Look here, son. Sale is by firm Y to X. To whom did Y send it? So X made the purchase. How much did X make? Did you find this? Sale by firm X to household. How much did X sell? 500 purchase by firm Z. Purchase by firm Z from firm X. Try to understand who made the purchase. Z. From whom did he purchase? From X. So X's sale is this. Did you understand how much? 300. I didn't understand. Look here, purchase by firm Z from whom? So X made the sale. Is it clear? Now try to understand, son. What is the closing stock? 75 of X seemed tough.
Look, I took 500. I took this as well. I took this as well. Now look at the closing of X. Look at the opening of X. Is it clear? Now tell me, this becomes its total sale. This becomes purchase and this becomes change in stock. Change in stock closing minus opening 75 to 25, that is 50. It seemed tough, I don't understand it. Try to understand it again. I only want to see X. What is X doing? Is X selling or X purchasing? So tell me the value added. You call that GVAMP that is equal to sales plus change in stock minus indirect consumption minus indirect consumption. What is sales? $800 and you take change in stock 50 to 400, so 850 to 400 and your answer is 450. It is easy. Don't think it is tough. Don't think it is tough. Is it clear? Next one. Calculate value added by firm X and firm Y. First, we will find out that of X. What will we find out? Of X. It says try to understand? Yes. Closing stock of X and opening stock of X. Is it clear? Look here. We will take closing stock of X and opening stock of X, change in stock 20 to 5, that is 15, and if you see for Y, closing 15, 10 means 5. Don't find it tough. Did you understand? Very good. So I have taken this, I have taken this, I have taken this, I have taken this. Was there any question? Was there any question? Was it done? Sale is by firm X. See, it is saying from there. How much has been given for sale X? Did you understand? Now understand the point. Understand the point. Purchase by firm X, purchase by firm. Purchase by firm X from firm. First, whose purchase is this? How much? How much is it? How much is 100? 100, is it clear? Now try to understand. Now tell me, this purchase by firm X came like this? Now sale by firm Y, try to understand. Understand the point. Sale is by firm Y. What has been given? Sale by firm Y, leave Y first. Purchase by firm Y from firm X, what is this about X? Who has made the purchase? From whom has Y made the purchase? It is the sale of X. We will not consider it because the sale has been given. Did you understand? It seemed tough. It seemed tough, is it clear? Now after this, import of raw material from firm. Import of raw material. It is import, right? Purchase import of raw material firm X, how much has he imported? 50, it seemed tough. This seemed tough. Look, it has been purchased by X. It has been purchased, is it clear? It has been purchased by X. From whom? From firm Y, so it is domestic purchase. Some import will come. Now tell me once again, sale 300 is okay. 300 change in stock 15, this 100, this import this much. Now tell me, in the solution GVAMP sale plus change in stock minus indirect consumption intermediate consumption sale is given, sir. But there is a question, sir. You did not take this sale of X? Why did you not take it? Because sale is given, right? Sale is given. I have shown such questions. Change in stock is 15, indirect consumption, son. How much is it? Purchase is 100 and this is 5100 plus 50, that is 150, 315 to 150, that equals 165. Whose is this? Of X. Did you understand? Don't find it tough. Now we will find it like this, son. GBMP whose? Of Y knew that is equal to save plus change in stock minus intermediate consumption. As if X does not exist. As if X does not exist. Did you find it tough? Did you understand? Now what will we talk about? Of Y.
So you took this for Y and this for Y. You do not have to consider any information till here. This is given for X. Do not consider it. Purchase by firm X from firm Y, so this is sale, right? What is this for Y? Sale, but tell me, here it is given directly, right? Sale by firm Y 250, so won't we consider this? We will consider 250 directly, then understand. Purchase by firm X from firm Y, so Y has done the sale. To whom has he done the sale? To X. Okay, this is the sale, but it is given directly. Sale by firm Y, how much? 250 in this. Domestic sale will also be there. We have got export also. Don't think it is a task. So this is 250. What is the sale? 250. Now tell me, son. Okay, if direct sale is given, what is it? So sale is of two types. Domestic sale, don't take this. X, that also won't come. Did you understand? Now you have purchase by from Y from firm X, right? Purchase for Y, how much is it? 100 rupees. It is domestic purchase, domestic and import of raw material. This is not it. Whose is this? Of X. Whose do we have to see? Of Y. What do you want to see? Of Y. Don't find it tough. Don't find it tough. Now tell me. That is equal to sales plus change in stock minus intermediate consumption. Okay? Do you tell me? Sales is 250 plus change in stock, that is 5 to 100, 255 to 100. Son says what came? 155. There are very less chances of these questions coming, but they can come. You will get confidence. Okay? I will keep this for you myself, that I will show you. Look, nothing, son. This rent story, right? Don't take it. Is it clear? Opening stock of firm B, closing stock of firm B, change in stock is 5. Understood? Is it clear? Purchase by firm B. Look, sale by firm B is given. What is this of firm B? Sale. Is it clear? So if sale is given, sale. Then you don't want to take this sale. Come on, show me. Yes, yes, but this is the same for A, right? If we give a here, who will we take first? Who will we take first? Who will we take a first? Okay, listen, son. First of all, we will talk about A. What will we talk about first? A's purchase from firm B is the sale. But which sale is this? Domestic. It seemed tough. Is it clear? Please tell me. How much has A sold? 40. Is it clear? Now tell me. Now tell me. And this will be the purchase of whom? Of B, but domestic. Is it clear? Okay. After this, import by firm B, import. Okay, this is a purchase. Yes. Who imported? Firm B. How much? 10 rupees. Don't find it tough. Is it clear? Okay, cut rent paid by firm B. We are not doing it from expenditure. Opening stock and closing stock. This is easy. Is it clear? Opening and closing, this is easy. Now tell me, son, one more point is purchased by firm A from firm B. This is the sale of B20 purchased by firm A. This is the purchase of A. How much? 20. It is domestic purchase. It is domestic purchase. Now we have change in stock. Change in stock. Just tell me, what is its change in stock? 201010. Did you understand? Now tell me, what is its change in stock? Where is it? 15 minus, but not minus half 5. Is it clear? Don't take it tough. Are you able to understand? Any other sale is given. Sale by firm B, sale by firm B. This total sale is given. 1 minute. How much is given, son? 80. Now tell me, should we consider its children?
Who are its children? Domestic sale and export. Now check, son. Is it domestic sale? Yes, sir. 20. Do not consider this. Don't take it tough, listen to me. Did you understand? Did you understand? Okay, there is no export. Just tell me, son. What is VVAAMP equal to? Sale plus change in stock minus intermediate consumption. Let us first see there is nothing here about sale of a domestic is domestic sale. Isn't it? How much is it? 40. What is change in stock? 10 intermediate consumption, that is 20, that is 50 to 20, that is equal to 30, and that is your answer. Okay, now we will take B in the same way. Whose will we take? B. Whose will we take? B. Just tell me. B's. This is its child. I will not take. Okay, what is the share? 80. Is it clear? Yes. Change in stock is 5 minus intermediate consumption. Intermediate consumption. Intermediate consumption, domestic purchases and imports. What is domestic? What is 40 and 10? 50. 85 to 50, that is 35, that is your answer. Easy, son, the question is tough. Now today's topic is, what is this gross value added method? You have to study the theory of gross value added method, right? Yes, the theory was completed in 2 lectures, right? Did you understand? Now tell me, what is value added method? Okay, what is value added method? First of all, tell me, son, in value added method, we have value added method, right? Son, you must have seen the end question in the previous video. We calculate the income of these 3 sectors: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Okay? So first of all, it is a method of major national income by finding out the value added by primary, secondary, and tertiary. Whose value do we find out? We find out the primary of the 3 sectors, we find out the secondary as well, and we find out the tertiary as well. Okay? What is value addition? Difference between value of output, that is sales plus closing stock plus self-consumption minus intermediate. So value addition is the difference between value of output and intermediate consumption. Don't be tough, and you can calculate GVAMP here. Equal to what? Sales plus change in stock self-consumption minus intermediate. This has to be written, son. Yes, minus intermediate will come. You will come to right. So don't come without numerical. This is fine. Okay, now national income. This is factor cost. Remember what all you will minus in it. I have not shown NFI. You have to reach NFI. National income, son, in national income you will calculate GVAMP, this becomes gross domestic product. What does it become? Is it clear? Be tough. Its other name is gross domestic product. Okay? KGVAMP, please tell me what to minus. We minus depreciation, minus indirect tax, plus NFIA. Is it clear? So, you will write this, but there it will be written. What are the steps? Son? Do you know the steps that you did in the steps? So the first step, steps for finding national income, value added method. Look, first step, identify all production units. Primary, secondary, tertiary. Did you understand the first step? What will we identify first? Primary. How much is primary? How much is secondary? And see, we found it, right? They will find its value separately. Second, calculate gross value added for each sector. Gross value added means find out GVAMP. Each one, sir. Each one means what is it equal to? Value of output minus intermediate consumption. Okay? Don't find it tough. Find GVMP and GDPMP. It is the same, right? I told you just now.
Find GVAMP and GDPMP. Is it clear, sir? What is written here? Add up the GVA of all three sectors. Find this also, find this also, find this also. Okay, so add all three, that is. How much is it? It is 3. But still we get GVAMP. What did we minus today? And indirect tax, and what did we add? NFIA. Convert GDP to national income, NAP at factor cost. Look, we added net factor income from abroad. What did we subtract? Depreciation. What did we subtract? Is it clear? So now you can write the formula on end, son. And on end you can write your national income. Your national income is GVAMP minus depreciation, indirect tax plus NFIA. Did you understand? Did you understand? Can you write? Wait, nah, we will complete the whole theory, right? I would have taught you only this much. If I had taught you only this much, one of your questions would have been completed, but you do not understand that. Because when we did this, I only added you to the theory. Find out the primary, the secondary and the tertiary as well. You found it. Is it clear? What kind of questions did we ask? First of all, we used to find out GVMP. GVMP is equal to what? Sales plus closing stock plus self-consumption minus intermediate consumption. We used to do it, didn't we? Is it clear? Now I said find out for each one, add them, then convert it into what? We converted it today, didn't we? What did we convert today? But precautions of value-added method means what all should not be taken. What all should be taken? What are the precautions? Do you understand? Like we did not take direct tax, that too is a precaution. Is it clear? I must not have written that. First, the value of sale and purchase of second-hand goods are not included as already taken when they were fresh. If there is sale of second-hand goods, we do not take that, sir. Why? Because we have already taken it when they were fresh. Remember this, it can come in MCQ. Can any question come? So did you remember the first point, son? We do not take second-hand goods in sale and purchase. Why don't we take it? We have already taken it. But remember, try to understand, son, you understand. I brought this second-hand goods. It won't be included in national income. I told you to sell it. What did I tell you? So I gave you a commission of 5,000. What did I give? Is this 5,000 second-hand? This is not second-hand. Yes. If you give commission for sending second-hand goods, you include that. Commission earned on sale and purchase of second-hand goods. Yes. Did you understand? Did you understand the logic? Look, we did not take the value of second-hand goods. However, if we give any commission in selling second-hand goods, we will take that. We will take that. This question comes because you know more theory, so put stress on this. Okay? Do 1 or 2 questions in numericals. Okay? Value of intermediate goods is indirect consumption, right? I see, right? Why don't we take that? Why don't we take that? The reason is, we would have already taken that. Okay? Value of intermediate good is not included as its value is already in final goods. Understand a little, tell me what is the first point. We don't take second-hand good. Yes, if commission is given on sale and purchase of second-hand good, we take that. Okay? Fourth one, change in stock is included. We take it, right? Okay? Change in stock is the difference between closing stock and very good. It is easy. Are you able to understand? Whatever numerical we have done, that is what we are saying, right? Okay? Goods produced for is included. Did you understand? The goods we produced, for whom? For ourselves. That is also included. Because what is GDP? How much have we produced in the country? Okay? These are the goods which are produced but not sold in the country. Okay? Production of service for self-consumption or domestic service is not, as we cannot value the service of kitchen gardening and housewife, remember monetary transaction? Because we cannot give value of it. We do not include this. The question comes that what are the precautions? What are the precautions in the last one? Beta G, the last one is the rent of this hall, right? Pay the rent of this hall. I'm not taking the rent because I have my own hall.
This is included because the tax on this is the rental value of every house, whether you give it on rent or not. Keep in mind how much rent can come for this house. We include this also. Do we include this also, sir? But we do not pay rent. Tax says every house has a rental value. Is it clear? Imputed rent and owner's house is included as all houses have rental value. No matter they are self-occupied, and self-occupied means they are for themselves or have given it on rent. Now how can this be an important question? What do you mean by value-added method? Okay. What are the processes? Okay. You will know the steps. You can write them yourself. Just add that identify all the three sectors: product producing, primary, secondary, tertiary. Yes, what we used to do. Step second, find GVMP, GVMB. It is the difference between value of output and intermediate consumption. Value of output is equal to what? Sales plus closing stock plus consumption. Self-consumption. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Actually, this is the topic of today, which is going on. Have you read it completely? Problems of double counting. What is the problem of double counting? Son, the numerical that we did, was that extra? What was it? Actually, this has to be read. To understand problems of birth, son, how to do double counting, listen, listen, listen. I gave them an example. Try to understand, son. Went to the jungle, right? I told you, right? I told you, right? To cut wood. This gave this wood to whom? To B. For how much did he sell it? He sold it for 500. Let's give the same example. For how much did he send it? For 500. Now listen to me. A sold it, whatever came from A, he got 500 for free, right? For how much, did you understand? B worked on this. B sold it for 900 rupees. For how much did he sell it? So, whatever B earned, 900 to 500, is it clear? Look, this 500 is 500, minus this 500 because it is already included. It's called intermediate consumption. Intermediate. Now listen to me. C sold it, son, to whom? To B for 2,000. For how much? So, 2,000 seemed tough? For how much did he buy 2,000? For 900. So how much did he earn from this? 1,100. So how do we ask the question? We do it like this. 500, 500, 900, 500, 400, 2,000, 900, 100. Yes, what is the value of end? It says that there should not be double counting. There are two ways for double counting. What is it? We did it like this. If you see its value, this also came out. Did 2,000 come out or not? The second says, how will you remove the problem of double counting? And the question said that you have two methods. Either you see, finally, for how much did you send it to him? For how much did you send it? Take it directly. Don't minus anything. Minus or you take the value added. 2,000 also came from here. 2,000 from this one. 2,000 from this one too. This will not lead to double counting. Double counting means counting the value of the same product more than once. This problem can be solved by either the final good approach method. Final good approach method means take the final price, or the other is value added, which we studied today. Okay, either take it that way. Is it clear? Don't find it tough. Final good approach. Now you have to write, see, in this method we consider only the money value of final goods and service. The money value of intermediate good is not final goods and those goods which are purchased for consumption, and this method of avoiding double counting is used, in which we have to read further. Try to understand value added method which we have read.
This is the best and perfect approach to avoid the problem of. In this method, national income is calculated by finding out the value added by primary, secondary and, come on, we just wrote, value addition is the difference between value of output and intermediate, is it clear? So let us conclude. Gross value added method, what we have read, try to understand. Gross value added, what did we find out, son? Remember, we used to find out the value of output. We used to find it like this, value of output value of and we minus find out intermediate consumption. What do we minus? Intermediate consumption. Is it clear? Value of output, which is most important, includes sales plus change in stock plus goods produced for self-consumption. There are two types of sales. One is domestic and what is the other? Export. Domestic includes sales to firms, households and the government. Is it clear? Try to understand, son. And the method I taught you, there are many chances of confusion in this numerical. But how did I teach you? I said that if this is given, then this needs to be taken. If this is given, then these two need to be taken. Is it clear? This was change in stock closing minus opening. Intermediate consumption. Intermediate consumption means purchase of raw material. This is also of two types. What is it? Domestic and import. Is it clear? And this is also of two types. Okay? So I made this for you people. Sale from domestic to export, firm, household, government purchase, import, domestic purchase, from firms or government, because family members cannot sell it, right? Not tough, it seemed tough, son. This was it. This was your gross value edit method, understand it, son. Learn its theoretical questions, do numericals 1 or 2, son. What numericals 1 or 2? Yes, if you get time, do all of it. See you in the next method, take care of yourself. Allah Hafiz. Okay, beta G, the topic is income method. To calculate national income by this method is income method. Okay? So keep in mind that I had already taught you that there are two types of income. Remember transfer income. If you remember that, then leave it, I will tell you about it later. There are two types of income. First one is factor income and second one is transfer income. If you remember here, we do not consider factor and transfer. How do we calculate national income in income method? Remember beta G. How do we calculate national income in income method? First of all, we calculate domestic income. What do we calculate? So there will be a procedure for that. Then we add NFIA to domestic income. Take care beta G. First calculate domestic income, that is NDPFC, net domestic product at factor cost. What? Net domestic product at factor cost. That is equal to three things. Cost of employees, operating surplus and mixed income of self-employed. I will give you a list of these three things and we will ask questions on these three things. Okay? Okay. First of all, what did I say? How do you calculate income in the income method? How do you calculate national income? What do you calculate first? Domestic income. What do you calculate? That we earn from within the country. That is what you call domestic income. What do you call it? Domestic income. It is equal to three things. What is the first one? COE, cost of employees, second operating surplus, third mixed income of self-employed, then now this is domestic income. We will add MFI, net factor income from abroad, to domestic income, and we will get our national income, son.
What will we get? National income. Is it clear? So there are 2 steps, but these 2 steps are very big. So, because we have these 3 things. Which 3 things? Co-operating surplus. And this must have been given. This and this must have been given. Okay, we have to find this. Okay, what will we find out first? Domestic income. Domestic income means net domestic product at factor cost. And what is the second thing to find out? Operating surplus. What is to be found out? Operating surplus. So the first thing we will look at is the cost of employees. What is it, son? Co-cost of employee. Look at cost of employee. Okay? That means the employee works. What does he get? He gets wages or salary in cash. Is it clear? Don't think it is tough. He gets bonus. What does he get? Okay. You must have heard that this much is deducted in his provident fund. This much is deducted in his provident fund. Have you heard that? Look, if his salary is 1,000 rupees, he gets only 900 rupees. Why? 100 rupees is deducted for him in the provident fund. We call it GP fund. Okay? So this money is deducted, right? Yes, if the employee pays, who will pay? Employer's contribution towards Social Security scheme towards Social Security means not the employees, but the owners. If his pay is rupee 1,000. He gets 900 rupees. So how much did he keep himself? If he kept 100 rupees, then his owner will also keep 100 rupees for him. Did you understand? Yes. We will not consider his amount because we have already considered that as pay. If the owner has given it, we will consider that. Understand again. What is the cost of the employee? What is the cost of the employee? Whatever the owner keeps, whatever money he keeps, that is his salary. What is all that? His? So what did I say first of all? Wages, salary in cash, or secondly bonus, thirdly what did I say? Employer contribution towards Social Security. So understand, it is employer contribution towards fund. There will be RPF, there will be SPF. Who gives this money? The employer gives it. Did you understand? Towards GP fund. So the name will be like this. It seemed tough. Yes. If the employee himself transfers, will it come? No. Why? Because we already take that as pay. Did you not understand? What was his pay? Ours, 1,000. How much did he get? Why? Where was ours? 100 deducted? GP fund. Did you understand? So we take his pay as ours, 1,000. Did you understand? That is already included. And these 3 things mostly come. What does it come? Wages, salary in cash, or what does it come? Salary in cash. And the second bonus is employer contribution towards, and keep one thing in mind, son. Keep one thing in mind. If you receive a glass of water from the employer, it is not free. This is salary. This is salary. And if we catch it in cash, if we catch anything, what will we catch in kind? In kind means we catch something like free laptop, free or rent-free accommodation. Rent-free, try to understand this is also salary. We told him to go and live in this house. This is mine, you don't have to pay rent. If he paid rent, he would have paid 30,000 for it. But what did the company tell him? This is free. What is this? So if anything is free, we have to find out its value of 30,000. This will not come. Only these things are important. What are these?
Wages, salary in cash and bonus, okay? And this will come. Whose contribution is this? Employers, not employees. Sometimes we give free transport. What do we give? To the employee, okay? That is also salary. You will read that also in the text actually. Now tell me, first of all I told you 3 things. I told 3 things. We have to find out cost of employee, cost of employment wages, 2 salaries, bonus, and employer contribution towards Social Security. Did you understand? Yes. In other words, remember, whatever you see here, whatever I take from the employer, that is salary. Whatever I take from the employer, that is salary, whether in cash or in kind. So what was this, son? Can you tell me cost of employee? What? Wages and salary, then bonus and employer contribution towards employee, will it come? Sir, employee's own contribution will not come in this. Only employer's contribution will come. Don't find it tough. Okay, this was cost of employee. The second one is operating surplus. This is son. What is it? Operating surplus, son. Rent and royalty plus interest plus profit. See, these things must have been given. We catch rent, we catch royalty on tangible assets. You should understand only royalty rent right now. These are different topics. I have taught in hiring, it is on my app. It takes 1 month to understand it numerically. Rent and royalty. Rent, and you must have been given rent and royalty. We catch rent on tangible assets. On which? Did you understand? Royalty is caught both tangible and intangible. Suppose I wrote a book. Understand what I am saying? I wrote a book. I am an author. Okay? Publisher gives me money that is not rent. What will you call royalty? Simple rent and royalty. What is the second and what is the third? Now this profit or profit, if it is given directly, then it is fine. If it is given directly, then it is fine. If it is not given, then You have to calculate what have to be done, so understand, sir. How will you calculate? We must have divided the profit either into dividend. Into what? Dividend is a part of profit which is given to the shareholders. Okay? Or we must have paid tax. How much is the corporate tax? 2. If the question is dividend, what is that? If the profit is given in the question, corporate tax, what is that? Profit, is it clear? Yes, the third retained earnings, that profit, listen to me son, that profit which I did not distribute, it has another name, undistributed profit, or another name is corporate saving. Corporate saving, understand again son. What did I say? Yes, look, I distributed this profit came, I distributed, in what? Either into dividend or into tax, so you call it distributed profit. What do you call it? And this is called undistributed profit. Sir, this is fine. But we know what operating surplus is equal to. Rip, rest in peace. Rent and royalty plus interest plus profit. Please understand again. Rent and royalty plus interest plus profit. Till here it is fine. Please understand again. Rent and royalty, this must be given. Rent and royalty, it's very easy. Interest is very easy, but question arises of profit means, did you understand this? Nah.
See, if profit is given, then there is need to take its children. These are the children of profit. Did you understand it? Then understand if profit is not given. Take it, this is given. Take it, this is given. Take it. Did you understand it again? Yes, if operating surplus is given. There is no need to take all these. Did you understand? Because these are the children of operating surplus. If this is given, then there is no need to take it. If this is not given, this also has to be taken. This also has to be taken. Take this also. Yes, these are its children. If this is given, then there is need to take its children. Yes, if this has been given, this has been given, this has been given, this has not been given. Take all these. Is it clear? So we can distribute the profit. We distribute the profit, either we give it to the shareholders as dividend or we give it as tax. Is it clear? Or retained earnings or the profit which we have kept as it is? Did you understand? Tell me again. If the profit has been given, there is no need to take its children. Yes, if this has not been given, then its children have to be taken. Did you understand? So come on, son, let us do the numerical. Now listen to me, son. Listen to me. What did I tell you first? Son, how will we do the question? We will find out the domestic income. Domestic income means net domestic product at factor cost. That is equal to listen, that is equal to cost of employee operating surplus. Son, it is tough operating surplus and plus mixed income of self-employed. You know mixed income self-employed. Now I will explain who runs his own business. I am a teacher, I teach in this hall. Its rent is Rupee 00. I will get this too. I will get the fee. I am a manager. I will get the salary too. So I earn mixed income. I earn. That's why you call it mixed income of self-employee. Mixed income of, because you cannot separate these. What is the pay rent? What is his salary? What is his profit? This must have been given from there itself. So, tell me, how can we find out net domestic product at factor cost? First, cost of employee. Cost of employee includes wage, salary, bonus and employer contribution towards fund, social security scheme. Is it clear? You have operating. This is RIP, rest in peace, land royalty, interest and profit. Children, did you understand profit? I told you that. What else is there? Plus mixed income of self-employed. Now we have our first question. Question says calculate operating surplus. See here, son, what we have to find out: operating surplus. What is operating surplus equal to? I will write in solution in 1 minute. Tell me about this operating surplus, son. Rent will come. Royalty will come. Okay, look, tax will come. Retained earning will come, but profit has been given. If profit has been given, then there is no need to take its dividend. Rent, royalty, interest will come. Rent, royalty, interest will come. Yes, profit has been taken, then there is no need to take its dividend. Don't find it tough. Don't find it tough. Understood? So, operating surplus is equal. What is the rent? 8,000. Yes. How much is the royalty? 9,000. Is it clear? Okay, what comes after this? Interest. How much is the interest? Tell me more. So, profit is equal to 4,000. So, your answer is 24,000. Did you understand? Did you understand? Now tell me. If profit is given, just profit is given, what is given? Just profit. If it is ever written, profit after tax, it is not just profit, son. If it is ever written, profit after tax, then take care, son. It is just profit. If it is ever written, profit after dividend, then it is not just profit. Is it clear? It was difficult. Understand again. If it is given, profit after tax, then that just profit means that profit is that which is left. It is retained earning. Is it clear? So here we tell me neither I took tax nor I took retained earning. I did not take because these are the children of profit, so the answer is 24,000.
Okay, let's talk of the next question. Okay? NDP at factor cost. So tell me, son, does NDP at factor cost mean domestic income, son? Domestic income. Okay, you know what is domestic income equal to? Okay, solution. Yes, very good. NDP at factor cost. That's equal to cost of employee plus operating surplus plus mixed income of self-employee. Okay, now you have cost of employee. Yes, it is given compensation of employee. Cost of employee is the best term is compensation of employee. Understood? Cost of employee is a finance term. Compensation of employee is the best term. Okay, what would have been given there? Compensation of employee. Is it clear? So, compensation of employee is given. That is 1500, and your mixed income is given. Listen to me. Hello, what is mixed income? 1200 and your operating surplus is equal to what? Rip, rest in peace. That is rent, royalty, interest and profit. Did you Understand? It is easy, isn't it? 500 plus 600 plus 300 plus 500, did you understand? So if it has to be taken out separately, this is the cost of compensation of employee. Operating surplus is all these things. This is mixed income, self-employed. Okay, that 200, 26, 29, 30, 34, 44, 46, 100, is it clear, son? This is your answer. I hope you understood. Don't make it tough. It is easy, isn't it, son? Okay, there are 2, so we still have 11 questions. So we have still 11 questions. Okay, come on now. The question says hello, yes, calculate operating surplus and domestic income. First of all, we will calculate operating surplus. Operating surplus is equal to what? Okay, operating surplus is rest in peace. So first of all, where is compensation of employee? Indirect tax, accumulation of fixed capital, depreciation, dividend is separate, net income, rent and interest. Is it clear? In one it will come in that. So rent and interest is 800 rupees. Yes, rent and interest. Now understand rent, royalty, interest. It is given in profit. If profit is not given, its children, who are its children? It is dividend. Did you understand? Okay, it is corporation tax. Did you understand? Where did I say undistributed profit? I told you, right? It is shares of profit. Okay? Tell me, son, what is it? Dividend. After this, after dividend, there is corporation tax and undistributed profit. Please tell me how much is the dividend? 940 and 460 and 304 zeros a carry 2 pansar. So 2,500 is operating surplus. Is it tough? Is it clear? So 2,500. So, what do we have to find out? Domestic income. Domestic income means net domestic product at factor cost. That equals compensation of employee plus operating surplus mixed income of self-employed. You have found this out, right? Operating surplus. Operating surplus is 20 and your mixed income is given. This is easy. Now, compensation of employee. It is also given. That is 2,000, sir. These other things, why are they there? If you had asked me the question that you find out national income, I would not have added this net factor income from abroad. Are you able to understand? Net factor income from abroad. This is it. So there could be some things here. But what is it telling me? Find out the domestic income. So 4,700 is your answer. I hope you understood. Don't find it tough. Don't find it tough, son. Okay. Now next, are you able to understand? Are you able to understand the concept? If you tell me, there comes a theory question that how to find out the income. How to find out the income.
First of all in every question we see three sectors: primary, secondary, tertiary. Okay, so first of all we find out the domestic income. Domestic income, here we have equal, cost compensation of employee, operating surplus and mixed income of self-employee. List of compensation of employee, list of operating surplus and mixed income. Okay, then we add that mixed income. Net fact income from abroad. We get national income. This is what you get, 3 marks, right? Okay? Calculate this domestic income, right, son? Domestic income, it is equal to net domestic product at factor cost compensation of employee plus operating surplus mixed income of self-employee. Is it clear? It may seem tough. Okay, so compensation of employee, now listen to me. For 1 minute. Social contribution made by employer, right? It is employers, not employers. There is no employee. Okay, this compensation of employee, right? You have wages and salary. Social contribution made by employer. Is it clear? So I will calculate it here. Compensation of employee, social contribution made by employer, that is 500 rupees and that is 100, so how much did you get, son? This is 600 rupees. So you are your operating surplus shares. No rent and royalty is given. Rent and royalty is given. So mixed income has been voted. Okay. Now, rented, royalty, dividend, interest, is it clear? Tax, right? Look, rent and royalty, dividend, rent and royalty and interest. First of all, operating surplus, right? Yes, it is given in profit. So dividend of profit has been given, tax has been given and profit after dividend has been given. Didn't you understand this mere profit? Now listen to me. I will find out the operating surplus for you here. Operating surplus. So you have rent. Okay. Rent and royalty. So rent and royalty is 200, rent and royalty is 200, so profit is not given. Yes, is there interest first or rest in peace? So what is the interest, son? Now you have dividend, because profit is not given, so there is dividend. There is dividend. So what is your dividend? 100 rupees, and tell me, have you paid tax also? Tell me how much is the tax? 50 rupees, and how much is the profit after dividend, son? $900,900. It was tough. Okay, 19, come on, I trust you. Okay, so 1950, this plus this 2,550, did you understand? When to take dividend, when to take tax, when not to take it. If profit is given, then children are not to be taken. If profit is not given, then children are to be taken. Sir, here profit after dividend was given. This is not just profit. Is it clear? Okay, I hope you have taken it till here, son. Quickly, now the next one, calculate domestic income. Hello, calculate domestic income. Domestic income means net domestic product at factor cost. Compensation of employee, son. Compensation of employee plus operating surplus plus mixed income of self-employee. Okay, mixed income is given, that is 100 rupees. Okay, now listen to me, there are 2 things. Social contribution made by employer will come. Social contribution made by employee will not come. Because I told you to take care. Okay? Because I have already given you the concept. Okay? Compensation of employee, listen to me.
If compensation of employee is given, then its children will not come. Children means age salary will not come. Now 500 rupees has come directly here. Is it clear? Now I have to explain for 1 minute. Compensation of employee has been given. So this thing social contribution made by employer will also not come. Why? Because this is already there in it. Yes, if it had not been given, this should have been taken, this should not have been taken. Is it clear? So compensation of employee is given. Okay? Now you have to find out operating. Operating surplus. Now listen to me, there is company, what is it? Rent and royalty is 200. Okay, 1 minute ago how much is the interest? So now you have to find out profit. If profit is not given, its children take dividend, take tax, take profit after tax and take dividend. Okay, first of all there is profit after a tax. Right? What is tax? 80. What is dividend? Tax, dividend, profit after the tax. So tax is 80, dividend is 100 and profit after tax is 1000. Satgora 1680. Shara Aku, how much did this come? 14. No, it was not wrong, it was not wrong, it must have been here and there in the amount. Okay. $2,280. I don't know if it is somewhere, but no, it must be 2,280. Then it is up to me. I am making it up. Okay, rent and royalty was taken. Rent and royalty, right? Rent and royalty is 200. And how much is the interest, son? 300 must have been written here in the amount. Okay. How much is your dividend? 100 rupees. How much is the tax, son? 80 and profit. Yes. Profit after tax is 1000. Kat Shara Shashid Sharashi Sheed. Compensation of employee 500 and mixed income 100 rupees. You got 2,280. Is it clear? Are you able to understand? Okay. Now, after this calculate national income. First I picked up the photo. Now the next one, calculate national income. Now you have to find out national income. But before finding out national income, we have to find out domestic income. What? And the domestic income, son, NDPFC, that is equal to compensation of employee, son? What? Compensation of employee plus operating surplus. Write it in full there, okay? Plus mixed income of self-employed. Okay. MISC is given, mixed income of self-employed 200 rupees. Is it clear? Now you have to find out compensation of employee. Compensation of employee is wages and salary. Okay? Okay? It is bonus, social contribution, no sir. So, your 700 rupees is compensation of employee. Is it clear? Did you find it difficult? Now, what do you have to find out? Operating surplus. What is operating surplus equal to? Rest in peace. Operating surplus, rent and royalty is given. Rent and royalty is okay. Now, so, operating surplus is given. You don't have to consider rent, royalty, interest. You didn't consider that? Did you understand? Children don't have to consider it. When father has given, children don't consider it. So 900 rupees came. Now you went. Shuji, why? You got 1800? Domestic income. What do you have to find out? National income. National income is NAP FCC? That is equal to NDPC APSI plus net factor income from abroad.
Just keep in mind, this will be the difference. What will I teach you tomorrow? What is the difference between this and this? This is there. This is not there, okay? I will tell you about that tomorrow. What is NDPFC? Plus NFIA factor income. 1 minute from abroad. Okay, now tell me how much it is. 50. So how much is it? Did you understand national income? So national income, nothing needs to be done. Just add net factor income from above. Do you understand? Okay, now we still have 7 questions. Quickly, son. Okay, let's calculate national income. What do we have to find out? National income. So what do we have to find out first? Net domestic product at factor cost. Cost of employee plus operating surplus plus mixed income of self-employee. So I am given 200. Okay? Compensation of employee is given, that is 500 rupees. Now you have to find out operating surplus. Profit is given. Profit is given. So, you have rent, interest, and profit 200, 300 and 150. Here I will give you the operating surplus. You have rent, you have interest, and you have profits. So profit is given, you don't have to take tax, you don't have to take dividend, okay? So what is your rent? 200, and what is your interest? 300, and what is the profit? What is your profit? 150, 500,000, 650. So, what is the secret of 650-50? 1350 is your NDPFC now. NNPFC is equal to what? Net domestic product at factor cost plus net factor income from abroad. This is it, right? To abroad. Remember, what is this? You will write to abroad, it means net factor income from abroad. This money from here has gone there. So the net factor income from abroad would have been equal to FFA FETA FIFA FETA 1350 plus N. This is minus 50. Remember, this is not FIFA. This is FETA. The money from here has gone there. So, if this would have been empty, right? If it is plus 50, then it means minus 50. If it is minus 50, then plus 50. Is it clear? So tell me. 135050, that is. So, we had to add FIFA, but what did we add from there? FETA. So, what do we do with FETA? Minus. What do we do? Minus. Is it clear? So, you got your national income. Understand again, this is not FIFA, this is FETA. This is factor income to abroad. If it was factor income from abroad, we would have added it. If it is FETA, then we have to minus it. Okay, now calculate. I picked up that photo. Calculate domestic income. Domestic income is in DPFC compensation of employee plus operating surplus plus mixed income of self-employee. This is 700 both. Okay, operating surplus is given. That is also given, right? So rest we need to see 5 6. This is such an easy question. If it will come, it can come, right? Rest we will see. You got it, sir. Employee unpaid contribution. This does not come, sir. This will come, but this is given. This will not come, right? I don't know, it will. Come in short, type right, son? Not 2 marks, effective 6 marks. Okay? Compute social security contribution by employer. Remember, son, G? What did I say? Earlier, if my salary is 1000 rupees, I get 900 rupees, how much do I contribute? 100. How much do I contribute? And my employer will also contribute 100 rupees. Okay? If I contribute 100, what will he contribute? 100 rupees. We have a question. Compute social contribution by employer. Okay? The question is, compensation of employee is given. This compensation of employee, right?
So that's equal to son, wages have been given, see wages in cash, wages in plus wages in kind plus wages in, and there is social contribution. And what is it? That is what we have to find out, plus social contribution by employer. Okay, compensation of employee is given, how much that is, 1 lakh. Wages in cash is 50,000, wages in kind is 30. This is the vote given for social contribution by employer, so 1 lakh plus 80,000 is equal to social contribution by employee. Sorry, this will be minus 80 here. What will be created minus social contribution by employer? That's equal to 20,000. Is it clear? Is it clear? Did you understand? Okay. The important point has to be understood, which is interest. Now what will be the point of interest? First, did you understand? How did we do it? Wages in cash based in kind. Okay? Pick it up, pick it up. Done, yes, keep it there. Important point, son. Interest paid by household is not included. Simply, if household pays interest, we do not include it. Because we take loan on interest for two things. Either for investment purpose or for consumption purpose. We do not consider consumption purpose. Simply, interest paid by household. Take its photo, son, you will need it. Interest paid by household is not included. What did I say, son? Which household pays interest? Look, primary sector will come, secondary, territorial. If they pay interest, son, it will come. But, if household pays interest, son, take care son, it will not come. Why? Please, the reason is this, okay? The point is here, compute interest as factor payment. Compute interest as interest payment by primary will come. Interest payment by household will not come. Secondary will come. This will come. Now tell me 40206060 plus 3090. Did you understand? So primary, secondary, tertiary. What is primary? 40,000. What is secondary? 200,000. And what is tertiary? 30,000. So your interest is 90,000. It's simple. Interest paid by household is not taken into concentration. Did you understand? It's easy. Okay? Now we have only 3 questions. Remember the calculation, son. This old age pension. This will not come. Right? Old age pension. Right? This does not come. You will understand when I teach you. So calculate national income, but before national income what we have to find out domestic income. Domestic income is net domestic product at factor cost compensation of employee plus operating surplus plus self-employed. So mixed income is given 200 rupees, compensation of employee operating surplus is given. Very easy now, okay? Don't take profit and wages and salary, so that is your compensation of employee. Compensation of employee, how much is 550 plus this. Now if you reach there, then God is there, then your net domestic product at factor cost is 1650. So what do you have to find out? Net national product at factor cost is equal to what, son? Yes, NDPFC net factor income from abroad. 1650 plus net factor income from abroad. This is minus 10. So 1650 minus 10 equals 1640. Is it clear? You have completed all the books. Okay? So from where should I get it? Should I get it myself? Okay? Okay. Question number 12. Yes, son. Question number 12. Look here, son. So what do we have to find out? National income, but before national income what do we have to find out? Domestic income? Domestic income is net domestic product at factor cost. That's compensation of employee plus operating surplus plus mixed income of self-employed. It must have been given here. Okay, now you have to find out compensation of employee. It is given here. If this is given, employer contribution is not to be given.
It is not to be given. Is it clear? Don't find it tough. Now we have to find out operating surplus. Okay? Operating surplus is first find out rent royalty has been deducted rent is 80 okay what is the interest 100 and profit now did you understand son P10? $390 okay from there take the number 1140 came 1140 what we have to find out national income NAP net domestic product net factor cost net factor income from abroad so this is 1140 net factor income from abroad okay did you? Reach 2000 otherwise no this is not factor 2. This is net factor income from abroad. If T happens because if T happens okay? Okay. Is it clear? Now tell me 1140 to 20 so this is 1120 it seemed tough. Okay? Last one calculate national income. Okay, so before national income we will find out domestic income. Compensation of employee plus operating surplus plus mixed income of self-employed. Minus, so 500 rupees must have been given. Okay, compensation has been given, so 400 so, what is not given? Operating surplus, profit has been given, rent has been paid, interest. Do you not want to take dividend? Sir, why not take it? Dividend, profit has been given. Is it clear? 2, 3, 4, 5, oh it was tough. Did you understand? Is it? So dividend was not taken because profit is given. So it is gone through 1350 if we do this, then minus 1300 is the national income. So net national product at factor cost NDPFC net factor income from abroad 1350 that's your answer. This is clear, this is your numerical done, this is your numerical done, okay? Did you understand? This is your numerical done. Tomorrow in the next lecture, we will study the theory. Just tell me how to calculate the national income. First, let us calculate the domestic income. Domestic income is equal to what? Cost of employees plus operating surplus plus mice. Okay, then what do you add to it? Net factor income from abroad. That is what you have to write in theory. And do you know what the best part is? That is the theory question. These questions do not come because not everyone comes with any numerical. Okay? So see tomorrow. Okay my dear students, now what we have to study today is theoretical. It is a very small topic. Yesterday we read that we first calculate domestic income. Right? And remember, whatever income we calculate, that is factor income. What is it? So theoretical questions come. Maximum times we ask theoretical questions there. Okay? Okay? So what is income method? So look, first of all we calculate national income through this method. First we consider which factor income, son. Look, under this method national income is calculated from the context of factor income. What do we consider? Factor income. We do not consider transfer income. What do we consider? Factor income. Factor income, son, is the income that we earn on factors of production. Factors of so what are the factors of production? Land, labor, capital and entrepreneurship. Is it clear? So how do we calculate national income? In this question I said that we calculate national income through this method. What do we consider? Factor income. So here you got a point that we do not consider transfer income. Is it clear? Okay? The income which is earned on factors of production like wages,
rent, interest and profit is called factor income. Okay? I kept this with me to expand a little. You already know this. Income method question will come, income method. What is it? Okay? How we calculate national income under income method? First you will write what is income method. So what did we say? We calculate national income by considering factor income. What is factor income? Which we earn on what? Factors of production. Look like wages, rent, interest and profit. That is it, right? Okay? Now under this method, what do we calculate first? Domestic income. Domestic income means NDPFC and what do we do with it? Factor income from abroad added, then what do we get? National income. So under this method, see here, first domestic income is calculated, that is NDPFC. Then NFIA net factor income from abroad added to derive national income. National income is NAPFC. It is easy. There is no such term that I have not studied. It is easy, isn't it? But there are steps. There are steps. Steps of calculating national income under income method. Mostly see, the first point will be. First we will consider each sector because each point comes. Which sectors are there? Primary, secondary and tertiary. Okay? Identify all production units. First primary. Then secondary, then tertiary. Is it clear? Did you understand, son? First of all, now tell me, the second step is, estimate the factor income. What, son? Yes, you know the income method, right? Numerically, now look here. Estimate the factor income of all the income which is earned on factors of production is called, it is classified in 3 categories here. Did you understand? Tell me. First of all, the first thing is, that is called compensation of employee. No, son? What? Compensation of? What is the second? Operating surplus. And what is the third, son? Mixed income of self-employed. Did you find it tough? So first of all, identify all the factors of production. We have to identify each factor of production, son. Okay? That is primary, secondary and tertiary. Okay? Third, what did I say? Estimate the factor income. And in this method we have divided factor income into 3 categories. What is the first one? Compensation of employee. Second is operating surplus. What is the third one? Mixed income of self-employed. And the second one is calculated domestic income. NDPFC. Just tell me, NDPFC is domestic income, right? What was it equal to? This is equal to compensation of employee, right, plus operating surplus and plus mixed income of self-employed. Is it clear? So you got domestic income, that is NDPFC. And after this what do? We calculate national income. Sir, how? What is national income NAPFC equal to? NPFC net factor income from. That is what we do. Now Sir G. If this comes for a long time, then don't write it. So after this, you have to write this step below, where's the compensation of employee, operating surplus and mixed income. Operating surplus is equal to what? Rest in peace. That is rent and royalty. I is interest.
P is profit, it is divided into dividend, remember corporate tax and retained earnings, right? Don't find it difficult. Don't find it difficult. We can divide, and we can also tell you about the compensation of employee. Is it clear? Okay? So you got your answer. Easy. Did you get it written as I did or not? It is the same. So first of all, identify all the factors of production, whether it is primary, secondary or tertiary. That's done. Then what did we do secondly? Estimate factor income. What did we do about factor income? The income which is earned on factors of production. Is it clear? And here, son, I told you that here it is divided into three things. What all? Compensation of employee, operating surplus and mixed income. Don't find it difficult. Is it clear? Now precautions of income method. Now listen to me. Just tell me what we have to consider. The precautions that we have to consider and those that we don't have to consider. I have divided this into include and exclude. In which? Include and look at include. We take factor income only, rent, wages, interest and mixed income, and we take NFI. We take it, right? Did you not understand? Understand again, son. Factor income only, mixed income of self-employed and net factor income from abroad. If we are calculating national income, not for domestic income. I did not say for domestic income because that ad does not come in it. What does it come for? For national income. Did you understand? So what are the precautions? First precaution is we have to consider only factor income. We have to consider. We have to include. We have to include. What we have to include. Secondly, what did I say? Beta G. Mixed income of self-employed. Tough means okay. Beta G. Exclude beta G, remember that. Opposite transfer income. Look beta G. Old age pension. Yes, remember that. We don't take old age pension. We don't take gift, donation, unemployment allowance, scholarship. Profit from selling old assets like house, leg, shares, etc. Okay? We don't take second-hand goods. We don't take illegal income, smuggling, gambling, black money, sale of second-hand goods, only the broker's agent's commission. There also I had said intermediate income, avoidable accounting. That's it, nothing else. So this is included. This is important. As important as that is, this is equally important. Just tell me, son. Just tell me. First of all, son, what do we have to include? We have to include factor income, mixed income of self-employed, and did I say? Abroad, this is included. Now tell me what is excluded. Transfer income is excluded. Capital gain, sale of double shares, illegal income. This is excluded. These are these things. Now the concept is, son. There is a concept of domestic income. Now, son, I will tell you a little about domestic income, son. This is domestic, isn't it? This is India. Whatever you earn within this, that is domestic within India. Whatever you earn within India, what is that? So, this focus is on place. On what? Whoever earns in India, whether he is from India or not. Whether he is from India. That is called domestic income for the country. For a country, it is the money value of goods and services produced within the economic territory of a country. Is it the money value of goods and services produced within the economic territory of a country? But I can put it together, whether residents or non-residents, whether from here. Do you understand?
So the important focus is, whether by residents or non-residents, and what, son, your focus here, this focus here, that is economic territory. What is the focus on, son? No, tell me again, son, what is the focus on? The focus is on the economic territory. On what? On this. Is it clear, son? What is the focus on, son? On the economic territory. On the economic territory. The focus is on this, do you understand? Meaning, whatever goods and services are produced within this country, what do you call that? Domestic income. Domestic income is denoted by NDPFC. It is denoted by NDP, so, it is the money value of goods and services produced within the economic territory. With the help of residents, and it was difficult. Did you understand? Now try to understand the concept. The second one is national income. What is the second one? Son, what did it focus on? It focused on the place. What did it give? It gave to its people. What did it give? It is the money value of goods and services produced by the states of the country. Didn't understand? Produced by the states of India and outside India. It was difficult. Try to understand. It is the money value of goods and services produced by the states of the country. You can write down the results of the country now. Produced by the seasons of the country and the focus it gave, son, the focus it gave, son, look, what did it focus on, son, on what? The stages of the country. On what? What did he focus on? States of the country. It was tough to try to understand, son. Didn't you understand? Okay. Now remember, now see, first of all the income that one earns in India, that is national income. Did you understand that? Whatever he earns from India outside India, he brings it here. That's called factor income from abroad. Factor income from abroad is in national income. Didn't you understand? My cousin lives in Kuwait. He sells money from Kuwait to India. Where is he from? From India. Where does he earn? In Kuwait. Where does he sell money? In India. It's national income. So factor income from abroad, listen to me. It is included. Did you understand? Factor income from abroad is it in domestic? Didn't you understand? What happens in domestic? Only within India. So factor income from abroad is not included. Easy, didn't you understand? Understand again. Abroad income, if the income from abroad comes to India, it is national income. Did you understand it? Yes, we used to do this about abroad income, right? When we added domestic income, it became national income. So, the factor income from abroad was not included in it. Why? It focuses on place. On what? Whatever you earned within India, that is domestic income. Now it says, whatever you earned within India or outside India, that is national income. In other words, this will include the income from abroad. This will include the income from abroad. Now remember, if the income from India comes from abroad, that is called FETA. Yes, earned in India, that is called FETA. That is earned in India, right? That is domestic income. That is FETA is included in domestic income.
Feta is, but tell me, what did we do with net? What was the net equal to? FIFA feta. So feta is not included. Did you find it tough? So feta is not here. Feta is here. Did you understand? Please tell me in simple words. It is a money value of goods and services produced within the income director of a country. It is a money value of goods and services produced by the stage of a country, whether in India and outside India. Don't find it tough. Okay, now so let us differentiate domestic income and national income. Did you understand, son? So what is domestic income, and what is national income? Should I write? Please tell me the meaning. It is the money value of goods and services produced within the economic territory of a country. Whether by residents or non-residents. Is it clear? So on what did he focus? On the economic territory. On what did he focus? So what is this? It is the money value of goods and services produced by the states. Right, produced by the state versus resident. I will explain this concept to you later, okay? Who is a state? Who is a resident? Because in this text, an American can be a resident of India. An American can be a resident because it is by birth. Resident means how many days you are physically stayed in India. Did you understand? So there are certain conditions. If fulfilled by a person, he can also be a resident. But it cannot be resident. It is by birth. Resident means how many days you are physically here, okay? Okay. It is the money value of goods and services produced by the residents of a country. You will write the same as written here. You will write it in India. Okay, now let me tell you, son, F, which is factor income from abroad. Does it mean domestic? FIFA not included. Here, beta G, included is clear, it is FIFA feta, isn't it, because less came to India and then it went abroad. So, here we will write included over not included. Okay, remember, tell me what does it focus on? On the place. It focuses on place, and it focuses on people. It focuses on. Didn't you understand? What does it focus on? On the place, and what does it focus on? On the people. Did you understand? Okay, for example, beta G, look at domestic income. Microsoft started a new office in Delhi. It is from outside, right? Where is it earning? In India. You call it domestic income. You call it. Now, look here. Tata started a new branch in. Yes, it is from India. Yes, where is it earning? Factor income from abroad. Are you understanding? It is national income. I hope you found it easy. Now don't find it tough. Now, do you understand why I teach on the end? Because first you understand the concept through numerical. If I had written to you at that time, beta G FIFA is not included and feta is not included, you would have looked like this. What is sir saying? So first we solved the numerical. After that we understood theoretically. Is it clear? Okay? Now we have the last, which is another method. Inshallah tomorrow we will study the expansion method. I hope you will enjoy my lecture. See you tomorrow. Yes. Now, जो आज का टॉपिक है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, मैं आज ही आपको न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करता हूँ
और इसका जो थ्योरेटिकल है वो भी कंप्लीट करता हूँ। इस मेथड में हम क्या एज्यूम करते हैं? हम एज्यूम करते हैं जितना भी खर्चा हुआ होगा ना वो हमने कमाया होगा। सो बाय एक्सपेंडिचर हम एस्टिमेट कर सकते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो याद रखना बेटा जी, एक्सपेंडिचर वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मींस टोटल खर्चा कितना हुआ है, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये होता है बराबर सी प्लस आई प्लस जी नेट एक्सपोर्ट। अब बेटा जी सी का मतलब क्या है? ठीक, ऐसे ही आई का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है और एन एक्स का मतलब क्या है? देखो सी का मतलब हम मानेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? जो हाउस होल्ड का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है ना, उसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, और इसका दूसरा नाम है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट का है एंड यू कॉल इट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट होता है बराबर बेटा जी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ बेटा जी, क्या मैंने कहा? नेट एक्सपोर्ट किसके बराबर होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो समझना बेटा जी, हाउस होल्ड का खर्चा कितना है, इन्वेस्टमेंट का खर्चा कितना है एक कंट्री में, चाहे हाउस होल्ड ने किया हो, गवर्नमेंट ने किया हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट किसके बराबर? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखो जो आपने ये बताया ना, ये ना, ये ग्रॉस डोमेस्टिक, ये ना, ये पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन सा बेटा जी? ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये दो तरह का है। क्या है? दो तरह का। ये है कंजप्शन बाय हाउस होल्ड, कंजप्शन बाय हाउस होल्ड मतलब घर वाले कितना खर्च करते हैं, और दूसरा है ये कंजप्शन ऑफ पी एन एस ए पी एन पी आई एस एच पी एन पी आई एस एच। बेटा जी ये खर्चा होता है एनजीओज का। किन का? एनजीओज का। नॉन, देखो, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड। मतलब एनजीओ देते हैं कुछ खर्चा, एनजीओ ही खर्चा करती है किन के लिए? ताकि वो सर्व करे फैमिलीज को, ताकि वो सर्व करे, लेकिन वो भी तो खर्चा है, वो भी तो खर्चा है। तो याद रखना बेटा जी, ये जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना, इसके दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं। एक तो है कंजप्शन बाय हाउस होल्ड और दूसरा क्या है? कंजप्शन बाय पी एन पी आई एस एच, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड। समझना।
अगर पीएफसीई दिया है मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, फिर से समझना, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है तो ये बचे नहीं लेने। अगर ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है टोटल, हाँ टफ मत लगा। हाँ ऑल्सो याद रखना बेटा जी, अगर डोमेस्टिक दिया है, डोमेस्टिक मीन्स खर्चा किया है विद इन द कंट्री, इंपोर्ट दिया है आउटसाइड कंट्री, वो भी आएगा, वो भी आएगा। तो पहली चीज याद रखना, पीएफसी किसके बराबर है, कंजप्शन बाय हाउस होल्ड और कंजप्शन बाय पीएनपीआईएसएच, ठीक है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? अब बता दीजिए, नाउ वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कौन सा बेटा जी, ग्रॉस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना। ये दो तरह का है, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री मतलब इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, समझ आया? और इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, अदर इन्वेस्टमेंट्स मतलब बिल्डिंग्स, समझ आया? ख्याल रखना बेटा जी, यू नीड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पे लिखा होगा आपको फिक्स्ड, क्या लिखा होगा, तो फिक्स्ड में ये भी लेना है और ये भी लेना है। अगर ये दिया है, हेलो, अगर ये दिया है, ना ही ये लेने की जरूरत है ना ही ये लेने की जरूरत है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, ये भी लेना है ये भी लेना है। कभी कभार क्या होगा, आपको दिया होगा नेट, तो नेट को आपने कन्वर्ट करना है ग्रॉस में, एड बैक डेप्रिसिएशन, समझ आया? वो आपको आता है, टफ नहीं है। फिर से समझना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो हिस्से हैं, बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट, लैंड्स में इन्वेस्टमेंट, जो ना ये बना रहे हैं आप, ठीक है, और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। देखो क्वेश्चन में ही आएगा आपको। नाउ यू हैव नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और ये आपको दिया होगा। बताओ बेटा जी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह का है, एक तो है स्टॉक में और दूसरा है आपको इन्वेस्टमेंट, ये ना बिल्डिंग्स में। नाउ वी हैव, लिसन टू मी बेटा जी, लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस इज सी है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस इज जी, gross domestic capital information, this is I, and this is net exports, तो दिया है ना। So what question says, question says calculate national income, लेकिन national income से पहले हम निकालेंगे gross domestic product at market price। क्या निकालेंगे, gross domestic product at market price, फिर convert करेंगे। देखिए बेटा जी, gross domestic product at market price, that's equal to private final consumption expenditure plus investment plus G plus NX। बताइए C क्या है आपका, बताओ I क्या है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, प्लस 700, नेट एक्सपोर्ट क्या है आपका 300, so this is equal to 3200, so this is gross domestic product at, now what you have to find out, you have to find out national product, that is NPFC। दिया क्या है आपको, GDP जी को बनाओ, ग्रॉस को बनाओ नेट, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को बनाओ नेशनल, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, एमपी को बनाओ एफसी, मार्केट प्राइस में होता है टैक्स, समझ आ रहा है, इसमें मत होता है टैक्स,
माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स. इजी. सो यू हैव 3200. Depreciation is consumption of fixed capital, that is depreciation. याद है? Consumption of fixed capital, that is 200. Net factor income from abroad, that is 400. And you have net indirect tax, that is 50. 3200 minus 200, that is 3000. 3000 plus 34 minus, that is equal 3350. This is your answer. क्या समझ आया? समझ आया? So what you have to calculate first? स्टेप भी देखना है ना. We have to calculate first. सबसे पहले GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, और खर्चा हम देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अब चले, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज गिवन, दिया है ना, दिस इज सी. ये भी दिया है आई. चेंज इन स्टॉक नहीं लेना है. क्यों? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दो तरह का है, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स है ना, और है चेंज इन स्टॉक. ये मत लेना है. यू हैव नेट इनडायरेक्ट, नेट फैक्टर, दिस इज नेट एंड गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? पहले समझ आया चेंज इन स्टॉक क्यों नहीं लिया? कुछ क्वेश्चंस में लेना होगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं लेना होगा. इज इट क्लियर बेटा जी? फिर से समझना. ओके जी. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. बताइए सी क्या है आपका? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ख्याल रखना है इसका. ये है 400 रुपए. एंड यूर इन्वेस्टमेंट बेटा जी, इन्वेस्टमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज 100. एंड यूर जी, जी इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट इज 100. एंड यू हैव नेट एक्सपोर्ट्स -20. डरना नहीं है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ समझ आए? ओके. ये कितना बना? 600 -20, 580. Now what you have to find out? Calculate net domestic product, that is domestic. तो आपने निकालना है NDPFC. दिया क्या है आपको? GDP. G को बनाना है नेट, माइनस क्या करेंगे? D सेम, P भी सेम. MP को बनाना है FC माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. सो ये कितना आया? 5 माइनस डेप्रिसिएशन 20, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60. सो दैट इज इक्वल 500. इजी, टफ मत लगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम मीन्स NDPFC. NDPFC. तो NDPFC हम बाद में देखेंगे. पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर C, गवर्नमेंट G, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये बनेगा नेट एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट है 400, समझ आया? ये बनेगा नेट एक्सपोर्ट. सो फिर से समझना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यही चाहिए था ना हमें? चाहिए था कि नहीं? दिखा रहा था ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज आई. तो याद रखना, ना ही क्लोजिंग लेना है ना ही ओपनिंग लेना है. अगर यहां पे ऐसे नहीं दिया होता तो हम वो भी लेना था. ठीक है. ओके. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? डोमेस्टिक इनकम. लेकिन सबसे पहले C प्लस I प्लस G and X. ठीक है. C is given, that is 900. I is investment, that is 600. And your G, that is 500 plus export minus import. Export है 400, 2000 plus this. So ये आया 2200. What you have to find out? Domestic. ठीक है. नहीं, that is NDPFC. It is domestic income. It's not. जो इससे पहले निकाला ना वही. ठीक. अब ये बराबर है
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस को बनाना नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डी इज सेम, पी इज सेम, एमपी को बनाना है एफसी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर? तो बता दीजिए ये कितना है, 2200 minus your depreciation is 150, your NIT is 100, so that is equal to 1950 is your answer। easy है, टफ मत लगा बेटा जी, समझ आ रहा है? नेक्स्ट वन, so calculate national income, national income is NNPFC, so gross domestic capital formation, gross domestic दिया है ना वहीं से, आई ये नहीं लेना, so that is C, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दो तरह का है, जरा बताओ कौन कौन सा? कंजप्शन बाय हाउस होल्ड, कंजप्शन बाय हाउस होल्ड, और था कंजप्शन बाय ये। अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वहीं से दे के है तो ये नहीं लेना, नहीं समझ आया? अगर ये दे के है तो ये नहीं लेना। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर दैट इज जी, दिस इज नेट एक्सपोर्ट। इज इट क्लियर? समझ आया? अब बताइए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज इट क्लियर? बता दीजिए बेटा किसके बराबर, सी प्लस आई प्लस जी, बताओ सी 4000, बताओ आई 1600, टफ मत लगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन टफ लगा? 4000 प्लस 1600 एडिशन टू स्टॉक मत ले लिया हमने। अब बता दो जी क्या है, NX net exports, that is 1000, 8000, so 8100. So what you have to find out? You have to find out national income. You have to find out national income. So अब बता दीजिए मुझे, try to understand. NNPFC, gross domestic product at market price. gross को बनाओ नेट, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल, प्लस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एमपी को बनाओगे ये बनेगा NIT, ये आया 8100। हाउ मच इज योर डेप्रिसिएशन सर? 800। आप प्लस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन यहाँ पे दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना है तो ये जो ये है ये माइनस करना है। पॉइंट समझ आया? इट इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड NIT जो है दैट इज 100। बताइए 8100 71, पहले ये माइनस किया, ऐसे 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 मैं आपको बताता हूँ, 8100 माइनस 800 माइनस 50। इज इट क्लियर? क्या आया? तो पॉइंट था नेट फैक्टर इनकम टू abroad. Okay, now the question is compute private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure किसके बराबर है? देखो private final consumption expenditure कहा था दो तरीके का है, consumption by household, consumption by PN PISH, import by household, import by PN PISH। इनका import भी आता है, this plus this plus this plus this, that is 3000, your answer is 3000। नहीं समझा? फिर से समझना, you have to find out private final consumption expenditure that's equal 800, ये डोमेस्टिक, इसका इंपोर्ट क्या है 1200। अब इनका डोमेस्टिक क्या है 700 और इनका इंपोर्ट क्या है 300। 1000 और 2000 ये हो गए 3000 रुपए। टफ मत लगा? ओके, वेरी गुड। नाउ लिसन टू मी, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मींस NDP। try to understand consumption by PN PISH, consumption by household, ये बनाना private final consumption expenditure, private final consumption expenditure means C। नहीं समझ आया? इससे पहले मत लिया करते थे, अब लिया क्योंकि ये बच्चे दो इकट्ठे हैं तो पापा बन गए। ठीक, अब बताओ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज जी, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। सो व्हाट वी हैव, दिस इज नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है बेटा ये फिक्स्ड है,
हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? तो समझना बेटा जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं आपसे बता रहा हूं। अगर ऐसे दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या दिया है आपको? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज 600। नेट को बनाना है ग्रॉस, ऐड करेंगे, नेट को बनाना है ग्रॉस, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है आपका? तो डेप्रिसिएशन 200। क्या बनाए? इज इट क्लियर? टफ मत लगा। क्या बनाए? 800। यहां तक ठीक है? ओके, तो बता दीजिए मुझे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दैट्स इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, दिस सी, दिस प्लस दिस दैट इज 700। आई छोड़ दो अभी, जी जो है वो क्या है बताओ? nx क्या है आपका? nx, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, nx होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब क्वेश्चन कह रहा है ना नेट इंपोर्ट्स, तो समझना ये नहीं लेना है नेट इंपोर्ट्स क्या है, 100 माइनस 100 लेना है। ये नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है, दिया क्या है? ये नेट इंपोर्ट्स। क्या दिया है? नेट इंपोर्ट्स। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। 15 15 गए 5 5 गए 24 गए 24 24। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनडीपी एफसी। 24 24 गए 24 7। ओके, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? 15 500 2400। टफ मत लगा। ओके, हमें क्या निकालना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट दैट्स इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस जी को बनाना डी से एमपी माइनस एनआईटी। बताओ 2400, डेप्रिसिएशन कितनी है? 200, एनआईटी क्या है? 2400 माइनस, जरा बताओ 2400 ऐसे, क्योंकि एक चीज मुझे आपको बतानी है ना, 2400 माइनस करो आप 900, कितना होगा? सर प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम अब समझाऊंगा बेटा जी, क्योंकि मैंने इसीलिए यहां पे लिखा है। देखो, जब नेट दिया होगा ना, आपने तो डेप्रिसिएशन ऐड की, एडिशन टू स्टॉक क्यों नहीं किया? समझ आया? जब ऐसे नेट दिया होगा ग्रॉस है ना, ये एडिशन नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये है ना नेट। समझना बेटा जी, इसको आपने ऐड किया डेप्रिसिएशन और करना है एडिशन टू स्टॉक। मैंने कहा ना ये दो चीजों का है। जब नेट दिया है तो आपने ऐड बैक करना है डेप्रिसिएशन और ऐड करना है बेटा जी क्या? एडिशन टू स्टॉक। ख्याल रखना बेटा जी। और वो कितना है एडिशन टू स्टॉक बेटा जी? 100 रुपीज। तो ये बना आपका 900, और इसके बजाय 800 के बजाय आपने क्या लेना है बेटा जी? 900, और ये बना आपका 2500। सो यहाँ पे 2500 माइनस 200 माइनस 700, समझ आ रहा है? सो दैट्स इक्वल 1600। इज इट क्लियर? समझ आया? कहा पहले ही कहा था ना मैंने, दो तरह का है ये। ठीक, ओके। अब वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सीधे दिया है, प्राइवेट दैट इज सी, दैट इज जी। एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट ये लेंगे। ओके, व्हाट यू हैव? net domestic capital formation. What you need? Gross domestic capital formation. What you need? So what you need? Gross domestic capital formation. Is it clear? So आपको क्या दिया है?
नेट डोमेस्टिक। हाँ बेटा जी कितना है ये 50। नेट को बनाना है ग्रॉस, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। बेटा जी कितना है 50। हाँ स्टॉक चेंज इन स्टॉक करते वो है। सो 50 और 50 क्या हुआ, इज इट क्लियर? टफ मत लगा। ओके सो जी आपका आई भी आया, ठीक, और नेट एक्सपोर्ट भी आया। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। व्हाट इज योर सी 400 and what is your I 100, what's your G 100 and your net export is given that is 20, that is equal to our partial, that is equal to 620. So what you have to find out, national income, net national product at factor cost GDP MP। G को बनाना नेट माइनस डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक को नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एमपी को बनाना एफसी माइनस एनआईटी। दिस इज 620। व्हाट इज योर डेप्रिसिएशन 50। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डू वी हैव, यस सर 30। डू वी हैव एनआईटी, यस सर 20। 620 650 5। समझ आ रहा है? देखो 620 प्लस 30 दैट्स इक्वल 650। 650 माइनस 50 600। 600 माइनस 20 दैट इज 580। इज इट क्लियर? ओके कैलकुलेट। यस इसके बाद थ्योरी, इसके बाद इसी में हम थ्योरी करेंगे। अब आपको पता चला ना। सो कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम दैट इज एनडीपीएफसी। सो कंजप्शन बाय हाउस होल्ड, लिसन, कंजप्शन बाय हाउस होल्ड, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस इज सी, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये इसका बच्चा है, याद है? ओके गवर्नमेंट फाइनल, दिस इज जी। एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट, ये नहीं, ये लेंगे। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट यू हैव, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस फिक्स्ड, okay you have net domestic fixed, बताएंगे बेटा जी कितना है 400। नेट को बनाना है ग्रॉस, से क्या करेंगे ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज गिवन। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं शायद यही है कि गलत हुआ है, मुझे मैंने इधर उधर का क्वेश्चन मत दिया है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, सो डेप्रिसिएशन इजंट गिवन, मत दिया है पता नहीं, नील। हाँ एडिशन टू स्टॉक है ना, एडिशन टू स्टॉक है बेटा। कितना है बेटा जी 200। 4 और 2 क्या हुआ 600। दिस इज योर आई, दिस इज योर सी, दिस इज योर जी। ओके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सी प्लस आई। ओके बताओ सी क्या है आपका 1000 रुपए, आई आपने निकाला बेटा 600 रुपए। ओके प्लस जी क्या है आपका 2000 रुपए। नेट एक्सपोर्ट से आपका 500 रुपए। पंच अक्तर अक्तर जी 4100 40 नहीं 200 है नेट, ये ना नेट इंपोर्ट्स। हाँ बताओ 3600। सो ये आया आपका 3400। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम दैट इज एनडीपी। सो जीडीपी ग्रॉस को बनाओ नेट माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन मस्ट बी देयर, ठीक है। गलती हुई है पता नहीं किसी जगह। इसके बाद फिर एफसी को एमपी को बनाना है एफसी माइनस क्या करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो ये है 3400 माइनस नेल माइनस एनआईटी कहाँ है 100।
सो ये आपका आंसर है, डेप्रिसिएशन नहीं दिया। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, इज इट क्लियर? अब बता दो सबसे पहले हमने क्या निकाला। हमने पहले खर्चा देखा चीज, हाउस होल्ड का देखा, गवर्नमेंट का देखा, इन्वेस्टमेंट का देखा और फॉरेन सेक्टर का देखा खर्चे। तो क्वेश्चन आएगा स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड और एज फॉलोज। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकर फाइनल, मगर फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर जिसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। टफ लगा? तो पहले ये चार देखे हमने, देखे कि नहीं? इसके बाद एस्टिमेट द टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। यही किया, समझ आया? स्टेप थर्ड कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैसे हम करते थे? डेप्रिसिएशन माइनस करते थे और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते। ऐसा ही है, फिर से समझना। पहले हमने ये चीजें देखी, फिर हमने एस्टिमेट किया टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। समझ आया? ख्याल रखना इस बात का। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, फिर यहाँ पे क्या बनाए? एनडीपीएफसी आपने बनाना है नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। सो दिस इज एनडीपीएफसी, एन सेम, डी को बनाओ एन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऐड क्या करोगे? एनएफआई। कैलकुलेट नेशनल इनकम एनएनपीएफसी बाय एडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू दिस प्लस। समझ आया? सो ये क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकली आएगा, हाँ आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, ये दो चीजों के बराबर है, ये दो चीजों के बराबर है, इसे आप हाँ। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस? प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेते हैं, हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विस, फूड, क्लॉथ्स, रेंट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल बाइंग ए न्यू फोन, पेइंग फॉर ट्यूशन। ठीक, तो इंक्लूड मतलब वी हैव टू काउंट दीज। Government final expenditure, government spending on defense, police, education, health, administration and the like. पहला था ना C, G, अब क्या आएगा? I, gross domestic fixed capital formation. Gross domestic fixed capital formation, investment in building, machine, roads, जो investment करते हैं। Change in increase in unsold goods जैसे raw material, finished goods, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं change in stock means closing stock minus। तो पहले C आया, G आया, इसे I कहते हैं। अब फॉरेन, हाँ, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट को इंक्लूड, इंपोर्ट को डिडक्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आपने इंक्लूड करना है। सर एक्सक्लूड क्या करना है? एक्सक्लूड आपने ये चीजें करनी है। देखो वो इलीगल मत हम रिकॉर्ड करते थे, याद है? ट्रांसफर मत रिकॉर्ड करते थे। टफ लगा? समझ आ रहा है? और शेयर्स भी नहीं, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स भी नहीं, एंड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी नहीं, बिकॉज वी कंसिडर एफ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ना ही ये चीजें कंसिडर करनी है, ना ही ये चीजें। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आपने कंसेप्ट समझ आया। ठीक है, तो कल हम इसके गुड्स पढ़ते हैं, कंप्लीट करेंगे आपको ये यूनिट। नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है बेटा जी, अब चेक कीजिए बेटा जी, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ गुड्स में, थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रो देता हूँ गुड्स के बारे में ना। टाइप्स जो है, एक टाइप है हमारा फाइनल गुड्स। क्या है बेटा जी? फाइनल। ठीक है, और दूसरा है इंटरमीडिएट। ये जो फाइनल गुड है ना, इट इज रेडी फॉर कंजप्शन। ना ही ये फिर से भेजा जाएगा, ना ही ये फिर से बनाया जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसे कहते हैं आप बेटा जी क्या? फाइनल गुड्स। क्या कहते हैं? ठीक, और मैंने कहा था कि नेशनल इनकम में फाइनल गुड को करते हैं कैलकुलेट, मतलब इंक्लूड करते हैं किसे? फाइनल गुड को। इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम में, क्योंकि आप चेक कीजिए इंटरमीडिएट कंजप्शन आप माइनस करते थे, और कल भी आप लेते थे फाइनल कंजप्शन। क्या लेते थे? फाइनल कंजप्शन। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं बेटा जी? ये वो गुड्स होते हैं जो रेडी है कंजप्शन के लिए, लेकिन ये भी खुद है दो तरह के।
तो चलिए बेटा जी हम लिटरेचर पे जाते हैं। सबसे पहले फाइनल गुड्स क्या होते हैं? डेफिनेशन पे देखिए बेटा, बहुत इजी है, समझ आएगा, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बस उतना इजी मैंने बनाया है ये। तो फर्स्ट इज, देखिए, द गुड्स विच आर रेडी फॉर, मेरी तरफ देखना बेटा जी, वो गुड्स जो रेडी है कंजप्शन के लिए एंड विच कैन नॉट बी remanufactured और resold और called final goods। मतलब ये वो गुड्स है जो रेडी है इस्तेमाल होने के लिए, ना ही इन्हें फिर से बेचा जाएगा, ना ही इन्हें फिर से बनाया जाएगा। तो व्हाट यू कॉल दोज गुड्स? फाइनल गुड्स। द गुड्स which are ready for consumption and which cannot be remanufactured or resold or called final goods। अब याद रखना बेटा जी, ये दो तरह का है, एक घर वालों के लिए और एक बिजनेस के लिए। तो जो घर वालों के लिए है, यू कॉल दैट बेटा जी, जो घर वालों के लिए है आप उसे कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा जी? फाइनल कंज्यूमर गुड। द गुड्स विच आर परचेज्ड बाय फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स और कॉल्ड, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मीट लाया खाने के लिए, यू कॉल इट फाइनल गुड। इज इट क्लियर? मैंने रेफ्रिजरेटर लाया इस्तेमाल करने के लिए, यू कॉल इट फाइनल गुड। इज इट क्लियर? जो आप फिर से नहीं बेचोगे ना, या फिर से नहीं बनाओगे, तो वो क्या है आपके लिए? फाइनल गुड। तो पहले, सबसे पहले मैंने कहा वो गुड्स जो रेडी है कंजप्शन के लिए, विच कैन नॉट बी रिमैन्युफैक्चर्ड और रीसोल्ड और कॉल्ड फाइनल गुड्स। ये दो तरीके का है, एक है फाइनल कंज्यूमर गुड और दूसरा है बेटा जी फाइनल प्रोड्यूसर गुड। क्या है बेटा जी? द गुड्स विच आर परचेज बाय प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब हमने मशीन लाई, बिजनेस ने क्या लाई? बिजनेस ने लाई, समझो बेटा जी, बिजनेस ने लाई मशीन। क्या लाई? तो इस मशीन से चीजें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चीजें। तो ये मशीन इनके लिए फाइनल गुड है। क्या है? Is it clear? The goods which are purchased by producers for production of goods or for capital formation are called final producer goods। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको लिखा मशीन, फॉर एग्जाम्पल मशीन। हाँ, एक एग्जाम्पल दोगे तो एक्स्ट्रा नहीं लिखना, समझ आया? टफ लगा? मतलब ये वो एसेट्स है जो बिजनेस फर्म्स परचेज करती है ताकि ये कोई चीज बना सके। आर यू गेटिंग माय डियर? सो व्हाट यू कॉल बेटा, ये टीवी है ना मेरे लिए, व्हाट इज इट? फाइनल गुड। ये क्या है? फाइनल गुड। समझ आया? तो फाइनल गुड, अगर आपको कोई कहेगा कि फाइनल गुड क्या होता है, वो गुड्स जो रेडी है इस्तेमाल के लिए, जो रेडी है, ना ही इन्हें फिर से बनाया जाएगा, ना ही इसे, मतलब फिर से बनाया मतलब इसे क्या बनाओगे आप? ये तो फाइनल गुड है। इज इट क्लियर? समझ आया? अब फाइनल गुड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फाइनल गुड है ना, ये काउंट कहां पे होता है? नेशनल इनकम में। समझ आया? जब पढ़ाया फाइनल गुड्स आर काउंटेड इन नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? तो ये कहां पे काउंट किया जाता है? नेशनल इनकम। इसीलिए बेटा जी छोटी छोटी चीजें है ना, मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल पढ़ाया, तब जाके अब ये थोड़ा बहुत इजी लगेगा आपको। मैंने कहा मैंने इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस किया, मतलब जब हमने प्रैक्टिकली किया तब जाके आपको पता है। इज इट क्लियर? तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो रेडी है कंजप्शन के लिए, ना ही इन्हें फिर से बनाएंगे हम, ना ही इन्हें फिर से भेजेंगे हम। वी कॉल दिस फाइनल गुड। क्या कहते हैं आप इसे? फाइनल गुड। ये दो तरह का है, घर वालों के लिए और बिजनेस फर्म्स के लिए। घर वाले क्या लाते हैं? घर वालों ने लाई ब्रेड खाने के लिए, फाइनल गुड। टफ लगा? इज इट क्लियर? अब प्रोड्यूसर गुड, इन्होंने मशीन लाई चीजें बनाने के लिए, ये भी फाइनल गुड। और फाइनल गुड कहां पे काउंट किया जाता है? नेशनल इनकम में। ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा जी क्या? देखो बेटा, इंटरमीडिएट गुड ये फाइनल नहीं होते, ये हम लाते हैं कोई और चीज बनाने के लिए। द गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आर प्रोवाइडेड बाय अदर फर्म आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ये वो गुड्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं चीजें बनाने में, जो हम इस्तेमाल करते हैं चीजें बनाने में। टफ लगा? तो लिसन टू मी, लेट्स टॉक ऑफ मिल्क। हमें टी बनानी है और हमने लाया मिल्क। क्या लाया? मिल्क। सो मिल्क इज इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या इस्तेमाल किया? मिल्क। फिर से समझना, फिर से समझना।
वो गुड्स जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं एंड आर प्रोवाइडेड बाय अदर फर्म्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। देखो एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देखना बेटा जी, एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। Wheat used by a bakery to make bread, intermediate good. Cotton used by a textile mill to make cloth, intermediate good. Steel used by a car company to make cars, intermediate good. जो हम इस्तेमाल करते हैं कोई चीज बनाने के लिए उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड। वो आपके जहन में आता होगा सर, मुझे बताइए। लेट्स टॉक ऑफ शुगर। अगर हम शुगर डायरेक्टली इस्तेमाल करें इट इज फाइनल गुड। अगर शुगर डायरेक्टली इस्तेमाल करें व्हाट इज इट? फाइनल गुड। अगर शुगर कोई चीज बनाने में इस्तेमाल करे इट इज इंटरमीडिएट गुड। अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करे तो वो क्या है बेटा जी? फाइनल गुड। अगर कोई चीज बनाने में इस्तेमाल करे तो उसे कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। एक्चुअली द कंसेप्ट इज नो गुड इज फाइनल, नो गुड इज इंटरमीडिएट। इट्स अप डिपेंड अपॉन द यूजर, वो इस्तेमाल कैसे कर रहा है इसे। तो देखो आगे जाके इसी में आपको समझ आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड इन, समझ आया? ये मत हम ये काउंट करते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स। अब पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज टू बी नोटेड दैट नो गुड इज इंटरमीडिएट, और कोई गुड इंटरमीडिएट नहीं है, कोई गुड फाइनल नहीं है, as it depends upon the user who makes them final or intermediate। ये यूजर पे डिपेंड है, ये यूजर पे डिपेंड है कि वो इसे फाइनल बनाए या इंटरमीडिएट बनाए। चलो जैसे कि ब्रेड, when purchased by a is final good, but when purchased by bakery makers for making patties, समझ आया? तो उन्होंने क्या किया इस ब्रेड को इस्तेमाल ताकि वो पैटी बनाए। तो इन्होंने इस ब्रेड को इस्तेमाल किया ना, जो चीज इस्तेमाल हो तो वो क्या है? इंटरमीडिएट। तो घर वालों ने इसे डायरेक्टली खाया तो फाइनल गुड है। बेकरी वाले ने क्या किया? उसने पैटीज बनाई तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड। सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर बेटा जी, इफ यू कैन डायरेक्टली यूज इट और इट इज, इफ इट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फर्दर इट इज इंटरमीडिएट गुड। टफ मत लगा, समझ आया? सो फाइनल गुड वो गुड होता है जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। इंटरमीडिएट गुड वो होता है, इंटरमीडिएट जो फर्दर प्रोसेस होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। समझ आया? टफ मत लगा। सो दिस वाज इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ लेट्स टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स और द गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ और कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। देखो जो भी कस्टमर गुड्स लाते हैं ना, कस्टमर ना जो कंज्यूमर, हम जैसे कंज्यूमर, you call that consumer goods। अगर हमने परचेज किया ना ये पेन, कंज्यूम फॉर आवर सेटिस्फैक्शन, इट्स कंज्यूमर गुड। आपने कॉपी लाई, कंज्यूमर गुड। टफ लगा? समझ आया? अच्छा मुझे बताओ, मैं क्यों बाहर से रोटी लाता हूँ? ताकि मेरी भूख मिट जाए, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ the goods which are directly used for the satisfaction of human wants are called consumer goods। These goods are not used in the production of other goods। ये goods हम इस्तेमाल नहीं करते ताकि हम और कोई चीज बनाए इससे। और ये चार तरह का है बेटा जी, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस। लिसन टू मी, कितने तरह का है ये? व्हाट इज द फर्स्ट वन? ड्यूरेबल। व्हाट इज द सेकंड वन? सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब मजबूती, समझ आया? ठीक है, देखो मैंने फ्रिज लाया, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मैंने वॉशिंग मशीन लाई, दोज आर ड्यूरेबल गुड्स। दोज आर मतलब विच जिनकी लाइफ हो, जिनकी लाइफ हो। सो ड्यूरेबल गुड्स, समझ आया? कितने टाइप्स का है? सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स, लेट्स टॉक ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। द गुड्स दैट कंज्यूमर्स कैन यूज अगेन एंड अगेन ओवर ए कंसिडरेबल टाइम पीरियड और नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। नहीं समझ आया? जैसे कि हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की। पिछले साल आप आए ना हदफ, पिछले साल आए, एसी था, तो ये कौन सा गुड है बेटा जी? राकिब, समझ आया? अपना नाम सुनना वीडियो, टेलीविजन एंड द लाइक। इज इट क्लियर? सो व्हाट यू कॉल दोज बेटा जी? यू कॉल दोज ड्यूरेबल गुड्स। क्या कहते हैं आप इसे? ड्यूरेबल गुड्स। समझ आया? जिनकी लाइफ हो, यू कॉल दोज ड्यूरेबल गुड्स।
The goods that consumers use again and again over a considerable period of time, that's what you called durable goods. Example ये है. अब semi durable, the goods that consumers can use for a limited time period. समझ आया? देखो पेन की बात करें, लिमिटेड लाइफ है ना, ठीक है, और नोन एज फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स, शूज एंड द लाइक. इज इट क्लियर? कपड़ों की बात करें, ठीक है, शूज की बात करें, इवन पेन की बात करें. नाउ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, द गुड्स दैट आर यूज नॉन ड्यूरेबल, जो एक टाइम में खत्म हो, द गुड्स दैट आर यूज बाय कंज्यूमर्स इन वन कंजप्शन only or known as, one cannot use these goods for more than once. For example, butter, milk, bread, chocolate and the like. समझ आया? ठीक है, टफ मत लगा, समझ आया, इजी है. ड्यूरेबल समझ आया, सेमी ड्यूरेबल समझ आया. ओके, सर्विस, लेट्स टॉक ऑफ सर्विस. सर्विस इज इंटेंजिबल, मतलब कि एडवोकेट सर्विस दे रहा है, सीए सर्विस दे रहा है, आपका टीचर सर्विस दे रहा है, फी पकड़ा है, मजबूर हूं, ठीक है, करूं क्या, ठीक है. द नॉन मटेरियल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और नोन एज सर्विसेज और गुड्स दैट आर इंटेंजिबल इन नेचर. सर्विसेज आर गुड्स, इंटेंजिबल मतलब ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है, एंड कैन नॉट बी टच्ड और सीन. वाओ. फॉर एग्जांपल, सर्विस प्रोवाइड बाय डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड टीचर्स एंड द लाइक. समझ आया? तो कितने तरह के गुड्स आपने? 4. ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस. असल में ये कौन है? कंज्यूमर गुड्स. क्या है? वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर इस्तेमाल करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, उसे कहते हैं कंज्यूमर. वो 4 तरह के हैं. बता दीजिए बेटा जी, कितने तरह के हैं बेटा जी? वो बेटा कितने तरह के हैं? वो 4. इज इट क्लियर? टफ मत लगा, नहीं सच बताए बेटा, कितने तरह के हैं? 4 है, ठीक है. ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है और सर्विस है. इजी है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, कैपिटल गुड्स. देखो बेटा जी, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? दीज आर एसेट्स. दीज आर कैपिटल गुड्स आर फिजिकल एसेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट कंज्यूमर्स विल यूज लेटर. देखो, ये मशीन होती है. क्या होती है? मशीन. कैपिटल गुड्स ही बेटा जी कंज्यूमर गुड्स बनाता है. मतलब इस मशीन से हम बाकी चीजें बनाते हैं. तो ये जो ये मशीन है ना, इस मशीन को आप क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स. सो कैपिटल गुड्स आर एसेट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, कैपिटल गुड्स आर फिजिकल एसेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट कंज्यूमर विल यूज later. Capital goods are also known as they are physical in, it involves buildings, machinery, equipment, vehicles, tools and the like. Is it clear? Capital goods are used to make finished goods. ये हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बना सके finished goods and have an expected life of, machine की life है 15 years. Is it clear? However, these goods do not lose their identity during the production process. देखो, हमने कोई चीज बनाई, मशीन मत खत्म हो जाएगी उसके साथ. इज इट क्लियर? एंड नीड रिप्लेसमेंट और रिपेयर फ्रॉम. हाँ, क्योंकि ये कुदरती कानून है, जो आता है चला जाता है, जो आता है. इस मशीन की भी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है. इस मशीन की भी क्या बेटा जी? इवन दिस टीवी, इट हैज द लाइफ ऑफ 50,000 आवर्स. ठीक है, आफ्टर दैट ये किसी काम का नहीं है. You call it capital goods. समझ आया? तो बेटा जी, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं. इसी गुड की वजह से ये बाकी गुड्स बनाते हैं. कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स. ये टेंजिबल इन नेचर होते हैं. बिसाइड्स द कैपिटल गुड्स, इन कैपिटल गुड्स की होती है डिराइव्ड डिमांड. राइट, अंडरस्टैंड? डिराइव्ड डिमांड का मतलब है इनडायरेक्ट डिमांड. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑनलाइन टीचिंग की डिमांड है, तो दिस इज डायरेक्ट. ऑनलाइन टीचिंग की जो डिमांड है वो है डायरेक्ट डिमांड. क्या है? फिर से समझना, वो क्या है? डायरेक्ट डिमांड. ऑनलाइन टीचिंग की क्या है? डायरेक्ट डिमांड. लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के लिए मुझे ये टीवी लाना है,
तो टीवी की है इनडायरेक्ट डिमांड, यू कॉल इट डेराइव्ड डिमांड, यू कॉल इट derived demand. Huh? The capital goods have derived demand. It means that the demand for capital goods derives from the demand of which are produced by these capital goods. Tough लगा? Lost concept. हाँ, क्वेश्चन आ सकता है आपको डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में. वहां पे होती है डायरेक्ट डिमांड, यहाँ पे होती है डेराइव्ड डिमांड. समझ आ रहा है? वो इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, ये सिर्फ टेंजिबल हो सकते हैं. इज इट क्लियर? वो इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर्स, ये इस्तेमाल करते हैं प्रोड्यूसर्स. इज इट क्लियर? टफ मत लगा? ओके, आपके नोट्स पे मैंने रखा. ठीक, तो कोशिश करना खुद लिखने की, वो याद रहेगा. द लास्ट वन इज पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम. ठीक, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल नहीं. देखो जी, पर्सनल इनकम का मतलब क्या है? इनकम रिसीव्ड बिफोर पेइंग टैक्सेस. टैक्स से पहले, टैक्स से अभी हमने टैक्स नहीं दिया, यू कॉल इट पर्सनल इनकम. ठीक है, जैसे कि इसमें आता है वेजेस, फैक्टर इनकम ना, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ट्रांसफर पेमेंट लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड द लाइक. फॉर एग्जांपल, इफ यू अर्न 50,000 सैलरी, 5,000 रेंट, 2,000 पेंशन, योर पर्सनल इनकम इज 57,000. सिंपल सिंपल बेटा जी. क्या आप बताओगे सर व्हाट इज पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम क्या होता है बेटा जी? वो इनकम जो आप पकड़ते हो बिफोर पेइंग टैक्सेस, बिफोर पेइंग टैक्सेस, तो उसे आप कहते हैं पर्सनल इनकम. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? हाँ, आफ्टर पेइंग टैक्सेस यू कॉल दैट डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस is called disposable income, and this is the money you are free to spend or save. Is it clear? समझ आया? Okay. And this money is also called white money. क्या जी बेटा? तो कंसेप्ट है ना बेटा जी वो ब्लैक मनी का. जो ब्लैक मनी होता है ना, जिस वो पैसा जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया होता. और एग्जाम्पल आप चेक करें बेटा जी, एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या दी है. From 57,000 पर्सनल इनकम, फ्रॉम 57,000 पर्सनल इनकम, अगर आप 7,000 खर्च करोगे एज इनकम टैक्स, योर डिस्पोजेबल इनकम इज 50,000. ओके, सो दिस वाज इट, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम. अब मुझे बताओ, गुड्स समझ आए? पहले बताओ, गुड्स में हमने पढ़ा था फाइनल गुड्स और पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स. देखो पहले बताओ ना, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड बताओ. द गुड्स which are ready for consumption and which are neither remanufactured nor resale, तो उसे आप कहते हैं फाइनल गुड्स. द गुड्स which are used in production process उसे कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. जो फाइनल गुड्स है ये काउंट होते हैं नेशनल इनकम में. इंटरमीडिएट कंजप्शन जो गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते हैं. टफ मत लगा? इज इट क्लियर? इसके बाद आपने पढ़े थे वो कंज्यूमर और कैपिटल, वो भी पढ़ा, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम. आई होप बेटा जी ये समझ आया. सो इंशाल्लाह कल मैं आपको वो लिखवाऊंगा एग्रीगेट्स. ठीक है, वो लिखवाऊंगा. सो विद दिस हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो 3 हफ्ते लग गए इस टॉपिक को, है ना? तो चलो, सी टुमारो इंशाल्लाह. ओके बेटा जी, चले. नाउ वी हैव टू डिफाइन द एग्रीगेट्स. हमने एग्रीगेट्स पढ़ा ना, एग्रीगेट्स पढ़ा. देखो बेटा जी, इजी है, यू हैव कंसेप्ट, आपने वो कंसेप्ट है. ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा एक चीज आपको रिपीट कर दूंगा. सर कौन सी चीजें? एक तो डोमेस्टिक इनकम और दूसरा नेशनल इनकम, जो मैंने पढ़ाया, अगर आपको याद होगा. ठीक है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, याद है? ओके, डोमेस्टिक इनकम होता है इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. नहीं समझ आया? वही होता है. फिर से क्या है बेटा जी? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो होता क्या है बेटा जी? सो डोमेस्टिक इनकम
is the final value of goods and services produced within the economic territory of a country. ये याद रखना क्योंकि ये डेफिनेशन मुझे जरूरत लगेगी. ओके, जो नेशनल इनकम होते हैं ना, उसे हम करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced by the residents of country. Produced by the residents of country. Produced by the residents of country. चाहे वो इंडिया में रहते हो या अब्रॉड में. Whether live in India or abroad. टफ लगा? सो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है बेटा जी? अगर ये इंडिया है, इंडिया के अंदर अंदर कितना आपने कमाया, दैट्स व्हाट यू कॉल डोमेस्टिक इनकम. ठीक है. अब नेशनल इनकम में आता है आपके लोग जो रेजिडेंट है वो कितना कमाते हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर. दैट्स व्हाट यू कॉल द नेशनल इनकम. दिस इज डोमेस्टिक इनकम, दिस इज नेशनल इनकम. मैंने पढ़ाया. अब वी हैव टू डिफाइन. देखो, सबसे पहले अब याद रखना, 4 ऐसे होंगे जिनमें डोमेस्टिक आएगा, 4 ऐसे होंगे जिनमें नेशनल आएगा. बेटा याद रखना, जिनमें डोमेस्टिक आए ये डेफिनेशन, जिनमें नेशनल आए ये डेफिनेशन. देखो, भरोसा कीजिए आप मुझे. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे जीडीपी एमपी. क्या बेटा जी? जीडीपी एमपी. ओके, तो देखो बेटा जी, मैं इसे डिफाइन करता हूं. ग्रॉस डोमेस्टिक आया ना, डोमेस्टिक की डेफिनेशन. डोमेस्टिक आया, किसकी डेफिनेशन? डोमेस्टिक. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द फाइनल वैल्यू of goods and services. Final value of goods and services. Domestic क्या है? Within the economic territory of a country. Within the economic territory of a country. Now listen to me, my dear. It's market price. It is market price, है ना? याद रखना, it is inclusive of taxes. It is inclusive of, नहीं समझ आया. It is inclusive of taxes and depreciation as well. समझ आया कि नहीं? क्योंकि इसमें है ना टैक्स, इसमें क्या है? टैक्स. तो इस आप लिख सकते हो, it is inclusive of indirect tax एंड डेप्रिसिएशन. तो आपको नहीं लगता है इजी लग रहा है? ओके, ये क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. टफ लगा? ओके, इसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ऐसे डोमेस्टिक ही लेंगे ना पहले. अब लेंगे एन डी पी एम पी. हाँ बताओ बेटा जी, डिफाइन कीजिए बेटा जी. नेट, बेटा ये जो ये है ना, दिस इज बेंचमार्क. हेलो, दिस इज बेंचमार्क. दिस इज, इससे हम हर एक की फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ठीक. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. जरा डिफाइन कीजिए. is the final value of goods and services produced, shabash, within the economic
टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अब आया ना ये सर, इसमें और उसमें फर्क क्या है? देखो सिंपल नहीं, आपने नहीं लिखना, आप लिखोगे ऐसे, ये जो ये एनडीपी एमपी है ना, एनडीपी एमपी, इसे लाओ, किसे किसे, जीडीपी। अब बताओ, जी को बनाना है एन, हेलो मैं पढ़ा रहा हूं ना शायद, जी को बनाओ एन, माइनस क्या करेंगे, इज इट क्लियर? So difference is this, D same, PP same, MP same। आया समझ आया बेटा जी? अगर आपको डिफाइन करना आया तो कैसे, एंड इवन माय डियर आपको पता है यू कैन डिफरेंशिएट इट। अगर डिफरेंस भी आई ना, आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? पहले डेफिनेशन लिखी, फिर डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड, डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड। समझ आया? ख्याल रखना बेटा जी इस चीज का। तो ये क्या था बेटा जी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, okay, now next one। हाँ, अब बता दीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी ना, ठीक है, कुछ नहीं। अब आया ना ये, अब शायद अंदाजा हुआ होगा कि आपके टीचर ने एंड पे क्यों ये डिफाइन करवाया। तो क्या लिखेंगे जरा मुझे बताओ, ग्रॉस, जरा बताओ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक आया ना, इज द मनी वैल्यू, सॉरी इज द फाइनल लिखेंगे, हाँ वही एक ही रखेंगे ना, इज द फाइनल, या यू नो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लिख सकते। अब ये लिखे फाइनल वैल्यू कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, बिकॉज फाइनल हम लेते हैं ना, ठीक है। नहीं, हम लिखेंगे यहां पे मनी वैल्यू, क्या लिखेंगे हर एक में, मनी वैल्यू, मगर बेटा जी कौन सा बेटा जी, फाइनल, ठीक है। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल, ठीक। तो यहां पर भी लिखेंगे मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड services, final goods and services produced within the economic territory of a country। मुझे बताओ फैक्टर कॉस्ट में टैक्स होते हैं, सो इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ आया? ये आप ऐड भी कर सकते हो हर एक में, ठीक। इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो पता है कैसे लिखा होगा आपकी बुक पे, इट इज इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंक्लूसिव ऑफ सब्सिडीज, ऐसे लिखा होगा। अब मैंने क्या लिखा आपको, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बता दो बेटा इसकी फॉर्मूला, ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेंचमार्क ये ले लो, पहला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी सेम, डी सेम, पीपी सेम, एमपी को एफसी बनाओ, माइनस NIT, टफ मत लगा, इज इट क्लियर? अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेटा जी क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट डिफाइन करना है ना। तो आपको डोमेस्टिक आ रहा है, इसके बाद यही चार होंगे, इसके बाद क्या होंगे,
वहां पे नेशनल, उसमें एक चीज चेंज करनी है, बाकी सेम है, ठीक है। तो बेटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बताओ दो बेटा जी क्या लिखेंगे। नेट डोमेस्टिक पहले लिखेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल आया ना, प्रोड्यूस्ड within the economic territory of a country, within the economic territory of a country. Now अब मुझे बताना, आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें नेट आया, इसमें आया ना नेट, सो माइनस करके होगी डेप्रिसिएशन, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट इज एक्सक्लूसिव। समझ आया कि टफ लगा, मगर ये उसी को आएगा डिफाइन करना जिसने इसका न्यूमेरिकल किया होगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट एनडीपीएफसी। ये जो ये एनडीपीएफसी होगा, बेंचमार्क क्या है बेटा जी आपका, जीडीपी एमपी। जी को बनाओ नेट, माइनस करो डेप्रिसिएशन, डी सेम पी सेम, एमपी को बनाओ एफसी, इसमें एनआईटी है उसमें मत है, माइनस आएगा एनआईटी। आया डिफाइन करना, आया डिफाइन करना बेटा जी, टफ मत है। सो व्हाट वी हैव डिफाइन नाउ, व्हाट वी हैव डिफाइन नाउ, ठीक है। इसका फोटो मगर मत उठाना है, जल्दी उठाओ बेटा जी, जल्दी जल्दी, ठीक है। आप उठा सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका, ओके। नाउ सो अब नेशनल, आपको पता है नेशनल में क्या चेंज होगी, यहां पे लिखे ना प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री वेदर इन इंडिया और अब्रॉड। समझ आया। सो वहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का किस्सा है, टफ लगा। अब यही आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ आया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इज इट क्लियर, क्या है बेटा जी। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, समझ आया बेटा जी, टफ मत है, डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। याद करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको न्यूमेरिकल आता है। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द money value of final goods and services, final goods and services produced by the normal residents of a country, normal residents of a, टफ मत हुआ, टफ मत लगा बेटा, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। अब थोड़ा बहुत आप इसे बढ़ा भी सकते हो, वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, ऐसे लिखोगे वो, वेदर इन इंडिया और अब्रॉड। अब बताओ ये जो जीएनपी एमपी है ना, so what is our benchmark, gross domestic product at market price, gross domestic product at market price, जीजी से डोमेस्टिक को बनाओ नेशनल, तो प्लस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। टफ मत लगा, P is same, MP is same, so what you have added, net factor income from abroad। समझ आया, टफ मत लगा, ओके। नाउ ये था जीएनपी एमपी,
ठीक है, अब NNP होगा, हाँ इसमें लिखना इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एज वेल, इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एज वेल, ये खुद आप लिख सकते हैं। अब NNPMP बेटा जी क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट जरा जरा करो डिफाइन, नेट नेशनल प्रोडक्ट at market price, okay, is the money value of final goods and services, final goods and services, शाबाश, ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक टेरिटरी खुदा के लिए नहीं लिखना, हाँ, प्रोड्यूस्ड बाय द normal residents of a country. Now listen to me, नेट आया, डेप्रिसिएशन माइनस है, ठीक है, एमपी है तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स है, माइनस नहीं करना है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे, अब ये एनएनपी एमपी जो है ना, एनएनपी एमपी बेंचमार्क क्या है बेटा जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इज इट क्लियर। तो सबसे पहले जी को बनाओ, एन माइनस करोगे आप, ओके, डोमेस्टिक को बनाओगे नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके, एमपी इज सेम, सो ये आपकी फॉर्मूला है। हाँ बेटा जी याद रखना, फॉर्मूला पे सारा डिपेंड है, फॉर्मूला किसे आएगी, जिसने न्यूमेरिकल पढ़ा होगा, समझ आ रहा है, और जिसने मेरे पास न्यूमेरिकल पढ़ा होगा, थोड़ा टेस्ट करा, ओके। अब नाउ बेटा जी यही दो बेटा किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, बस टैक्स करना है माइनस, इज इट क्लियर। सो GNPFC बता दीजिए बेटा जी क्या लिखेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट at factor cost is the money value of final goods and services, produced by the normal residents of a country whether in India or abroad, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताना, ये है ना फैक्टर कॉस्ट, तो इन्होंने इसमें क्या किया होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो पहले आप फॉर्मूला लिखिए फिर आप लिखना, ठीक। तो बताइए जो GNPFC होता है, बेंचमार्क क्या है, GDP जी इज जी सेम, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं, डी को एन है, डी डोमेस्टिक प्लस बनाएंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पीपी से, एमपी को बनाओ एफसी, माइनस करेंगे एनआईटी, हाँ, इट इज इंक्लूसिव ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड एक्सक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप लिख सकते हैं, ये समझ आया। नो लास्ट वन बेटा जी, एन बेटा जी एनएनपीएफसी ये क्या होता है, जरा मुझे बताओ। दिस इज योर नेशनल इनकम, दिस इज योर नेशनल इनकम, ठीक कहा था ना परसों, दैट क्लियर, ओके। अब बता दीजिए, थक गया मैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट factor cost is the money value of
final goods and final goods and services. Final goods and services produced by the normal residents of a country. Is it clear? अब इसके बाद NNPFC किसके बराबर? NNPFC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जी को बनाओ नेट, माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को ये प्लस होगा जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एमपी को अब चेक कीजिए आपको न्यूमेरिकल कैसा आता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एजायर कमर्शियल। समझ आया? ओके, मैं आपको ये बस ऐसे लिखता भी, मैंने सोचा इससे आपको ये आएगा, मतलब कि अगर हम लिखेंगे तो आपको ये आएगा, लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला पे ही हमने ये रखा। तो इसीलिए बेटा जी मैंने आपको ये पहले नहीं पढ़ा। अगर मैं ये पहले पढ़ाता ना तो आप ये याद करते, लर्न करते, ऐसे नहीं। इस चीज से आपको ये समझ आया, ठीक है? तो अगर आपने यहां तक ये से नेशनल इनकम पढ़ा है, इट मींस आपको हमारे जो लेक्चर्स है समझ आए, ठीक है? तो अब बताइए, हाउ यू रेट आवर लेक्चर्स? ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है? सो इन नेक्स्ट यूनिट तो क्यों गो